ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಇವರ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯುತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ NM ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ನಾವು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದ ಡೇ 4 and a final day of Nutan Champions Trophy 2023. Top seeded teams are participating in this tournament, and first match NM Jappu will take over Sri Mangaladevi Cricketers, and NM Jappu after won the toss they elected to field for 10 overs match, 3 hours of power play, 39 minutes allotted time given to complete their 10 overs quota, and the match starts now within just a while, and we are just taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the match number 1 of this tournament is going to begin between NM Jappu versus Sri Mangaladevi Cricketers. Thank you. Thank you very much, Gopi. Good morning, everyone. Welcome back for the prestigious Nutan Champions Trophy 2023, and which is proudly organized by Nutan friends Urwa, and the name of Cricket Festival, and the second year cricket tournament, which is organized in the sweet memory of Austin Montero, and of course it was a perfect tribute as well as a respect for Austin Montero, because today is birthday, so that I think it's absolutely perfect remembrance for the very unforgettable personality Austin Montero. After that everyone gave the respect for him before the start of the match. And just like mentioning about Austin Montero, and the father of Rohan Montero, of course he is the one
uh, in his memories, sponsored all the individual trophies as well as for the all three departments. It's just like we are mentioning about local pool groups and masters as well as Mangalore pool. All the trophies which is donated by Rohan Montero in his father's sweet memory, Austin Montero, and we are into the first match. The first match, it's going to be a good match. NM Cricketers Mangalore takes on Mangaladevi Cricketers, and wait and see these two teams will go into how well they're going to get the start here. And as far as the rules and regulation of this particular tournament is concerned, and after a long time watching that the 10 hours full 10 hours matches to be organized in this Nutan Champions Trophy 2023, and it's definitely going to be a good move by the organization organizing all that the 10 hours matches, so that all teams will going to get showcase their absolutely the potential what they got having, and 10 hours definitely going to be quite enough for each and every team's players to showcase their talent. So that I think it's a good move, because after a long time, and I still remember Reliance Cricketers Japo when they celebrated their 25th year 3 years back, and then they are organized very systematically the 25 celebrated 25 years and organized 10 hours full 10 hours cricket tournament, and now Nutan friends Urwa organizing this 10 hours full, and hope every team will going to cooperate, and 3 overs going to be a power play, and time which is given for the teams with the fielding teams to complete the 10 hours, exactly 39 minutes they need to complete your 10 hours quota. Thank you. Everything is ready here, and Jitesh and Yatin, the two opening batters, came into middle, and they are just strengthening the batting department of Mangaladevi Cricketers, having Yatin as well as Jitesh, fantastic all-rounders, and certainly the Sneha Malamar is not participating in this tournament, so that they are represented for Mangaladevi Cricketers. And from the Austin Montero end, it will start the beginning of the day number last and final day of cricket tournament. First ball, beautifully bowled. Riaz is knowing for that kind of bowling. He can surprise any batters, any technical sound batters with his face, as well as deviation. He's got getting some deviation, extra deviation. In fact, it's not a simple off cutter, but sometimes he's getting some off cutter with a lot of turn, deviation, variation, so that it's going to be very careful for the opening batters. And Gitesh will going to face next ball. From the Austin Montero end, right arm over the wicket, delivers. Ooh, that ball, well, lovely delivery indeed, isn't it? Looks like ball is got a bat onto that, but a slight bit of ball is just bouncing in front of wicket keeper. Then after deflected from the hand of Mansoor, then ball went towards a short third man region. First run comes up here for Mangaladevi Cricketers, and Gitesh is off the mark with a single. It's one without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament. This time again a lovely incoming, there is a chance of run out, but throw which is slight a bit of wide. Tawfiq then now down at short fine leg region. Now straight away there will be a promotion. There will be a promotion for Tawfiq from short fine leg to short cover point region because of the wide throw. Straight away Asif, one of the best fielders, especially in that short fine leg region. In fact, in the behind the wicket, then he's been asked to stay there in that position, and nicely, delicately played there by Gitesh, by playing a horizontal bat, and picked up a single down to backward point region. Sometimes against the pace of the bowler, it's very difficult to play your orthodox cricketing stroke. Then you need to implement a different strategy. Different strategy in the sense of course, one of the most popular cricketing stroke, the reverse sweep, what Gitesh implemented to get the single.
This time Yatin wanted to get that one into fine leg region, but the line of the delivery, which is outside the line of off stamp, that's why he couldn't manage to get that one from the bat, and there is no chance at all for any run. 10 overs game, so first over is in progress. First over of the power play. Deep wide-ish long on and deep square like the two fielders outside the circle. This time lovely improvisation, delicately there by played by Yatin, down to deep fine leg region, and before the fielder from short fine leg region to run back towards a deep fine leg region from the short fine leg. Ample time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, Mangalore Devi cricketers has got the good start, steady start is 5 without loss of any wicket. Second over going to start from the far end. Looks like captain of the side, Atif, will go into start his fresh over. Second over of the power play to Gitesh. And first ball beautifully bowled, and a typical Atif's delivery, which is a slight bit of outside and off stamp, slight bit of deviation as well, off cutter, and slower one, and that's why Gitesh couldn't manage to make a contact with the bat and missed it completely. Here is Atif, right arm over the wicket, nicely driven down to deep, deep, wideish long on in the negation, and with that single scoreboard Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket. Both Yatin and Gitesh knows that this is a 10 hours game, and there plenty of time to get some eye in, and wanted to get some partnership. Of course, we were playing in the power play overs, but because of the 10 hours format of the games, I don't think the batsman will go and take any risk of getting a big shot. This time again, Yatin nicely plays it down to mid wicket region. This time ball is bent in the gap, so that they're coming back for the second quite quickly, because slight a bit of danger of getting run out, but both the batters after seeing that when the ball is went with in the gap, so they made their mind before that going to the first run, they knows that is a ball went in the gap, so they can come back for the second quite easily. 8 on the board. This time Yatin tries that one, not quite able to hold up that end properly, but quite enough for him to complete the single. And with the single score, Namuzan to 9 on the board. Riaz from the short mid-off region, just charging to the ball, trying to hit the stump, but realizing there is no backup, so that is not interested. 9 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Atif away from us, passes umpire, slide a bit of extra bounce, defeats the bat of Gitesh, because it is a surprise the batsman. He's not really happy. Of course, that's a short pitch delivery, but leg by call by umpire. But feeling the fact that ball which is came in along the carpet, when the batsman going for the drive, that ball has got an extra bounce, so that he couldn't manage to capitalize that ball. There is no fine leg, there is no deep square leg, so that's why Gitesh is not happy with himself. Again, drags the ball from outside the line of off stump. Yatin. Again, the slower one here from Atif. Maybe Yatin hits the bat pretty hard into the ground, so probably might be just testing his bat, whether the bat is good enough, the quality of the bat, maybe the handle you wanted to test when you were hitting the bat hard into the ground. Sometime there will be broken hands of the bats, but looks like it's fine. 11 on the board. Another 6 runs came from that over. 5 in the first, 6 in the second. Altogether 11 runs in 2 overs at the rate of exactly 5.5 runs per over. That means it's a good start, steady start from these opening batters. And without throwing the wicket, they wanted to accelerate the run rate. So from the far end, Austin Montero as well as D'Souza family and D'Souza family, Urwa Bolor, and Rohan Montero and Rahul Montero
power play 3 overs, 3 overs of power play, the 10 hours game, so that the team will going to get 3 overs of the power play as per the rules and regulation of the cricket is concerned. But we are not playing regularly 10 hours, even though everyone has a confusion. And but suddenly it's 3 overs of power play and 10 hours of game. And less than 9, it's going to be 2 hours. Less than 8. Less than 9, 8. Again, nicely bowled by Riaz. Again, that ball is a slight bit of variation in that line, in variation in that delivery, so that Yatin couldn't manage to play that one properly. Again, Riaz back to his bowling mark. Right arm over the wicket delivers. Quite interesting kind of cricketing stroke there from Yatin. He wanted to sweep the ball, quickly realizing that ball is outside the line of off time. Very difficult to play that one. So just taps the ball down to short cover point position for a single. But anyhow, it's not important that how technically you played that stroke, but very important in the end of the delivery that how much run you got for that stroke. You got a single. It's quite enough. It's 12 on the board without loss of an wicket. Riaz again from the far end. The right arm over the wicket. Oh, bowled him! Cleaned him up! Beauty! Riaz, you are a beauty. That's a fantastic delivery to receive the wicket of Gitesh. This is what I'm talking about. Sometime the deliveries of Riaz is very difficult to judge. Even any technical sound player, because that I mentioned that he's got some extra turn in his ball. This is the benefits Riaz to get the wicket. This is an extra deviation. Of course, if you see it in a replay, I don't know, the Bedra Media will going to get this replay of this dismissal. Just I want to see that extra deviation of that ball. Absolutely, is almost in the line of that delivery. But being the fact that ball has got extra turn, extra deviation, that ball is misses his wicket. This is what I'm talking about. Even technical sound players, sometimes it's not enough for them to survive from that kind of deliveries. That Jitesh quite unfortunately looks like he's comfortable in the middle. Slowly is studying up his innings and and looks like he's going to play a big innings for his team. But fortunately for NM Cricketers Mangalore, is back into pavilions. The new batsman just came into middle is Rafiq, one more left-hand batters. The busy customer as far as Underarm cricket is concerned. The 10 hours game, the players like Rafiq is always definitely they are going to enjoy this the number of overs. And here is Riaz from the far end. Right arm over the wicket, outside the line of off stump. Wicket keeper Mansoor fails to collect the ball. But no signal came from umpire. That means it's a slight bit of bat involved of the batter Rafiq. So that scoreboard numbers on to 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. So 13 for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. There is a short mid-off and a short cover point, and there is a fielder at backward point just left of umpire Vivek. There's a deep third man for Yatin for the reverse sweep. Very interesting. Drives that one nicely wide of that fielder. Azhar is one of the best fielder, but he just misses the ball completely. He's trying for the run out, try to take that ball in a right hand, single hand, but misses that one completely from the hand. So that the ball, which is the batsman, which is managed to complete the single, Yatin. It's 14 for the loss of 1 wicket. This time again, that ball is just missing the line, going further away outside the leg stump. Punishable from an umpire, and morning warm-up exercise here for Arish Padil. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. This time Rafiq, just like I mentioned, is very strong in behind the wicket and square of the wicket, and just wanted to get the single, and you go able to get the single down to deep backward point region, gully region in fact, and 16 on the board. Completion of over number 3 by losing 1 wicket. Mangalore cricketers suddenly not a bad condition, but maybe they're thinking about this is 3 overs of the power play which is completed.
They are getting the runs in at a run rate of exactly 5.33 runs per over, and I think it's a good one. But 16 for the loss of one. You're talking about power play. This is a tournament is not so easy for the batter, I want to say, and it's not like that in the previous 4-5 tournament which is organized here, that power play which is dominated. But here is because of the nature of the ball which is used for this particular tournament. I want to say the ball which is used for this tournament, it's not so easy for the batter, even for the bowlers. At and go, which is the ball which is used for this tournament, which is very soft in the nature. At and go TB 120, and it's maybe the Decathlon product, and it's a slight bit of small in a size, that ball, at the same time as the softness of the ball. It's not easy for the batter to get any big shots, and that means 16 is a good score, I want to say, for Mangalore cricketers in this first 3 overs. Nicely driven, slight bit of made a room to play the shot inside out. Just allow the ball to coming into his bat, but everyone is shouting for the bowler. It's a ball which is not too far from you. Why not you tried for the cotton ball? But I don't think it will going to reach there. And Rafiq has played that one upishly, but wide of that bowler. 17 for the loss of 1 wicket. Faisal is experienced campaigner for the side of enemy cricketers Mangalore, bowling away from us. Right arm over wicket to Yatin. Yatin this time drives that one, lack of placement, not quite intended. That's what I'm talking about. The ball and the condition is not that much of easy for the batter. Just look at the way that the batsman mistimed that one. He's tried to drive that one on the offside region, but because of that ball which is not coming to the bat, ball went towards a wide-ish little correction in the short mid wicket unorthodox. Oh, beautiful flum. No doubt at all. It's absolutely flum in front of wicket. Slight leg cutter, isn't it? Ball pitched in a line on the midland of leg stump. Slight a bit of deviation. Yatin shuffled across the line of the delivery. Slower one here there from Faisal. And Yatin is just like I mentioned, ball which is not coming to the bat. And he wanted to play across the line of the delivery. And he's finding himself right in front of middle stump. And easy decision there for umpire Vivek. And certainly that ball is going to hit the midland of stump of Yatin. So 17 for the loss of 2 wicket, and Mangalore cricketers losing both the openers. Losing both the openers in a wrong time, I want to say, because one of them have to play the big role. One of them has to play a big innings because this is a 10 hours game. The one settled batsman, if able to get 25 to 30 runs, then it's going to be good for any batting first team to get a score at least 60 plus. And I think in this condition, the overcast condition, fantastic weather condition today, and yesterday morning also the same condition, but after that it's absolutely very hot. After that 9-10 o'clock, 10:30, bright sunny morning, but today it looks to be slight a bit of overcast condition. Faisal to Santosh, just leaning into the drive, but a slight officially played. Very lucky that ball didn't carry to the fielder at short cow point region. Atif down at the short cow point region. One more very good player, technical sound player. Santosh is on strike. Faisal bowls, drives that one. Again, just look at the way that the batsmen are struggling to get a timing, because he wanted to play that one in the offside region, but ball went towards the mid-on region. This is what I'm talking about. This pitch, this condition of the ball, the weather condition is not that much of easy for the batter. If the bowler bowled a very good line and length, the temperament of the batters, the technique of the batsman definitely going to be tested. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Nicely works that one down to define leg region for a walkable single. Rafiq doing a right job. He knows that what the job he need to do, why the captain is sending him as a number 3 batter after completion of over number 4, searching for the right track. It's a fantastic over there from Faisal. Very good over.
Very decent wicket taking as well as economical. And Faisal once again justifying why he is one of the important player for NM Cricketers Mangalore for a long time by justifying his captain's decision to come and bowl a fourth over of the innings. 4 gone. It's 19 for the loss of 2 wicket. So Ayaz brought into attack from the Austin Montero and the D'Souza family, Urwa bowler as well as Rohan Montero, Rahul Montero, and the main sponsor of this cricket tournament. And Ayaz to ball round the wicket because Rafiq is a left-hand batter. This time Rafiq wanted to get the expansive drive, but I think he need to be very careful because in the morning it's not so easy to get the distance. You need to get the placement right if you wanted to get the boundaries and sixes. But anyhow, it's a 24. The loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Shrikant Shetty and of course Kiran Kumar Mandarabail is the biggest sponsor of this cricket tournament. This time they're going for the quick single. Mujib, the fieldsman, there in the short extra cover, tried his level best but fails to make a contact. Plays to make any direct hit, but otherwise it's going to be a close one. And at the same time, both the batters has got a perfect understanding between the wicket, and they completed a single here. 21 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Ayaz from the far end. Round the wicket delivers to Rafiq. Rafiq nothing much to do with the delivery. No ball called by umpire. Rightly so. Ball is far away outside the line. The ball is pitched. The first impact of the line is out of the pitch. So that no ball called by umpire. So that free hit delivery. The free hit delivery for Rafiq there. And definitely wanted to capitalize that free hit delivery. Oh, he missed it. He missed it. This is a golden opportunity, isn't it? At least the boundary what the batsman wanted to get here. But I think it's not an easy condition. Just like Ayaz knows that he is bowling a free hit delivery. So he need to restrict the runs. So he bowled a good line. It's a 22 for the loss of 2 wicket. Nicely, delicately played it down to the fine leg region. But the protection has been given knowingly because Rafiq is a very good sweeper of the ball, so that captain kept one fielder in the fine leg region, and Rafiq has satisfied with a single. It's a 23 for the loss of 2 wicket. This is the first match for the latecomers, those who are tuned late into the YouTube channel of live telecast YouTube channel Bedra Media. Good morning everyone, and you are watching the match number 1 of this prestigious final day of Nutan Champions Trophy 2023, and second match after this match will be played between Torpedoes Khana versus KFC Kodikal. There's a second match will go into play. Again, that ball is beautifully bowled by us. One more good over is completed. Searching for the right track, Mangalore cricketers going just under 5 runs per over. It's a 24 for the loss of 2 wicket after completion of 5. And wait and see how Mangalore cricketers will going to get some acceleration in the remaining 5 overs. And before the next over will going to start, I would like to invite my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों को मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 2023 इस मेगा श्रृंखला का चौथा और अंतिम दिन का पहला मैच यहाँ पर शुरू हो चुका। आज टॉप सीडेड टीमों के बीच मैचेस खेले जाएंगे। तो पहला मैच यहाँ पर प्रगति पर लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एनएम मैंगलोर और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स जो कि भिड़ रहे हैं इस आज के इस पहले मैच में, और मंगला देवी क्रिकेटर्स 5 ओवर के बाद
24 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर की दूसरी गेंद, ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया पॉइंट पर, आतिफ के हाथों से गेंद छूटी इस वक्त। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए। कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे आतिफ गेंद को पकड़ने के प्रयास में गलत लाइन पर डाइविंग उन्होंने लगाई और जब तक इनको बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त फैजल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अजहर के हाथों में गेंद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद को स्विंग तो जरूर किया लेकिन आखिरकार गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लंगोन पर फील्डर अजहर जो खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका सीमा रेखा के अंदर। तो बल्लेबाज संतोष आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतर पारी खेलने के बाद 5 रन उन्होंने बनाई और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है 26 रनों के ऊपर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला नूतन चैंपियंस ट्रॉफी प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 which proudly organized by Nutan Friends Club Urwa Mangalore in the sweet memory of late Austin Montoro। और आज 7 प्रतिष्ठित टॉप सीडेड टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा लेंगी। गोरी यंग बॉयज, केसीसीआर कदरी, केएफसी कोडिकल, टोरपेडोस खाना, श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स, एनएम जप्पू और यंग फ्रेंड्स उर्वा। तो इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा केएफसी कोडिकल और टोरपेडोस खाना के बीच। उसके बाद तीसरा मैच होगा गोरी यंग बॉयज और केसीसीआर कदरी के दरमियान और इस मैच की विजेता टीम एनएम जप्पू और श्री मंगला देवी के मैच की विजेता टीम का सामना होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के साथ आज के चौथे मैच में। तो यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है रक्षक और फैजल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्पिन गेंद यार इस बार बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, लेग कटर गेंद फेंकी थी परिवर्तन के तौर पर, स्वीप करना चाहा इस वक्त रक्षक ने लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए। गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई। गिल्ली अब बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और पहली गेंद पर रक्षक का विकेट यहां पर गिर चुका है 0 पर गोल्डन डक के रूप में। बेहतर गेंद थी इस वक्त फैजल की, परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद उन्होंने फेंकी और इस लेग कटर गेंद को स्वीप करने के प्रयास में चूके फैजल और गेंद सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर और रक्षक का विकेट गिर चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और कई महानियों ने इस श्रृंखला के सफलता के लिए अपना योगदान दिया है। खासकर नाम लेना पड़ेगा डिसोजा फैमिली बोलूर मैंगलोर, इन्होंने एक बेहतर योगदान इस श्रृंखला के सफलता के लिए दिया है। हम डिसोजा फैमिली इनका अभिवादन यहाँ पर करते हैं और जहाँ तक सवाल है जिस किसी ने भी इस श्रृंखला की सफलता के लिए अपना योगदान दिया है उन सब को हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हार्दिक अभिवादन करते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो अश्विन का आगमन यहां पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फैजल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और दाहिनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्टीयर किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद, जस्ट ओपनिंग द प्लेस ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड स्टीयरिंग इट अवे डाउन टू अ थर्ड मैन फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। तो संघर्ष इस वक्त जारी है। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो निर्धारित 10 ओवर में मंगला देवी क्रिकेटर्स को कम से कम 60 का आंकड़ा पार करना होगा और एनएम क्रिकेटर्स के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव कुछ हद तक बनाना है। तो ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को खेलना ठीक से खेला तो नहीं लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 6 ओवर की समाप्ति, 6 overs completed, 28 runs on the ball, 4 wickets down. Still the batsmen of Sri Mangala Devi cricketers searching for the right track. 28 for the loss of 4 wicket। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का यूट्यूब पर और हजारों दर्शक इस
टूर्नामेंट इस श्रृंखला का मुआयना इस वक्त यूट्यूब पर करते हुए, जो कि बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से। और हमसे दूर वाले छोर से यानी ऑस्टिन मोंटेरो एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज अयाज, और 7वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी में रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर अयाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए। इससे पहले कि शॉट्स को लेग पर विकेट कीपर मंसूर जब तक गेंद को जाकर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। लेग बाय का इशारा, लेग बाय की इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। और अश्विन इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज अयाज की ओर की अगली गेंद का, और हमसे दूर वाले छोर से यानी ऑस्टिन मोंटेरो की ओर से अयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची गली की दिशा में जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। इस बार रफीक का स्ट्रोक लेकिन मिड विकेट पर पहुंचता हुआ 1 रन फिर से मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 60 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा अगर उन्हें एलएम क्रिकेटर्स के बलाढ्य बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव बनाना है तो। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का, और विकेट कीपर मंसूर के हाथों से टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर जरूर टकराई थी। अपील जरूर की मंसूर ने, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। तो 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीमान रोलैंड पिंटो के सारथ्य में श्रीमान हरीश पडील और श्रीमान विवेक बोलूर, जो कि इस श्रृंखला में अपना किरदार बाखूबी अदा करते हुए अंपायर के जरिए। और जहां तक अगली गेंद का सवाल है तो अयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गेंद इस बार गेंद को जगह बनाते हुए खेलना चाहते थे, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड डिफाइन लेग मौजूद। इस बार रिवर्स शॉट रफीक द्वारा, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और बैकहैंड थ्रो मंसूर का, लेकिन काफी वाइड, और तीसरा रन यहाँ पर लेना चाहते हैं लेकिन तीसरा रन नहीं मिलेगा। काफी ऊंचा थ्रो पहुंचा था इस वक्त विकेट कीपर मंसूर के हाथों में, और ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को कलेक्ट करने के बाद बैकहैंड थ्रो किया, लेकिन स्टंप से कोसों दूर गेंद निकलती हुई, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण करते हुए। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये दोनों बल्लेबाज रफीक और अश्विन पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभालते हुए एक बेहतर साझेदारी निभाने की कोशिश करते हुए। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, मच स्ट्रेटर लाइन, एक्स्ट्रा क्विकर, और रफीक इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। 5वां विकेट गिर चुका है, रफीक की पारी समाप्त। एक बेहतर पारी पर रफीक का विकेट गिर चुका है। श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स अपना 5वां विकेट खो चुका है 35 रनों के योग पर। It's 35 for the loss of 5 wickets. And just talking about the next match, one more good match is now coming up right after this match between KFC Kodikal versus Torpedoes Kana. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. मुजीब इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए,
और न सिर्फ बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है एनएम के पास, जबकि बलाढ्य सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप भी है। और बलाढ्य बैटिंग लाइनअप के साथ सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप रियाज, आतिफ, फैजल, अयाज, मुजीब जैसे घटानुघटी गेंदबाज एनएम के पास मौजूद है। और इस बीच ये गेंद पैडल स्वीप किया, गेंद को खूबसूरती के साथ 1 रन का इजाफा, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। सुबह का वक्त 10 बज चुके हैं सुबह के, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई, और इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ साथ दर्शकों की संख्या में भी इस वक्त वृद्धि यहाँ पर होते हुए, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आज बिग डे उर्वा क्रिकेट मैदान पर टॉप सीडेड टीमों का मुकाबला होगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे बल्लेबाज और आखिरकार कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई, 1 रन प्राप्त करने वाले 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से एक बार मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अश्विन के लिए स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, और फिर से ओवर की अगली गेंद स्वीप करना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, एक और विकेट गिर चुका है, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद कौन साइड स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर, और छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रशांत की पारी समाप्त, और मंगला देवी क्रिकेटर्स 38 रनों पर छठा विकेट खो चुका है। इट्स 38 फॉर 6। तो नंबर 8 बल्लेबाज दामोदर का आगमन हो चुका है, अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुजीब की गेंदों का, और मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर स्ट्रोक दामोदर का, गेंद को गैप पर खेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। फिर से एक बार मुजीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, रिवर्स शॉट खेलना चाहा था एक हाथ से, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी कोने पर टकराने के बाद गेंदबाज की दिशा में गई, और बल्लेबाज ने रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। देखा कि तेजी के साथ गेंदबाज गेंद पर लपक रहे, और इसी के साथ ओवर नंबर 8 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 8 ओवर हैज बीन केम टू एंड 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 2 ओवर्स रिमेनिंग इन मंगला देवी क्रिकेटर्स इनिंग्स, और इस वक्त नवा ओवर हमसे दूर वाले शॉट से ऑस्टिन मोंटेरो और डिसोजा फैमिली एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ। और आतिफ इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हैं। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दामोदर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। गर्मी की तीव्रता बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस वक्त करते हुए, सूरज धीरे धीरे अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस प्रखर धूप तले यहाँ पर आज का पहला मैच यहाँ पर प्रगति पर रहा। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर रहा, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 9th ओवर। आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला सेंसिबल, लेकिन वहां पर मिड विकेट पर फील्डर मौजूद था, इनको फील्ड करने में सफल, अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए 20 गज के दायरे के कुछ बाहर, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस।
और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आतिफ ये गेंद इस बार उछालना चाहा, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े दामोदर, रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 42 नाउ, 3 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, 3 रन बन चुके हैं और चौथी गेंद लेकर इस वक्त आतिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन सामना करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लगता है ना, तो ठीक सीमा रेखा के पास रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार आतिफ ये गेंद इस बार धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर सेंसिबल, कोई फील्डर वहां पर नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए वहां पर फिसल कर गिर पड़े, दूसरे रन लेने के लिए जैसे ही मुड़े वहां पर अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े, वरना शायद दूसरे रन की संभावना वहां पर हो सकती थी। तो एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 44 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। आतिफ ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी और इस बार बेल्स वहां पर गिर चुके हैं, लेकिन शायद कहना पड़ेगा 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, शायद कहना पड़ेगा मंसूर का हाथ शायद टकराया था स्टंप्स पर और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार दामोदर सामना करने के लिए तैयार। आतिफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया, बैक टू ओह ब्रिलियंट ऑन इस फॉलो थ्रू, लेकिन बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं। दामोदर इस वक्त क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। तो दोनों बल्लेबाज इस गेंद पर दोनों छोड़ पर बच चुके हैं रनआउट के मौके से और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है नॉन स्ट्राइकर एंड पर अश्विन। देखना यह है कि जब आतिफ ने विकेटों पर निशाना आतिफ का थ्रो टकराया था, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज अश्विन क्रीज पर अपना बल्ला रख चुके थे या नहीं, देखना यह है। और यहां पर देखते हैं तृतीय अंपायर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। तो 9 ओवर समाप्त हो चुका और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 2023 और इस श्रृंखला के सफलता के लिए कई महानियों ने योगदान दिया है, जिनमें से चंद लोगों का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा। श्रीमान किरण कुमार, मंदार अबैल, श्रीकांत शेट्टी जो कि भूतपूर्व खिलाड़ी है विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स के, डिसोजा फैमिली दुबई और चंद्रहास पुजारी वृंदावन कंस्ट्रक्शन कोडिकल। तो इन सब डोनर्स को हम एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन देते हैं नूतन फ्रेंड्स क्लब उर्वा मंगलोर संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से। और जहां तक इज गॉन, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज, शायद अश्विन का बल्ला हवे में था, द बैट वॉज इन द एयर और बेहतर वर्क यहां पर फॉलो थ्रू में आतिफ ने की और इस रनआउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका, 7वां विकेट गिर चुका 44 रनों के ऊपर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, टाइम इज आउट, स्टिपुलेटेड टाइम इज नाउ कंप्लीटेड और यहां पर अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और 1 ओवर का खेल इस वक्त बाकी है और गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए नए बल्लेबाज जयराम और अंतिम ओवर लास्ट ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी में। मुजीब जयराम के लिए 3 विकेट सुरक्षित, मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए पहली गेंद bowled in much straighter line along the carpet, the ball came and he just got the lead of the batsman. Wicket number 8 down, first ball golden duck dismissal for Jairam and 8th wicket gone for Mangala Devi cricketers. Now they are 44 for 8 with just 5 balls to go in their innings.
So number 10 batsman is now walking towards to the middle. One more experienced cricketer for Mangala Devi cricketers. Kiran is now coming out to the middle as a number 10 batsman for Sri Mangala Devi cricketers. और वो इस वक्त सामना करेंगे मुजीब की गेंदों का, और मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज किरण सामना करने के लिए तैयार. बचे हुए 5 गेंदों में मंगला देवी क्रिकेटर्स को बचे हुए 2 विकेटों की मदद से जितने हो सके उतने रन यहाँ पर बटोरने होंगे. यहाँ पर स्वीप करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए रन से नहीं मिला. डॉट गेंद और 4 गेंदें अभी बाकी उनकी पारी में. और मुजीब एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किरण के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर मंसूर चूके 1 रन मिलेगा इस बीच. 45 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. 22 का इशारा, 3 गेंदें बाकी, 3 बॉल्स रिमाइनिंग इन द इनिंग्स. दामोदर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुजीब की गेंदों का. आतिफ इस वक्त कुछ समझाते हुए मुजीब को कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस अंतिम ओवर में उसे उन्हें बचे हुए गेंदों में गेंदबाजी करनी चाहिए. और इस वक्त डीप फाइन लेग फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है फाइन लेग पर. और मुजीब दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दामोदर के लिए सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए. 1 रन जरूर मिला, स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 46 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. 2 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स. और मुजीब उनकी पारी का, मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी का दूसरा अंतिम गेंद लेकर तैयार. द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. और किरण सामना करते हुए मुजीब की गेंदों का. रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन बट नॉट मोर देन अ सिंगल. बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 47 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. मुजीब गेंदबाज, दामोदर बल्लेबाज. उनकी पारी का अंतिम गेंद लेकर मुजीब इस वक्त तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दामोदर के लिए पारी की अंतिम गेंद. Driven down too long off. In fact, they completed one, looking for the second. Throw पहुंचा लेकिन किरण यहां पर बच नहीं पाएंगे. So the innings is up and Mangala Devi cricketers finished with 48 for the loss of 9 wickets in the stipulated 10 overs. And now they set a victory target of 49 for NM Jappo. So NM Jappo have to score 49 runs in the stipulated 10 overs with the help of 10 wickets with a required run rate of exactly 4.90 runs per over. That means they have to score 49 in the stipulated 60 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. Reach. तो एनएम जप्पू की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ जब एनएम जप्पू की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ಕಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ಕಾನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Oh. So thank you very much, Gopi. And NM Cricketers Mangalore, at last they managed to get 48 runs in the stipulated 10 overs. And they set a target of 49 to win the match for NM Cricketers Mangalore in 10 overs. And the asking run rate is just under 5 runs per over. And exact calculation, 4.9 runs per over is the run rate required for NM Cricketers Mangalore. It seems to be a small total, but in this particular tournament, we are witnessing some small total which is depended very well by the defending team, and wait and see how well Mangalore Cricketers will go to depend. But NM Cricketers Mangalore, the team which is definitely has got a fantastic season. The last week they are lifted prestigious Adinatheshwara Trophy, which is played at Nehru Maidan, and altogether 5 to 6 big titles in the name of NM Cricketers Mangalore. So that it's going to be a a lot of hard work which is badly required here for Mangalore Cricketers if they wanted to restrict the opposition not to get 49 runs to win the match. But wicket taking is definitely going to Mangalore Cricketers can back in the game, and attacking bowling is so important here with the economical overs. Kiran will going to start as always for Mangalore Cricketers, experienced campaigner, left-arm bowler, bowling over the wicket. The first ball this time nicely bowled, but placement is so good in irrigation there from Taufik, just between the backward point and cow point to pick the single. This is what I'm showing here is that the ball which is not coming to the bat, and at the same time ball which is not really hard in the nature. So bowler, if he bowls a good line and length, they can create the problem here. The altogether two categories matches which is completed. One is local area, and in that local groups, in that two teams which is qualified, AK Friends as well as NFC Urwa, they qualify for the finals. And now it's Kiran to continue, left arm over the wicket, beautifully bowled, perfect. And this is a frustration. This is what when you are depending a small total, wicket keeper has got to take this chance, isn't it? Looks like it's deflected from the bat. No signal came from umpire. That means it might be a bat here, and bat in the sense slight a bit of opportunity for the wicket keeper, and he missed it, and batsman survived. So 2 without loss of an wicket. Azim is picked up his first run. It's 2 without loss of an wicket. Kiran bowls again from the commentary box, and left arm over the wicket, bowls the slower one, change of pace. That's what I'm talking about. The pitch, not the pitch I'm talking about, but the ball which is slight a bit of impact in this particular tournament, which is very soft in the nature, and it's a slight a bit of weightless, and ball which is not coming to the bat. When the ball is a slight a bit of weightless, soft, and it's going to be a difficult condition for the batter if the ball good line. This time again, that's what I'm talking about. Have a look at the timing, which is not coming from opportunity of run out. Disaster end here for Azim. Disaster end for Azim, I think so, because Taufik is quickly back into his crease, realizing that he will going to get out, and that's why Azim is the batter, is the need to come back to the pavilion. But I think a total misunderstanding between the wicket. The ball which is went to the straight to the hands of square leg, but the square leg fielder returns the ball quite widely, and back up by the fielder. After making a backup, Azim thought it might be a chance of run there, so that he's just asking Taufik to come to the single. Taufik is not responding, and this is what I'm talking about. NM Cricketers Mangalore may be the favorite in this match, but Mangalore Cricketers could put some pressure, and if you want to put some pressure in the beginning itself, they need to pick the wickets, and they succeeded to get the wicket in the form of run out. And first wicket is back into Pepperlin, and a new batter just came into the middle for NM Cricketers Mangalore. The man in a terrific form for NM Cricketers Mangalore, Mansoor, got a fantastic tournament at the Adinatheshwara Trophy 2023. He becomes best batsman award for his outstanding batting performance. Now he came as a number 3 batter for the side. This time again, timing is not coming proper, but I'm not impressed with the field set here. This is what the team Mangalore Cricketers have to see, that ball which is not coming to the bat, keeping the fielder in the edge of the circle. That's providing the opportunity for the batter to complete the single. Now mistimed cricketing stroke there from Taufik, but he got a single. But need to prevent that singles. 3 for the loss of 1 wicket. Kiran once again back to his bowling mark, bowling with a short run off, left arm
over the wicket. Oh my goodness! That ball is almost close to the off stump. Can you believe this? Kiran thought he got the big wicket. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. That this cricket is not easy for the batter. Fantastic start there from Kiran. There is a comparison after completion of first over between Mangala Devi cricketers versus NM cricketers Mangalore. At same stage, Mangala cricketers 5 without loss of any wicket. Now NM cricketers Mangalore 3 for the loss of 1 wicket. That means slight a bit of upper hand, but this is a 10 overs format of the games, so that you cannot predict the match in after completion of first over. Maybe the good start for Mangala Devi cricketers, but consistency in a good performance the bowling department is very important for Mangala Devi cricketers. Getting a start, it's not enough, but they need to get a good start and they need to continue that one and need to finish that one very well if they want to win the match. So Gitesh is brought in attack from the far end. Austin Montero, D'Souza family end. The first ball, and there is no chance at all for any run. Ball went towards a short third man region. There is no possibility of any run. Taufik facing Gitesh again. Lovely delivery, slight a bit of away going delivery, but well within the reach of the batter. And there is no possibility of any run. Slight a bit of deviation, leg cutter there from Gitesh. The batsman thought it might be a wide, but well within the reach of the batter. This is a different ball game, I want to say. This is not a game what you are watching in the present cricket. This time again the wicketkeeper misses completely, but I think it's a good delivery. Very good delivery in the slight deviation. Ball just passing under the bat of the batter, Taufik. Just shuffled across the line. And there is no chance at all for any run. 3 for the loss of 1 wicket. This time across the line, he plays it straight to the hands of square leg. And he wanted a single. But Santosh is not giving opportunity by fielding that one very well. So that it's going to be a 4 dotted deliveries consecutive in the second over by Gitesh. Now Taufik wanted to break the shackle in the delegation across the line. Very lucky he got a bat onto that. Again Gitesh bowls. Slash! Oh! Over the head of that cow point fielder. But probably they will go to come back for the second quite easily in the end because of that ball which is placed very well over the head of that ball fielder. But maybe with one tall fielder in that region, if you had a slight bit of jump, they can take the catch. But I think it's a little master down at short cow point region. And Ashwin Raj couldn't manage to reach that one. Beautifully bowled. Perfect finish for the second over. After completion of over number 2, chasing 49 to win this match, NM cricketers Mangalore searching for the right track. Got a slow start. 6 for the loss of 1 wicket. 5 lead vacation. 2 runs came from that over. It's 5 for the loss of 1 wicket. 2 came from the first, second, and 3 from the first, and altogether 5 in 2 overs, and 2 very good overs, power play overs for Mangala Devi cricketers. This is what I'm talking about. The cricket game of cricket is totally different when you are coming to the format of the games. The 10 hours format of the game is totally different. If you compare the present cricket, which is most of the tournament, which is 6 overs, 5 overs, 4 overs. But when you're getting complete 10 hours game, then it's going to be a different ball game. But job which is not yet over for Mangala Devi cricketers, and even NM cricketers definitely do not really bother about that 2 overs. They can come back in the remaining 8 overs. A big game, plenty of deliveries remaining, 48 deliveries remaining to get the remaining runs. This is a little margin for error, isn't it? You can't do this mistake because when it's very hard to combine the runs from the bat, if the bowler concedes the wides, it gives a slight bit of confidence for the batter. 6 for the loss of 1 wicket. That's only because of when you're seeing the one good batsman in front of you, the bowler always trying for rescue rather than try to get the wicket. Beautifully bowled. This is not a good judgment from Mansoor. He thought it might be a wide, but the ball is couple of inches inside the line. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 6 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Again, Kiran bowling away from us.
Left arm. This time left-handed opportunity. It's going to be opportunity here for the fielder to take the catch. A huge wicket for Bangladesh cricketers. The man in a terrific form is back into pavilion. This is not a similar game he is played for NM cricketers Mangalore in last Sunday. It's a different ball game, I want to say. And when you are especially you're playing in a UCG cricket ground, when you are playing in such a difficult condition for the batsman, it's not a kind of cricketing stroke. He will going to get a big shots. And this is always difficult for the batsman to get the big distance when you are trying for the big shot. It's 6 for the loss of 2 wickets. The Bangladesh cricketers now, they got a very good start, but they need to continue their start. They need to continue their start what they got in the first 3 overs. We are talking about the 2 format of the games. Already in a local pool, the team which is qualified, AK Friends as well as NFC Urwa. And yesterday's match, the Masters Trophy, above 45 category, Reliance Cricketers Jaipur as well as Gori Young Boys, they qualified for the final of this prestigious cricket tournament. And today, the one team out of the 7 seeded teams, they will go into qualify for the mega final of this prestigious cricket tournament. All the mega final will go into field play late in the evening. The first bit is going to be a local pool final will go into play. The second, the Masters final, and third is a Mangalore pool finals will go into play the late in the night. And it might be they wanted to complete within 10 o'clock today. Kiran balls the new, but this time pushing and running, opportunity of run out, but I think is not good enough. Oh, now asking for the third umpire here. Umpire Adish Patel maybe he doesn't want to take any risk because whenever there is a direct hit, that's why I always umpires referring for the third umpire, because sometimes it's very difficult to give the decision in a naked eye, so they're referring for the third umpire. Rakshak, the fielder down at short cover point region, to got that one and hit the stumps, but body language of the batter looks like he's a save, but you need to see the third umpire decision. Umpire Roland Pinto in the third umpire position, he will going to give the decision here. The 6 for the loss of 2 wickets. Yesterday is one more fantastic day of cricket, and the first day I'm talking about when NFC Urwa they reached to the final. The second day AK Friends which is reached to the final. The AK Friends I think one of the best match and the best innings I witnessed by Nitin of AK Friends against Muhammad Padau, where he's a single-handedly he's taken his team into victory, scoring 43 runs unbeaten. And yesterday, Sri Lankan cricketers Jaipur in a semi-final, they defeated Mazda Kannur, and Gori Young Boys Legends defeated Young Friends Urwa in a absolutely thriller match. When it is 58 runs required for the victory, the huge total chased down by Gori Young Boys Legends in 8 overs, and they qualify for the finals. So everyone is eyes on the third umpire decision to whether the batsman is safe or not. NM cricketers Mangalore doesn't want to lose a wicket, but Mangalore cricketers maybe they are just hoping for some luck here. If you're able to get a decision in their favor, then they're right on the top. So wait and see what could be the decision there from umpire. So for the latecomers, you are watching Nutan Champions Trophy 2023, the second year of this cricket tournament. The not out which is called from our third umpire. The batsman is safe. The Kiran to continue. Bowling left arm over the wicket. The last over of the power play is in progress. There's a Taufik swings and miss. This is the one area I'm talking about. Ball which is not coming to the bat. The stroke maker almost struggling here to get the ball into his bat, because you need to read the situation and condition is very well if you wanted to make a contact with the bat. This time again across the line, he swings that one quite dangerously, and the last moment he's got a bat onto that, and with that singles cover Namuza into 8 for the loss of 2 wicket. The fantastic piece of bowling continues here from Kiran. Very useful bowler for Bangladesh cricketers. Still 41 more runs required for the victory for NM cricketers Mangalore.
Young Friends Urwa versus Torpedoes Kano, the next match. This time, the appeal for leg before wicket, but I think it's a ball, but certainly going to miss the off stump. The way that ball is getting the direction. The bowler is bowling over the wicket, and it's leg by call by umpire. One more single after completion of over number 3. NM Cricketers Mangalore still searching for the right track. They're going on exactly 3 runs per over. It's 9 for the loss of 2 wicket. 40 required in remaining 7 hours. That means 42 deliveries, 40 runs required. That means the first 3 overs which belongs to Sri Mangalore Cricketers. This is the last and final call for both the team. Those who are not signed yet, those who are yet to finish their signatures in the official chart, please complete your signatures as soon as possible. This is the last and final call for the players of both Young Friends Urwa as well as Torpedoes. KFC Kodical repercussion. KFC Kodical versus Torpedoes Kana. Final call for KFC Kodical as well as Torpedoes Kana to sign the official chart. So Ashwin Raj is brought into attack from the far end for Mangalore Cricketers. After that, power play, the fielding restriction is off, and there is a fielder at deep Exakawa. The one fielder down at deep long on, beautifully balled. This time, the batters will going to get some gaps because of spread out field. Both the batsmen quickly realizing that rotation of strike is so important here. This is not an easy 10 runs, I want to say. 10 on the board. It's a hard for 10 runs for NM Cricketers Mangalore. Again, disciplined bowling performance by Mangalore Cricketers. Ashwin balls. This time I wanted to get that one on the third man region. Wanted a single there, Taufik. And the Taufik so far looking a slight bit of uncomfortable in the middle. And it's not Taufik you are usually watching. One who enjoying the stroke making, hitting the ball everywhere. But this is a different game, a different ball game. And slight bit of encouragement by the bowler so that he's slight bit of getting some difficulties to get his natural cricket. This time Plum in front of wicket. Taufik is back into pavilion. This is the result of the frustration when you are not seeing, not playing your regular cricketing strokes, isn't it? That's what I'm talking about. And this is the right time for Mangalore Cricketers to tighten up the screws. Ashwin Raj produced a vital breakthrough here. Absolutely perfect one. Taufik looking for the big swing of the bat and misses the line completely. You miss height. What Ashwin Raj has did is absolutely the finding himself, Taufik, right in front of middle stump. It's 10 for the loss of 3 wickets. So new batsman is the captain of the side. Atif is came into middle, and first of all Atif quickly realizing, because he knows that he is observing the game very well. We're sitting in the dugout and watching the batting of their players very carefully, and now he realized that the rotation of strike is so important rather than going for the big shot. This time he swings it hard, but the protection has been given for that cricketing stroke down at deep mid wicket, so that just a single is a 13 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. 12 on the board. So special thanks to the 60 official soft drinks which is provided. Wicketkeeper Yatin slide a bit of fumble. Good over there from Ashwin. Absolutely perfect one. The wicket taking an economical over which is comes in India for Ashwin Raj. After completion of over number 4, searching for the right track. NM Cricketers Mangalore slight a bit of in a back foot, but not fully.
and still they have got a plenty of time to come back because it's 10 overs game, 6 overs remaining, and they have to get another 37 runs to win this match. And first time watching that asking run rate is going over 6 runs per over. Once it's going to be a asking run rate over 6 runs per over, the absolutely psychological advantage of the fielding team, because it's not an easy condition. Of course, the bowler has to make a mistake. Otherwise, if the bowler bowled a good line and line, it's very hard to combine the runs. So Mangalore cricketers has got some good bowlers, I want to say. If he be able to bowl as per the reputation what they got, they can put some pressure onto the NM cricketers Mangalore. So Sumit brought into attack, one more fantastic bowler, but I want to see how we will going to exploit the condition of the ball, and in this particular match. And 4 good overs bowled by 2 Kiran, he bowled 2 overs, Gitesh bowled 1 over, and then Ashwin Raj bowled 1 over. And every bowlers, 3 bowlers used by the captain of the side, they are justified and able to put some pressure onto the batters of NM cricketers Mangalore. So recognize the pair in the middle. Asif Adur is a very talented and experienced campaigner. Starts with a beautiful and quicker one. Not that much of turn, but that's beaten by the quickness of the delivery. The batsman Ashif is not expecting that the first ball is going to be in the off volley, so that slide a bit of late to react to that stroke. Once again, ball which is not coming to the bat. Now Atif is just having word with his partner Asif not to play that dotted deliveries. Each and every dot ball will going to create the problem, as again the bowler bowls right arm over the wicket. Went for the reverse stroke, straight to the hands of Ashwin. One more wicket is back into pavilion. Fantastic field set here by the captain of Mangalore cricketers. Asif hits that one right from the middle of the bat. Nothing wrong with the stroke, but there's something good in the field placement by the Mangalore cricketers captain. Knowing that Asif is the very good reverse stroker of the ball, and they kept the fielder in the right position. Perfect connection, but placement is wrong. The NM cricketers Mangalore have lost their 4th wicket. It's 12 for the loss of 4 wicket. This is all happening when you are all that your cricketing technique which is only set for the small format of the games, 5 overs, 6 overs, 4 overs. Then all in sudden when you're coming to this format of a game, you need to be a little bit patient, isn't it? The patience is key to everything in cricket. When you are playing the 10 overs game, it's not like that the match is all over, but you need to be stay in the middle. Then only you can get the runs. But here is NM cricketers Mangalore, after they're playing plenty of cricket. It's a small format of the games. Every batsman tend to play a big shot. Every batsman tend to play the big shots. When it's a rotation of strike is concerned in this game like this, it's always going to be that potential and temperament, that technique which is going to be tested. Now this is the man I think just came into middle. He's definitely has got all potential of for playing the long game for his team. This time, that's what I'm talking about. Just allow the ball to coming into his bat. This time he's not really looking for the reverse stroke, but he's just helping the ball by playing the horizontal bat. So get that one on the 3rd man region. So now Mangalore cricketers are first time looking in a top. It's 13 for the loss of 4 wicket. They picked up a 4 wicket, another 1 or 2 wickets in a quick session. Then they put some pressure onto the NM cricketers Mangalore, one of the favorite of coming to the finals of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. Sumit bowling away from us, balls this time, pedaled that one nicely down to deep square leg region. Atif knows that the condition of the game, because he's the one player being the captain of NM cricketers Mangalore. He's got a fantastic season from the bat and from the ball, and every time when his team is required his service, required his performance, he is leading from the front. Did a great job so far, but once again the condition asking him to play responsible innings for his team. Ooh, that was a really dangerously played. Absolutely, if he missed the ball, he is definitely finding himself right in front of middle stump, isn't it? But he's so confident, Ayaz. He knows that he's playing across the line of the delivery, but he's very confident that his technique is so good to play that one down to deep fine leg. It's 15 for the loss of 4 wicket. Again now Sumit bowls right arm over. Oh, this time it's a Yorker length delivery. Ball deflected from the legs. They're looking for the second. In comes the throw, and oh my goodness, direct hit might be all over. Leg by call by umpires.
slight bit of that ball is outside the line of off stump. With the wing fact of the line, even the ball is which is a Yorker line delivery, but when ball hits the leg of Hatif, his leg is a slight bit outside the line of off stump, so that umpire rightly so no interested, but a couple of runs has been taken. This is a really good delivery, the previous one I want to say, but unfortunately that ball is hitting the leg of Hatif. 17 for the loss of 4 wicket after completion of 5 overs, 5 remaining, and still they have to get another 32 runs to win this match in the remaining 5 overs. And Gopi, quite what I want to say, it's not like the kind of scoreboard you are watching. This is not a healthy scoreboard for NM Cricketers Mangalore. Everyone thought when it's 49 to get from 10 overs, and everyone thought it's going to be easy for NM Cricketers Mangalore because the kind of potential, the batting what NM Cricketers Mangalore has got. But Mangala Devi Cricketers exploiting the condition of the ball very well, isn't it? Every bowler beautifully, but job is not yet over. They have to get another 5 good overs because NM Cricketers Mangalore, even though they lost 4 wickets, Gopi, but this is a 10 overs format game. Plenty of time for the players to get in and get some acceleration of run rate and partnership. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 5 overs belongs to the bowlers of Mangala Devi Cricketers. Absolutely fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers. This time gone for a big one by Atif, not connected that one properly, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला. और यहाँ पर 4 विकेट गिर जाने के बाद सतीश एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है आतिफ और अयाज के ऊपर की एक साझेदारी निभाने की. और यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन न करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा. और जहां तक मंगला देवी क्रिकेटर्स का सवाल है, पहले 5 ओवर के खेल में जो बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है, उस सफलता के सिलसिले को अगले 5 ओवर में उन्हें बरकरार रखना है. यह गेंद इस बार जस्ट वाइड ऑफ द शॉर्ट मिड विकेट फीडर, एंड दिस टाइम इट माइट बीन कंसिडर्ड ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस. इन फैक्ट दे कंप्लीटेड सेकंड एंड दे गॉट द सेकंड रन इजीली. मुश्किल सा मौका था इस वक्त मिड विकेट फील्डर के लिए. स्विंग किया था आतिफ ने डीप मिड विकेट पर, बेहतर फील्डिंग फील्डर द्वारा, और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन बनाने हैं कुल मिलाकर. और जहां तक गेंदे बाकी हैं 26. अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार आतिफ के लिए पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, और इस बार मौका, और इस बार थर्ड अंपायर के लिए मांग की गई है. That was an absolutely close call. और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब आतिफ का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर द बैट वाज इन द एयर. दैट इज द मेन क्वेश्चन स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन. और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं. अगर यहाँ पर आतिफ का विकेट गिरता है तो निस्संदेह एनएम क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है. और आतिफ ये चाहते हैं कि वो बचें इस गेंद पर, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर क्या निर्धार होता है. और इस बार इज गॉन. Atif is back into pavilion, and this is an absolutely a big blow for NM Mangalore. Just come back for the second run, and before Atif reaching to the striker, and straight throw came from the deep fine left fielder into the hands of wicketkeeper, and the wicketkeeper flicking the wickets very quickly. और आतिफ खुद इस वक्त अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो आउट हैं, और वहां पर वो बैठे हुए हैं, और इस वक्त दूसरे बल्लेबाज को कुछ समझाते हुए अयाज को कि यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें अपनानी चाहिए. तो 5वां विकेट गिर चुका है. 5 विकेट्स इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन. धीरे धीरे ये साझेदारी यहाँ पर जम रही थी कि आतिफ का विकेट गिर चुका है, और आतिफ का विकेट गिरना इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट इस वक्त कहलाएगा. और इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट कुछ 6 से कुछ ऊपर, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, और एक सेंसिबल बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है. और जहां तक सवाल है इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स का, तो इस वक्त उन्हें दबाव डालना है बल्लेबाजों के ऊपर अपनी बेहतर गेंदबाजी के जरिए. तो 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और नए बल्लेबाज, वन मोर बैट्समैन, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल. इन प्रेजेंट डेज इज गॉट अ गुड फॉर्म, बेहतरीन फॉर्म में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए इन दिनों में बल्लेबाज रियाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है. और इस वक्त देखते हैं इस मैच में वो अपने टीम की नैया को सही तक पहुंचा पाते हैं या नहीं. तो इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए
अश्विन और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और मैच अभी भी इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। दाहिना हाथ ओवर द विकेट अश्विन की गेंद, गेंद इस बार स्वीप करना चाहो, इस बार रन आउट करता लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। गेंद को बिना देखे रन लेना चाहता इस वक्त रियाज ने, लेकिन जैसे ही भापा की गेंद वहीं पर जा चुके विकेट के ऊपर तेजी के साथ गेंद पर लपक रहे हैं, अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। 6 ओवर की समाप्ति, 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, 26 needed in remaining 24 balls with a required run rate of 6.5 runs per over. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ request the captains of Torpedoes Ghana and KFC ಕೋಡಿಕಲ್ please to be reported here for toss procedure. So equal battle is now continuing here. काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है और रियाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। What a fantastic match is now progressing here. The first match of the day, fourth and last of this prestigious cricket tournament, Nutan Champions Trophy 2023, which proudly organized by Nutan Friends Club Urwa, Mangalore, in the sweet memory of Mr. Austin Montero और निस्संदेह डिसोजा फैमिली बोलूर इस श्रृंखला के मेन स्पॉन्सर्स में से एक है। एक बार फिर से उनका डिसोजा फैमिली का हम अभिवादन न करते हुए इस मैच के अगले ओवर की ओर बढ़ते हैं। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से सुमित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को स्वीप करना चाहा था, सफल होते हुए बाई का इशारा, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए गेंद को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। रियाज और अयाज दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत इन मैंगलोर को यहाँ पर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए। और सुमित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद, this could be trouble, this is in a trouble, that is an outstanding fielding and that is the end of Ayaz, the man dismissed, and this is an absolutely outstanding fielding. Certainly that was in a single. तो इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए कॉल की गई है कि कौन बल्लेबाज यहां पर आउट है। तो देखते हैं यहां पर क्या निर्धार देते हैं तृतीय अंपायर, किसको आउट घोषित यहां पर करते हैं। तो यहां पर बैकफुट पर जाने के बाद कट किया था सतीश, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट फील्डिंग, दैट मींस एन द फील्डिंग द लेवल ऑफ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फील्डिंग जैसा करते हैं ऐसा फील्डिंग यहां पर किया था। डाइविंग लगाते हुए जो जयराम फील्डर थे उन्होंने गेंद को इस बेहतरीन तरीके से रोका, न सिर्फ उन्होंने गेंद को रोका बल्कि यहां पर रन आउट करने में सफल रहे और निस्संदेह कहना पड़ेगा सतीश, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग। It's outstanding piece of fielding there by Jairam. Absolutely everyone enjoy. Now we need to see which batsman going to be out because when the batsman is one who is very close to the stumps, not striker stance, then he will be out. That's what I want to see. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर देखते हैं कौन सा बल्लेबाज आउट है। तो इस वक्त तृतीय अंपायर चेक करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आज न सिर्फ लोकल क्रिकेट में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी फील्डिंग एक महत्वपूर्ण यूनिट बन चुका है और यहाँ पर फील्डिंग के जरिए हमने देखा है कि कई मैचेस जिताए गए हैं और निस्संदेह यहाँ पर हर खिलाड़ी आज के ज़माने में फिजिकली फिट रहना चाहता है, खासकर फील्डिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही शार्प रहना चाहता है। और यहाँ पर
जो बेहतर फील्डिंग जो जयराम ने की थी उसकी बदौलत यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर कौन से बल्लेबाज आउट है, रियाज या फिर अयाज। तो तृतीय अंपायर यहाँ पर चेक करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। Absolutely a difficult time continuing here for the batsmen of NM Jaipur at this situation. 24 for the loss of 7 wickets. और इस वक्त जहाँ तक का सवाल है निर्धार आना बाकी है, तो फील्डर्स इस वक्त मैदान पर खड़े हुए मंगला देवी क्रिकेटर्स के। और जहां तक सवाल है मंगला देवी क्रिकेटर्स का, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द बॉलर्स ऑफ मंगला देवी क्रिकेटर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप नाउ अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर द टाइटल। एनएम जप्पू के खिलाफ इस वक्त दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप मंगला देवी क्रिकेटर्स एट दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर अभी भी तीसरे अंपायर उस निर्धार का परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। So Ria survived, and Ayaz, the man now dismissed. So यहाँ पर रियाज का विकेट बच चुका है और ये कुछ हद तक के लिए एनएम क्रिकेटर्स के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और विकेट नंबर 6 विकेट गिर चुके हैं और अब लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन अजहर का आगमन यहाँ पर होता हुआ
अजहर इज ना कम्स आउट टू द मिडल। अगर ये जोड़ी को यहाँ पर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज तोड़ते हैं तो निस्संदेह उनका पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। तो जहां तक एनएम जप्पू के विजय का सवाल है, उनके सारी उम्मीदें सारी आशाएं इस जोड़ी पर निर्भर, अजहर और रियाज के ऊपर। और देखते हैं यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। तो गेंदबाज तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुमित गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथों बढ़ता विकेट अजहर के लिए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, गेंद को खेला इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर इस वक्त हो चुकी है 4 रनों के लिए। सो वेलकम बाउंड्री केम फ्रॉम द बैट ऑफ अजहर। तो ऐसे मौके पर अजहर बेहतर जाने जाते हैं और यहां पर अंडर प्रेशर खेलने में अजहर माहिर है और यहां पर खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 21 रिक्वायर्ड एंड 21 बॉल्स रिमाइनिंग। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। सुमित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अजहर के लिए यह गेंद इस बार बाउल आउट। अजहर इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन, मिडल स्टंप uprooted and an important breakthrough for Sumit and for Mangala Devi cricketers. फुलर लन गेंद शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, लगभग ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा गाते हुए मिडल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और अजहर का विकेट यहां पर गिर चुका है 28 रनों पर और 7 विकेट यहां पर खो चुका है। एनएम क्रिकेटर्स आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। अजहर डिपार्ट्स। तो यहां पर एक चौका रिवर्स शॉट लगाने के बाद अगली गेंद पर ऑन साइड पर स्ट्रोक लगाना चाहता अजहर ने, लेकिन गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम सुमित, लगभग ब्लॉक होल पर गेंद उन्होंने फेंकी और उनका लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और यहां पर अजहर का विकेट गिर जाने के बाद ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर एनएम जप्पू। तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 09 नंबर की जर्सी पहने हुए फैजल, और जहां तक फैजल का सवाल है, फैजल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और यहां पर उनके टीम को जरूरत है रियाज और फैजल की उपस्थिति और देखना यह है कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। फिलहाल सुमित एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 20 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए विजय के लिए। सुमित इस बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ओह टेरिफिक, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के बल्ले का कोई बाहरी सिरा या किनारा इस वक्त नहीं टकराया। बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से सुमित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट हवा में पॉइंट पर गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त खेला था और 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 7 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 30 रन ऑन द बोर्ड, 7 विकेट लॉस्ट और सतीश निस्संदेह अजहर का विकेट गिरना इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स को मुश्किलों के दलदल में और ढकेल चुका है। अब रिकॉर्ड रन रेट कुछ ज्यादा नहीं है, 18 गेंदों में 19 रन बनाने, 6.33 रन प्रति ओवर, लेकिन सवाल इस वक्त उठता है 3 विकेटों का, सिर्फ दे गॉट ओनली 3 विकेट्स इन हैंड। तो यहां पर मंगला देवी क्रिकेटर्स को यहां पर कमबैक करना है तो निस्संदेह यहां पर उन 3 विकेटों को उखाड़ना होगा अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है। तो and Gopi, just we're talking about the run rate required. Just you are talking about it's not a big one, 6.33 runs per over, but condition this is 6 point in this condition that 6.33 maybe it looks like a 12.33 because they got only 3 wickets in hand. Gopi, losing 1 wicket is really giving an opportunity for the opposition to back in the game, so that Mangala cricketers desperately wanted to get the wicket. They know that the run rate is not a big one.
बिल्कुल सतीश, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। दाहिना हाथ ओवर के रक्षक की गेंद, पहली गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन, रियाज चूके और 7 विकेट गिर जाने के बाद सहज रूप से नेचुरली दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। और देखना यह है कि क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रियाज और फैजल दबाव को किस तरह झेलते हैं, प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। और इस बीच गेंदबाज रक्षक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, विकेट टू विकेट इस वक्त गेंदबाजी करनी होगी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद को रोकने में सफल, सीमा रेखा के अंदर 2 रन, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। Absolutely perfect reverse shot played by Riaz. Improvisation करते हुए गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ खेल दिया। कवर पॉइंट फील्डर की दाईं ओर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। डीप कवर पॉइंट फील्डर शायद अश्विन थे जिन्होंने गेंद को इस वक्त फील्ड किया डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर। और 3 रन बल्लेबाज बटोर चुके हैं और 33 रन स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 16 रन और बनाने हैं विजय के लिए, 16 गेंदें बाकी, 16 balls to go, 16 runs they have to score for victory। न सिर्फ इस वक्त ये दोनों बल्लेबाजों को रन्स बनाने जबकि बल्कि विकेटों की सुरक्षितता पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। जहाँ तक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के गेंदबाजों का सवाल है, इस वक्त विकेट उन्हें जल्द से जल्द उखाड़ने होंगे। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रक्षक का गेंदबाजी इस वक्त करते हुए फैजल के लिए ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केप्लोर द लास्ट मूवमेंट, स्वीप करना चाहता इस वक्त फैजल ने, क्योंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतरीन गेंद थी और फिर से एक बार गेंदबाज फैजल गेंदबाजी का सामना करते हुए, रक्षक दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज फैजल के लिए यह गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 14 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए विजय के लिए। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर एंड अ फैंटास्टिक performance giving by the bowlers of Bangladeshi cricketers at this situation. The NM cricketers just have to break the shackles at this situation. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रक्षक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रियाज के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स टॉप एज, मौका फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए। रिवर्स शॉट खेला था लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई, शायद वहां पर मिड ऑफ फील्डर के लिए मौका हो सकता था लेकिन वहां पर प्रयत्न ही नहीं किया यहाँ पर कोई फील्डर ने, और गेंद इस वक्त खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन मिला। 35, 35, 14 रन रिक्वायर्ड, 13 balls रिमेनिंग एंड स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड। और रक्षक एक बार फिर से तैयार फैजल के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार टॉप एज, इस बार कैच छूट चुका है, मुश्किल सा मौका लेकिन बेहतर प्रयत्न, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय द शॉर्ट थर्ड फील्डर और 1 रन यहां पर मिला। तो 8 ओवर की समाप्ति, 36 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 overs, 12 balls रिमेनिंग, 13 रन रिक्वायर्ड। और सतीश अंतिम 2 गेंदों में रियाज का भी विकेट बचा, उसके बाद फैजल का भी विकेट बचा, दोनों मुश्किल सा मौका था और 12 गेंदों में 13 रन बनाने हैं, 3 विकेट सिर्फ सुरक्षित है। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है सतीश, अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। One wicket definitely brought Mangalore cricketers has got a golden opportunity to win the best matches against the best team. But that's what you need to grab the opportunity which is not coming to your way regularly. And when you have opportunity coming to your way, you need to grab this opportunity. There are 2 missed chances in that over, and NM cricketers Mangalore still they are looks like they can do the job. But Gopi Gitesh has got 1 hour to spare. But the big question raising here is that the 2 overs which is remaining, and one which is from Gitesh, an experienced campaigner, and the next one may be the Rakshan who will complete the 1 hour, he got 1 hour. So it's going to be very interesting. It's going to be an interesting game. It's going to be a fantastic match for the spectators. Exactly, Satish. What a fantastic match for the spectators. The first match of the day 4 of Nutan Championship 2023. पहली गेंद गितेश की ऑफ स्टंप पर, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड, 37, 12 रिक्वायर्ड,
12 balls remaining. The pressure is now building up on both sides. गितेश इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए फैजल के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, सुपर बेहतर शॉट इस वक्त, इंप्रोवाइजेशन थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल. 38, 11 balls, 11 runs. It could be anybody's game. और रियाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और देखना यह है कि अब रियाज गितेश की गेंदों का किस तरह सामना करते हैं. विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद एक बार फिर से तैयार. गितेश, ये गेंद बेहतर गेंद, इस बार डॉट गेंद, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में, चूंकि बेहतर गेंद थी गितेश की और शायद वहां पर स्टंप आउट का मौका जरूर था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूट चुका था और बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं और डॉट गेंद. एक बार फिर से गितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 3 से 4 कदम उनका रन अप. यह गेंद बेहतर गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा. क्लीन कलेक्शन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर. 39, 10 रिक्वायर्ड, 9 balls remaining. What a match is now progressing here. Still the match is in balance. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एक बार ठुके, डॉट गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी. And now 8 balls remaining, 10 runs required. The pressure is now building up on the batsmen. And a fine piece of bowling performance continue here from Gitesh. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा. थ्रो पहुंचा, इन कम्स द थ्रो, जस्ट अ सिंगल, इनफैक्ट वाइड थ्रो, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर किरण द्वारा शॉर्ट मिड विकेट पर. 49 रिक्वायर्ड, 7 balls remaining. और टाइम इस वक्त पूरा हो चुका है, तो यहां पर एक खिलाड़ी को अंदर बुला लिया जाएगा. तो यहां पर ये कुछ हद तक मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि रियाज और फैजल आक्रामक बल्लेबाज है, तो एक फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया जाएगा, तो सिर्फ 4 फील्डर भी इसके दायरे के बाहर रह जाएंगे. तो इसका फायदा इस वक्त देखना पड़ेगा, रियाज और फैजल बल्लेबाज है, उठा पाते हैं या नहीं. इस ओवर में अंतिम बार गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, रियाज सामना करने के लिए तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में, गेंद कवर पॉइंट सीमा लगा बाहर, 4 रन. Absolutely fantastic struck from the bat of Riaz, improvisation, and he's got that one in a style. 44 for 7. 9 overs completed, last over remaining, 5 to get. और सतीश, रियाज का अंतिम गेंद पर जो चौका यहां पर लगा था, वो चौका ऐसा कहना पड़ेगा एनएम क्रिकेटर्स को इस मैच में वापस ला चुका है. Now NM cricketers Mangalore might be looking like the favorite, but wait and see the result of this match. बिल्कुल सतीश, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. अंतिम ओवर, पहली गेंद शुरू होता है. ओह ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. वाइड का भी इशारा हो चुका है. 1 run added to the total and 45 for 7 now. और यहां पर देखना यह है कि यहां पर बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं जब विकेट यहां पर उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला. अब 4 रनों की दरकार है, जबकि 6 गेंदें बाकी हैं. तो तीसरे अंपायर यहां पर परिशीलन करते हुए कि बल्लेबाज आउट है या नहीं. इज गॉन, 8 विकेट गॉन, 4 रिक्वायर्ड, 6 balls remaining, 2 wickets they got in their hand. And Faisal is now backing to pavilion and we are just waiting for the number 10 batsman. तो यहां पर अब सतीश
नंबर 10 बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और यहां पर एनएम क्रिकेटर्स के लिए ड्रॉबैक है कि रियाज ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, तो यहां पर नए बल्लेबाज जो यहां पर आ चुके हैं, आ रहे हैं, वो सामना करेंगे और उनको इस वक्त डॉट करना या उनका विकेट उखाड़ना इस वक्त यतिन को, अगर मंगला देवी क्रिकेटर्स को कम बैक करना है। बिल्कुल सतीश, देखते हैं यतिन की गेंद, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 4 runs required, 5 balls remaining. So this is an absolutely nail biting finish. डॉट गेंदों की सख्त जरूरत, बेहतर गेंद यतिन फेंक चुके हैं, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड और नंबर 10 बल्लेबाज जैद सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा। 46 for 8, 3 required, 4 balls remaining, 2 wickets in hand. रियाज बैक ऑन स्ट्राइक। अब देखते हैं रियाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। What a fantastic match is now progressing here. और इस वक्त यतिन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, रियाज सामना करने के लिए तैयार। शीट एंकर्स रोल, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए एनएम जप्पू के लिए यतिन दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इम्प्रोवाइजेशन, गेंद गैप पर जाते हुए और बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद पहुंच चुकी है। रन यहां पर मिलेंगे 2, 3 रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचे स्ट्राइक लाइन पर, लेकिन इस बार निशाना, लेकिन बल्लेबाज पहुंच चुके हैं एंड दैट 3 runs brings एनएम जप्पू got the victory. So what a thrilling victory. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा सिद्धीज, absolutely brilliant performance given by the players of Mangala Devi cricketers. Fantastic game of cricket we have witnessed in this the first match, and Mangala Devi cricketers really they fought hard, but I think the Riaz is once again is showing his excellency in under pressure situation. He is the one is standing tall in the other end and played a fantastic game of cricket. He never looks like he will going to give this match against team. He's fought hard and he taken his team into safely to the target, and a fantastic knock from Riaz, outstanding knock from Riaz, because this is a knock I want to see from the youngsters. Definitely they will going to get some inspiration from the knock of Riaz, way that is handled the pressure, came as a number 7 batsman. It's not a easy condition when he came into the middle, and he really played a very good game of cricket. Mangala cricketers might be thinking about some miss chances what they really got. The catching is absolutely the opportunity they missed out, but the Mangala cricketers really played one of the best game I want to say, and even they lost the match but they won the heart of cricket lovers. Congratulations NM cricketers Mangalore, hard luck Mangala cricketers, they fought hard but unfortunately they couldn't manage to win this match, and better luck for the next match, next tournament. Meantime, one more good match is coming up. KFC Kodikal versus Torpedoes Connaught. We'll take a short break here. Thank you.
Thank you very much, Gopi. What a fantastic match we have witnessed. And it's a nail biting finish at last. NM victors Mangalore managed to win this match. Quite difficult they are faced to get that 47 runs, and at last they managed to come 49 runs in fact, and at last they managed to complete their target. Now it's Torpedoes Khana versus KFC Godikal, let me correction. And first ball, it's a start with the wide, and KFC Godikal captain won the toss and elected to field first. And Vineet is the bowler, will going to start his proceedings, but starts with the wide. Ashraf is the batter, will going to face next delivery. Oh, beautifully bowled right on the midland leg stump, but ball has got a slight bit of deviation, going to miss the leg stump, and rightly so. Umpire Arish Padil not interested. Even the half-hearted shout is not a confident appeal from bowler Vineet. He knows that ball just shaping outside the line of leg stump, and there is no chance at all for any run. And one without loss of any wicket. This is not a kind of tournament where batsman, the stroke maker, will going to enjoy, but need to get eye in. They need to adjust the condition very well if you wanted to get his natural cricketing. That's what I'm talking about. Ashraf is a little bit struggling to get his natural cricketing stroke, and the bowler Vineet bowling a very good tidy line and length. After that, the first ball, which is bowled a wide ball. One without loss of any wicket. Here is again Vineet, left arm round the wicket. Oh, that's going to be a spectra wide. The second wide of this over. When condition is very good for the bowler, I think it's no excuse to bowl that wide deliveries, isn't it? Because that will going to release the pressure from the batters when something is going in the mind after playing two dotted deliveries, and need to bowl. Oh my goodness, one more wide, the third wide of this over. So that means it's not a good sign for the bowler to bowling that much of wide deliveries, but nothing much worried about the runs. Only three they got. They all three runs in the form of extras. But the problem is here is that the batsman will definitely he will go to regain his confidence, isn't it? After the two dotted balls, something the level of confidence is coming down. But bowling wide deliveries, it will definitely going to be a problem. This time straight to the hands of Tazuddin. The extra cover fielder Tazuddin got a slight bit of jump to take the catch, and Vineet strikes the wicket of Ashraf. Just like I mentioned, have a look at the stroke actually. If any condition of the ball, unless the ball which is used for the tournament, it might be the stroke which is going over the top of the infield. But again, the ball which is not coming to the bat, which is a soft in the nature, ball which is went straight to the hands of short extra cover. It's 3 for the loss of 1 wicket. It's 3 for the loss of 1 wicket. I request the batter have to need to enter quickly, and 3 for the loss of 1 wicket. The new batsman in is Ashwin. Quite surprisingly, but I'm not really surprised because this is a 10 overs format of game, and certainly the batsman like Ashwin who loves to play a long format of games. This is a 10 overs format of game, so that is a useful the batsman to come as a number 3 batters to capitalize. And wait to see how Ashwin will going to justify the promotion up in the order, in the batting order for Torpedoes Khana, and he is now coming to the middle. So 3 for the loss of 1 wicket. At last the bowler Vineet has got a breakthrough, even though bowled 3 wide deliveries in this over, but 1 delivery which is absolutely drivable delivery, but Ashraf is not really able to keep it down. Of course he drives the ball, but officially and straight to the hands of short extra cover. Vineet bowls. This time again the ball is around the legs of the batter. Again ball which is not coming to the bat. This is what the batsmen are facing in this tournament. And again that ball is came into the hands of a bowler. And here again Vineet bowls right arm over the wicket. This time top edge opportunity. Ball is going and Harris takes the catch. Ashwin departs. Second wicket of Torpedoes Khana is back into pavilion. 3 for the loss of 2 wicket. Ashwin not justifying the promotion in the batting order. Again, that's what I'm talking about. Ball which is not coming to the bat. You need to wait for the ball, isn't it? And maybe the Ashwin tried to flick that one. Is not really played that one full-heartedly because there's a half a mind cricketing stroke what he wanted to flick that one, and instead of just going for the slog sweep shot,
And that's the reason that ball has got a leading edge. Vinith is bowling a leg cutter, and quite enough for him to get a second wicket in his ball. Over 3 for the loss of 2 wicket, Toscana. So 3 for the loss of 2 wicket. But promotion for Ashwin as a number 3 batters. I'm not thinking that it might be the good thinking or bad thing. I'm not really. 1 ball remaining, sir, in this over. 3 balls which is bowled wide. So that 9 deliveries over. So what talking about why Imtiaz is kept as a number 4 batsman, why Ashwin is brought as a number 3 batter. But if the batsman Imtiaz is a hard hitter of the ball, maybe that I think is a good decision. But Imtiaz is a kind of batter who loves to play in that number 3 position. Again, have a look at that one. Again, batsman wanted to turn that on onside the region, but ball came late to the bat, so that missed timing comes into play. Very good over there for a minute. Excluding that 3 wides, it's absolutely no run came from the bat. So he picked up 2 valuable wickets. It's a good start here for KFC Kodikal. But this is only a start. I'm talking about this is only a start. Will give a lot of confidence for other bowlers. If they bowl very well, they can put some pressure onto the batsman. So wait and see how well they will going to continue after getting a good start. They're coming back to the KFC Kodikal. And there's a present season. They're not really enjoyed that season. Only once they become the champion. And Sohar Topi, it played in a UCG cricket ground, and otherwise a slight bit disappointment in this season. But I think KFC Kodikal knows that they are in the end of the season. They wanted to end the season with some one big victory, and that's why they're trying their level best. And from the far end, Naushad will be the bowler, and outside the leg stump going to be wide. With that excess cover moves on to 4 for the loss of 2 wicket. At the same time, in this particular playing 11, excludes 2 very good players from the team. And this time appeal for leg before wicket, slide a bit of leg cutter, chance of run out there, and direct it might be slight a bit of close one, but the fielder misses the ball, the wicket, and the batsman completed a single. 5 for the loss of 2 wickets. Coming back to that, 2 very good players, Shakir as well as Chetan. They are missing KFC Kodikal because they played in a local group. They represented for youngster Wamadapada yesterday, not yesterday, the day before yesterday, and they came to the semi-final but fails to came into the finals. But that's why they're lacking, and KFC Kodikal have to fill that places. This time again, this is what typical Imtiaz always loves to play the sweep shot. This is the what I'm talking about. How difficult for the players in this condition. Even Imtiaz struggling to get his favorite sweep shot to play properly. Naushad. Right, over the wicket, up and over the top of the infield, down to deep longer boundary for 4 runs. Lot of time for Imtiaz, isn't it? There is no ample pace in the bowling of Naushad. Gentle pace, and he didn't got adequate field for that, isn't it? When you are trying for the delivery which is outside the run of with a slower one, I think you need to keep the one fielder in that region. Otherwise you are asking for trouble. You are giving absolutely opportunity for the batter like Imtiaz to freeze his arm. And up and over, such a good cricketing stroke to play in the power play over. And with that boundary scoreboard jumps into 9 for the loss of 2 wicket. Now Shad bowling from the Austin Montero end. And D'Souza end. This time again he plays that one very nicely. This time we're going to get one single ball which is not traveling in the ground. You can see maybe the reason that the ball is not having a weight, at the same time timing is not came proper, and the fielder has got a plenty of time. We need to field the ball. One more single taken. 10 for the loss of 2 wicket. This time again, the batter, oh my goodness, opportunity run out, isn't it? Imtiaz is struggling to reach his home. If it is a neat collection, might be the chance here for the run out. The wicketkeeper misses the ball. Even the direct, it might be the all over for Imtiaz. Absolutely, it's a hot condition. It's 11 for the loss of 2 wicket. The over number 2 is in progress. So last ball remaining in this over. It's 11 for the loss of 2 wicket. Toscana also got a very good season.
They are lifted some prestigious titles, and especially in this particular cricket ground, last tournament, they become the champion. There's some lovely shot, beautifully played, but not enough to get a more than single. And the fielder is so quick here, Tazuddin, to run back to field the ball. One more over completed, a slight bit of comeback over and productive over for Torpedoes Khana. After completion of over number 2, it's 12 for the loss of 2 wickets. Torpedoes Khana going exactly 6 runs per over and lost 2 wickets. Very hot condition. The time is exactly 11 past 35 in the morning. This is our number 2nd match is going on. Today is a different day for cricket, I want to say. So all we can see that last 2 days of cricket, 3 days of cricket is played in daylight, and today we are going to witness at least 2 matches under floodlight, and probably the organizer wanted to finish off the things in the within 10 o'clock in the night. So lot of entertainment here for the spectators today, and weekend Saturday. We hope there's in this particular cricket ground we are going to witness some fantastic matches. Bowler been introduced. No change in bowling. We need to continue. So next match, Gori Young Boys versus KCCR Kadri. Beautifully driven, Imtiaz right in the gap. They're running hard. And no, chance of run out. Oh, wide throw. And it's gone. Absolutely, there is a terrible mix-up. There is a possibility of second run, isn't it? Because nothing much dangerous here for Imtiaz. Because Tanvir is the one who is running towards danger end. But after Tanvir starts the run, Imtiaz is sending him back. But it's too late for Tanvir. He's almost halfway down the track. He won the throw which came to the direction of non-strikers end. And bowler returns the ball very quickly to the hands of wicketkeeper. And wicketkeeper did a great job. And Akeem did a great job, even though there's a wide and a high throw. But he did a fantastic job to collect the ball, hit the stumps. Then terrible mix-up which is ended in a huge wicket of Tanvir is back into pavilion. It's 13 for the loss of 3 wickets. So 13 for the loss of 3 wickets. The KFC Codical, they got opportunity now here to tighten up the screws. Basit is a new batter in. Now walking towards the middle for Torpedoes Khana. One more very useful cricketer. Fantastic, cool and calm guster, but a very effective batter. Beautifully bowled. This is what I'm talking about. Bashit will quickly going to realize how difficult wicket is going to be for the batter. After that, a stroke which is mistimed, that one, Bashit. So 14 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Again the bowler Vinith, left arm, big wide, Spectra wide, and this is going to be a bonus run for Torpedoes Khana. All these runs will going to comes into play when they're going to chase these runs. These extras definitely going to frustrate the batter. 16 for the loss of 3 wicket, because each and every run very difficult for the batter to get from the bat. Vinith again. Boss, this time it's going to be a stroke which is going over the top of the infield, and which is stopped by the fielder. Excellent stop by the fielder to running back and stopping a couple of runs for his team by chasing the ball beautifully. Once it looks like it's going to be a boundary there, isn't it? It's not easy for the fielder to run back and field the ball just inside the boundary line. He managed to pull the ball, and a couple of runs has been taken. It's 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Vinith to Basit. Basit this time again the ball is outside the line of leg stump, but Basit is not getting that much of a timing. He's not happy with himself. He know exactly can deliver that one to a mid-wicket region. Again the fact that ball which is not coming to the bat is mistimed. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress.
Again, that ball is around the legs, right to Frickson off his legs, and leg by call by umpire. One more single has been added to total. It's 20 for the loss of 3 wicket. And the over number 3 is in progress. What a fantastic atmosphere out here in this most beautiful ECG cricket ground. The tournament which is running very successfully. This time, up and over. Again, over the deep extra cover fielder. And before the fielder from the deep extra cover, Harris to run back. 2 fielders running back to field the ball. Couple of runs has been taken. So runs which came very freely in this over. The Torpedoes are looking so good in this condition now. Even they lost 2 quick wickets, but they got a very good score on the board. It's a 22 for the loss of 3 wicket after completion of over number 3. It's a 22 for the loss of 3 wicket and 3 gone, and 4th over going to start from the far end. Harris brought into attack. Harris brought into attack, right arm down the wicket, and first ball nicely tapped that one down to a square leg region for an easy single. And with the single score, moves on to 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Again, Harris from the far end, right arm over the wicket, balls again from the Austin Monterrey around the wicket. He will go into ball to Basit. Basit this time nicely swept that one down to deep square leg region. Now both the batsmen realizing that they got a very good position, isn't it? In this condition, 22 in a 3 overs always going to be a good total, so that they got another 7 overs to spare. If you play sensibly, they can get a good score here against KFC Kodikal. Harris have to pick some wickets. We have to ball some wicket-taking deliveries if they want to win the match. Again, they're going for the quick single. Oh my goodness, opportunity. Absolutely golden opportunity. Harris, let's slide a bit of shown urgency. Otherwise, he can pick the ball and hits some opportunities created in the non-striker's end. Imtiaz dealing with some luck here. This is the second occasion he's just got a luck. .25 for the loss of 3 wicket. Right arm over the wicket, swept that one nicely down to square leg division for an easy single. With that single, scored moves on to 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. What a fantastic tournament is in progress. Nutan Champions Trophy, proudly organized by Nutan Friends Urwa. The cricket festival for the 4 days of cricket festival, the day and night today. This time appeal for leg before wicket. Umpire says that from the bat, ball which is just got a contact with the bat, so that no question of leg before wicket, and scoreboard is remains on 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Harris again back to his bowling mark, coming round the wicket to the right hand batsman Imtiaz. Imtiaz once again going for the expansive drive. Maybe he wanted to drive that one over the head of the bowler, but he missed time that one. That shows the ball which is not really coming to the bat. Again that one more over completed. Good over. Just 4 came from that over of Harris after completion of 4 overs. Torpedoes Khana still they are looking in a good position. It's 26 for the loss of 3 wicket, and the run rate is and it looks like it's a 4.50 6.50 runs per hour. The change in bowling now. Ashwit the ball back in the game, back in the attack. Ashwit, definitely the condition is very suitable for the bowlers like Ashwit.
You can witness in the previous matches in even previous 2-3 days of cricket where the bowlers are dominated, which using the condition is so important. 26 for the loss of 3 wicket. Ashwin will go into ball his first over. Right arm over the wicket delivers. The leg cutter which is coming around the legs of the batter. The Bashit instead of going for the slog sweep shot, he just wanted to turn that one onside region. Misses that one completely from the bat. Then wicket keeper did the rest. Ashwin again. Right arm over the wicket again. That ball is going to be a misdirected, which is going outside the line of leg stump. Half cutter is trying for, but ball he pitches that one on the middle stump. So half cutter, it's going to be a wide going outside the line of leg stump. This time swings it hard, and he got the distance. Magnificent stroke there from Bashit. Short pitch delivery all the time in the world for Bashit to pick that one. The previous one, the first ball, I told that when Bashit is tried to flick that one off his legs, but that was a hittable delivery. Then he is quickly realizing that yes, now it's a short pitch delivery. I want to go for the big shot, and he just dispatching that one down to deep backward square leg for in front of square. In fact, little correction, he played that one in front of square. There is a mid wicket, but ball is went in the gap, and the scoreboard is 33 now. This is a line what Ashwin need to bowl, isn't it? One of the difficult line for the right-hander batsman, but the fact that he is trying the ball to bring around the legs of the batter, the negative line, but the positive stroke came from the bat of Bashit. 34 for the loss of 3 wicket. This time, Imtiaz so nicely swept that one down to fine leg region for a single. With that single, scoreboard moves on to 35 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. This time, nicely bowled. That is the line you need to bowl to the caliber of Bashit. That ball slide a bit off in the middle of stump. The good line to bowl. Again, Ashwin balls. This is one more good line, but this time Bashit implemented a good strategy of getting us ball into bat by sweeping the ball down to the final leg region. One more productive over which is comes in handy of Torpedoes Khana, and after completion of 5 overs, Torpedoes Khana looking in absolutely fantastic position. 36 for the loss of 3 wicket, and a similar run rate they will going to get 72 plus runs, 75 if they can get the same run rate if they are able to continue. And wait and see how well KFC Kodikal will going to put some break on the run rate, and wait and see how Torpedoes Khana will going to continue. We're going to change the commentary box here. 5 overs gone, and I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 3 विकेट खोने के बावजूद टॉर्पेडोज खाना एक बेहतर स्थिति में नजर आता है। वह 36 रन जोड़ चुका है। रन रेट 7.20 रन पर ओवर। Still progressing here for them, and this is a good going on here. और छठे ओवर के पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार ड्राइव किया. Just waiting to the ball to come on to his bat at the last moment. Driven that one perfectly down to long off. Not more than a single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. It's 37 for the loss of 3 wicket at the start of the 6th over. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज के लिए स्वीप किया. इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 38 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ टॉर्पेडोज खाना, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद. गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग फॉर बासित, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में रक्षित यहाँ पर फेंक चुके हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद इस बार पैरों पर टकरा. प्लम एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट.
No doubt about that. Just wanted to swings it away on the onside after covering the stumps. The ball stuck to his front leg and his front leg straight in front of the stumps, middle stump, and perfect decision given by umpire Roland Pinto. तो चौथा विकेट गिर चुका, 38 for the loss of 4 wicket. Bassett departs, and now they are 38 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. तो छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर, नए बल्लेबाज अकरम इस बार प्लम इन फ्रंट, फर्स्ट बॉल डिसमिसल, golden duck dismissal for Akram. Perfect delivery from Rakshit. Pitched on the line, concentrated to middle stump, and Akram got absolutely plumb in front. First ball, golden duck dismissal for Akram. Fifth wicket gone. It's 38 for 5. तो यही एक सही वक्त है इस वक्त KFC कोडिकल को इस मैच में वापसी करने का. 2 गेंदों में 2 विकेट, बेशकीमती विकेट बासित और अकरम का वो प्राप्त कर चुके हैं, और इसी के साथ ये छठा 5वां विकेट गिर चुका है 38 रनों के योग पर. और यहाँ पर चंद कसे हुए ओवर्स फेंकते हैं, चंद विकेट उखाड़ते हैं, तो निस्संदेह यहाँ पर इस मैच में वापस आ सकते हैं KFC कोडिकल. और जहां तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना का, इम्तियाज एक छोर पर मौजूद, उनकी उपस्थिति इस वक्त टॉर्पेडोज के लिए बेहद जरूरी है अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है. तो शफीक का आगमन होता हुआ और इम्तियाज उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस सही तरीके से इस वक्त उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए इन हालातों में. और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त रक्षित तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ही इज ऑन हैट्रिक. रक्षित बेहतरीन ओवर अब तक उनका यह साबित हो चुका है. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन मिला. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची थी इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड 6 overs has been completed. 4 overs left in overall calculation in their innings. तो मैच नंबर 2 इस टॉप सीडेड टीम्स के पूल के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ KFC कोडिकल और टॉर्पेडोज काना के बीच. इस मैच के बाद एक और बेहतर मैच यहां पर खेला जाएगा KCCR कदरी और गोरी यंग बॉयज के बीच में. तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए. और गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, अश्वित यानी आशु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. शफीक का सामना करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज इस बार चिप किया ऑफ द टोज, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. इस बीच ये गेंद स्वीप किया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन का इजाफा. और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अश्वित दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद शफीक के लिए इस बार उछाला, मौका, इसमें बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय ताजुद्दीन. पीछे की ओर दौड़ते हुए इस वक्त गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल. मिड ऑफ फील्डर के मिड ऑफ 20 गज के दायरे के कुछ बाहर. छठा विकेट गिर चुका है 41 रन. एक वक्त
स्कोर था 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब स्कोर है 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी 5 रनों के अंतराल में 3 विकेट टॉर्पेडोज का यहाँ पर खो चुका है। और इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा पिछले 1 या 2 ओवर में बेहतर कमबैक कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज केएफसी कोडिकल के। और यहाँ पर अब इंतजार है नए बल्लेबाज का, रिलवान का आगमन यहाँ पर होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। तो रिलवान इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद है और गेंदबाज आशु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्टीयर करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट टर्न पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त आशु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी हकीम के हाथों से, और इस बीच दोबारा जब तक वो गेंद को फील्ड करे बाई का इशारा हो चुका है। बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर और 7 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 43 ऑन द बोर्ड, 6 विकेट लॉस्ट एंड स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 3 overs left in overall calculation in their innings. KCCR ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो 3 ओवर का खेल बाकी और 3 ओवर का खेल में देखना है कि बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार इम्तियाज के लिए ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 8th ओवर। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, बैक टू द इम्तियाज 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 इस बार पेविलियन वहां पर रिलवान लौट चुके हैं। इम्तियाज मौजूद है नॉन स्ट्राइकर एंड पर और यहां पर रिलवान का विकेट गिर जाना ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज खाना के लिए काफी हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। एक वक्त स्कोर था 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब स्कोर है 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8 रनों के अंतराल में 4 विकेटों को खो चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा KFC कोडिकल के गेंदबाज अंतिम 2 ओवर में एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुके हैं। 44 for 7 और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ सिनान इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए और इम्तियाज एक छोर पर मौजूद है। इम्तियाज जो कि एक साथी की तलाश में इस वक्त है, लेकिन सही साथ उन्हें दूसरे छोर से अब तक नहीं मिल पाया है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। वाइड इज लॉन्ग ऑन पर फील्डर को गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त जगह बनाते हुए गेंद को खेला इम्तियाज ने। इम्तियाज जानते हैं इस वक्त उनकी उपस्थिति उनकी टीम के लिए बेहद जरूरी है यहाँ पर और क्रीज पर इस वक्त जम चुके हैं और दूसरे छोर से एक साथी की तलाश में इस वक्त और अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइट हीव, नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहा इस वक्त सिनन ने, लेकिन खेल नहीं पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 8 ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद शायद बाकी है इस ओवर में। तो इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर बढ़ते हुए दक्षित गेंदबाज सिनान के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद
बेहतर लेग कटर गेंद ड्राइव करने के प्रयास में चूके बैक टू द बॉलर की दिशा में। 8 ओवर की समाप्ति, 8 overs completed, 46 on the board, 7 wicket lost, 2 overs remaining in overall calculation in their innings। और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनकी पारी में और कितने रन यहाँ पर बनते हैं। तो एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023-2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई नूतन फ्रेंड्स क्लब उर्वा मैंगलोर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है दिवंगत ऑस्टिन मोंटेरो इनकी मधुर याद में। और आज श्रृंखला का चौथा और अंतिम दिन का खेल आगे बढ़ता हुआ और मैच इस वक्त दूसरा मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर प्रगति पर KFC कोडिकल और टॉर्पेडोज काना के बीच एक बेहतर मैच। इस मैच के बाद एक और बेहतर मैच खेला जाएगा KCCR कदरी और गोरी यंग बॉयज के बीच है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। हकीम ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 9th ओवर इन फैक्ट। और हकीम इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और डी थर्ड मैन फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। कवर पॉइंट फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा गया है और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट। हकीम की गेंद, ये गेंद इनसाइड आउट क्रिकेट लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, एक्स्ट्रा कवर पर ताजुद्दीन के हाथों में गेंद पहुंची और इसी के साथ ही 8वां विकेट गिर चुका है। विकेट से हटते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा था लेकिन आखिरकार गेंद को खेला जरूर लेकिन जमीन पर गेंद को रखने में सफल और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर फील्डर ताजुद्दीन के हाथों में पहुंचे। 8वां विकेट गिर चुका है। सो फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ KFC कोडिकल इन द लास्ट 3 overs। At one stage, Torpedoes Khana were 36 for the loss of 3 wickets, and now they are 47 for the loss of 8 wickets. That means they lost their 5 wickets for adding just 11 runs on the board in the space of in between 36 to 47. और अब नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से शरण का आगमन होता हुआ और इस वक्त वो स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए हकीम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और हकीम अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, डाउन टू लॉन्ग ऑन, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक, नॉट सक्सीडेड। गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट फॉर अ रन। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 48 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड द 9th ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इम्तियाज के लिए। इस बार गेंद को ड्राइव किया, इस बार गेंद वहीं पर हालांकि चंद टिप्पा खाने के बाद फील्ड होती हुई फॉरवर्ड शॉट लेग पर ड्राइव करना चाहता ऑफ साइड पर लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं कर पाए और गेंद पर कोई रन यहाँ पर नहीं बना। तो हकीम फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अब तक हकीम का एक बेहतर ओवर यहाँ पर साबित हो चुका है। यह गेंद चिप गया, गेंद इस वक्त पहुंची मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, 49 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 9th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर। जब सतीश ने माइक मेरे हवाले किया था तो उसके बाद एक फैंटास्टिक कमबैक, बेहतरीन कमबैक करते हुए KFC कोडिकल के गेंदबाजों ने पासा जो कि इस वक्त पलट दिया है 4 ओवर में। बाद के 4 ओवर में 5 ओवर से 9 ओवर के दरमियान न सिर्फ 14 रन प्रदान करते हुए 5 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं और निस्संदेह एक बेहतरीन कमबैक यहाँ पर कर चुके गेंदबाजी के जरिए 5 और 9 ओवर के दरमियान। Absolutely fantastic comeback made by the bowlers of KFC Kodikal in between 5 to 9 overs. They conceded just 14 runs and captured 5 wickets of Torpedoes Khana. 13 runs in fact they conceded in the last 4 overs and captured 5 wickets. Last over starts in the innings from Austin Montaren. पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा और इस बीच अंपायर ने इशारा किया कि स्टिपुलेटेड टाइम निगदित समय समाप्त हो चुका है। तो फील्डर एक ज्यादा
20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त बुला लिया जाएगा। और जहां तक सवाल है इस वक्त ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल, जस्ट लुकिंग फॉर द सेकंड, लेकिन नहीं मिलेगा, जस्ट अ सिंगल. एंड विद दैट सिंगल द 50 कम्स अप फॉर टॉपर रुस्काना. 50 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स in 9.2 overs. 50 came for टॉपर रुस्काना. 4 गेंदें बाकी. गेंदबाज एरिस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मिड विकेट फीडर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है. डीप कवर पॉइंट को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है कवर पॉइंट पर. यह गेंद भीतरी किनारा, डाउन टू अ शॉर्ट फाइन लेग, नॉट मोर देन अ सिंगल. 51 for 8. 3 balls remaining. इम्तियाज बैक ऑन स्ट्राइक. और जहां तक इम्तियाज का सवाल है, एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए वो खेलते हुए 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए एक चौके की मदद से. Left it. This time he got the distance. Yes, it does. It's crossed over the fence for a huge one. It's a biggie. 6 runs into the account of Imtiaz. स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 57 रनों पर. 2 गेंदें बाकी. इम्तियाज जानते हैं इस वक्त ऐसे स्ट्रोक्स उन्हें खेलनी चाहिए इस अंतिम ओवर में, और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए डीप मिड विकेट पर एक फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है. और एरिस इस वक्त तैयार. अगेन दिस टाइम फ्लैटर वर्जन, वन मोर बाउंड्री, 6 and a 4. इम्तियाज ऑन फायर. 61 for 8 now. Imtiaz moving up to 27 now with that 4. 2 boundary and 1 6. Facing the last delivery of their innings. अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और देखना है कि अंतिम गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं. एरिस अंतिम गेंद, धीमी गेंद, उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट दे कंप्लीटेड वन. Come back for the second. In comes a throw, and he made it. Couple of runs. Imtiaz remained unbeaten on 29, including 2 boundary and 1 6. And the innings is for Torpedoskana. 63 runs they scored after the completion of 10 overs. Competitive total scored by Torpedoskana. And now the target for KFC Kodigal is 64. 6.40 runs per hour they have to score for victory in the stipulated 10 overs with the help of 10 wickets. And let's see can they read the target or not. 64 रनों का लक्ष्य. और the highlight of Torpedoes Khana's innings, a fantastic knock, a responsible knock came from Imtiaz, who scored unbeaten 29 runs, and because of his fantastic knock. And well support came from Basit, who scored 17 runs including 1 6. And with both of their fantastic batting, Torpedoes Khana set a competitive total of 63, and they set a competitive target of 64 for KFC Kodigal. और 64 रनों का लक्ष्य इस वक्त KFC Kodigal के सामने Torpedoes Khana ने रखा है. 64 the target for them in 10 overs. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them. और देखते हैं KFC Kodigal के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. फिलहाल उनकी पारी शुरू होगी चंद लम्बों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब KFC कोडिकल की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. धन्यवाद. थैंक यू.
I request all the players of Gori Young Boys as well as the KCCR Kadri to be reported here immediately to sign the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So thank you very much. Thank you very much. Welcome back. And umpire Arish Padil signaling towards our scorer Satya Swarup. And Sharon will go into start the proceeding. 64 to win the match for KFC Kodikal. Sharon to Harris. First ball, right over the wicket. Beautifully balled, right on the money, right on the target. But even though Sharan slight a bit of slipped out after he delivers the ball. Maybe he's hitting the finest surface of the crease, so that couldn't manage to get the grip. And but the line is so good and equally well played by Harris. He picked up a single. They got a promotion up in the order, Harris. Maybe he wanted to take the advantage of that power play, and wait and see how well he is going to play in that 3 overs of the power play for team KFC Kodikal. Tazuddin is a one more batter after of course the absence of Chetan as well as Shakir. These two batters definitely wanted to get some responsibility to take his team into the target, and here is Sharan bowling with a short run up away from us. Pass umpire Arish Padil, right arm over the wicket. Excellent delivery. They're going for the quick single, and Bashit is the fielder down at short mid off. And try to pick that one. Of course, he is able to pick the ball, but fails to stop the single from Tazuddin. Both the opening batters off the mark with a single. It's 2 without loss of any wicket. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. As nicely plays it down to square leg region. On sensible batting, definitely. It's a 60 ball, 64 runs. I don't think it's going to be a big ask. But the condition which is certainly is going to be a favorable for the bowlers. And that's why it's going to be a 64. Maybe it's one of the big total to chase down. And again, nicely driven down to extra coverage and for a single, and they completed. So both the batters are doing the right job here. It's not that in a power play you need to deal with the big shots like boundaries and sixes, but even it's a sensible batting will take you to the target. At the same time, when you are getting your runs in each and every ball, and you are getting your confidence, and you are almost looks like wanted to settle down in the middle. Once you settle down in the middle, then it's so easy for any batters to get any kind of target. This time Harris wanted to get the reverse sweep, but this time he's not really got that one from the middle of the bat. He wanted to play that one down to backward point, but ball went towards a short cover point. Sinan the fielder down at short cover point, and ample time for the batter to complete the single. 5 deliveries and 5 singles has been taken by the opening batters, and good start from the opening batters of KFC Kodikal. Sharan balls this time, nothing must do with the delivery. Chance of run out. Ashraf shying at the stump. But I think the absence of mind here from the wicketkeeper, isn't it? There's a golden opportunity to hit the stumps in the striker's end, because that stump is very close to the wicketkeeper if you compare to the stumps in the non-striker's end. But a slight bit of he is not watching the opportunity in the striker's end. Harris very lucky that wicketkeeper Ashraf is trying for the run out in the non-striker's end, misses that stump, and couple of runs, 7 without loss of any wicket. Sensible, absolutely sensible there from Harris, and he picked up a single. They got a 8, and a good start there from opening batters of KFC Kodikal, chasing 64 to win this match, and they got what they really wanted, 6.4 runs. This time they're going for the quick single. Imtiaz looking for the fantastic throw. Harris looks like he's in danger. Harris looks like he's in danger. That the level of confidence we can see that from the fielders.
surrounding and even seeing that Imtiaz's celebration, but we need to wait for the third umpire decision. But it's a naked eye. It looks like the batsman is a little bit danger. But we need to get the result from the third umpire. Vivek of challenge bowler, the third umpire, will going to give the decision of this run out. If it is a run out, I think it's a big wicket here for Torpedoes Ghana, because Harry slowly and steadily is trying to study his innings. Looks very confident in the middle. What happened in the previous delivery, that ball is a sharp incoming delivery. Harris doesn't know where the ball is. He's not really watching his partner. He's just seeing the fielder. That's the problem that Harris. Of course, there always is going to be a call from the non-strikers. The non-strikers call whenever the ball is going behind the batsman. The striker will not going to get any picture where the ball is. Then he need to see his partner. If a partner is very confident enough, he is coming to the strikers and danger end, he need to respond very quickly. But this time Harry is not watching his partner, but he is watching the fielder and just plays the pen. No, I am just wait for the umpire signal. The decision which is pending here, whether the batsman is safe or not. Not out with the signal came from umpire, third umpire. This is all happening in cricket. The batsman is a safe, the third umpire. Just a angle which is provided for that run out. And it might be maybe that the throw which is collected by the bowler, then while he is taking a bails off, it might be a slight bit of late, but the Alice survives. 9 without loss of any wicket. Mubir bowls outside run of off time, going to be a, oh my goodness, chance of run out. Oh, he missed it again. He hit it. This remind me that traditional game of our Karavali Lagori. This is the kind of we can see that one fielder trying to hit the stump, misses it, and Sinan collects it. He also wanted to try to hit the stumps. He missed it. Fantastic. And the bowler, the batsman Tazuddin is very lucky in that occasion. Very lucky in that. Twice is this time a loose stroke, chance of run out. Again, they missed it. Maybe the Torpedoes Ghana is not having a sharp shooters in their fielding department. Every time they're trying for hitting the stumps, they're missing the stump. This time Ashwin at cover point region, but distance is so long from cover point to hit the stump, need to be very accurate. But he missed it. Across the line, swings at one, but the ball went towards a square leg region for an easy single. With a singles cover, Namuzan to 12 on the board without loss of one wicket in the over number second is in progress. So good going for KFC Cortical without losing a wicket. They got us 12 runs. Mubin from the far end. Mubir, right arm over the wicket. This time is up and over and is dropped. Difficult chance here for the fielder, isn't it? Once it looks like the batsman hoisting it over, but the timing is not proper here from Tazuddin. The fielder at short extra cover, just moving to his back and try to take the catch. Ball just going away from the trying hands of Rilwan. And scoreboard is 14 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Rilwan, the fielder, one of the best catcher as far as the fielding department of Torpedoes Ghana is concerned. A slight bit of change in field now. Deep mid wicket fielder Bashit is coming to us inside the ring. In fact, in front of square, from the in front of square. The mid off is going back to deep extra cover. Delicate and intelligent there from Tazuddin. Just got that one into backward point region for a single. 15 on the board without loss of any wicket. A positive start from the opening batters of KFC Cortical. Mobile from the far end. Right arm over the wicket balls. Again nicely played. Harris playing a sensible knock along with Tazuddin.
16. They're going exactly 8 runs per hour. First over 8 runs, second over also 8 runs. Meanwhile, I request all the players of team KCCR Kadri registered. ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದರ ಒಳಗೆ 6 ಓವರ್ನ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. 8 ಓವರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 8 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The 16 on the board. The equal battle is on. Rilwan brought into attack, chasing 64. That 64 is managed only because of one of the very good innings played by Imtiaz. Unbeaten 29 runs. Fantastic innings he played for his team. Again, sensible, absolutely sensible. Harris is playing such a different innings, isn't it? He's not like that. The Harris, we are always watching that he is wanted to hit the ball, swings the ball, but this time he is playing as per the condition required. This is I want to see. Loves the cricketer. They need to change their technique. They need to change their mindset. They need to play as per the condition required. And so far, both the batters are dealing very well in the middle with the singles. 17 on the board. Rilwan balls this time. Tazuddin, first time you are watching. Oh! Unforced error here from the fielder. Tanveer once again charging to the ball, but he's removing his eyes on the ball. Slight a bit of change of direction in that ball, and the once it's an opportunity for the fielder batter to complete the single. 18 on the board, without loss of an wicket. Very good start from KFC Kodikal. This is Maris again. Going out, going for the run. Chance of run out. Again, there missed the opportunity. Again, that throw which is slight a bit of wide for the wicketkeeper Ashraf to collect the throw from Imtiaz. This is the first dotted delivery so far. This is the first dotted delivery so far by the KFC Kodikal openers. This over number 3 is in progress. So all we can see that the 14 deliveries they scored the runs, and this one delivery they missed it. Obviously that is a call, but umpire very much sure that ball is outside the line of off time, that the impact of the line. So that's why he's not interested. He picked up a single here for leg bite. 19 without loss of any wicket. Very good start given by the opening batters of KFC Kodikal, but job is not yet over. How much time they're going to spend in the middle? The opportunity of winning the match is definitely going to be very brighter for KFC Kodikal. One more single has been taken. This is not an easy condition, I want to say. Absolutely very hot. 12:30, which is the time. The sun, which is definitely in its full strength. And under this condition, running between the wicket, scoring the runs, always going to be a challenge for the field batter. This time, absolutely driven that one down to mid long off region for 4 runs. No, the fielder is there in the deep long off. In fact, slight bit of opportunity created for the catch there. That's why everybody is shouting to Mubir down at short mid off, because seeing that first time Harris lost his patience. He wanted to hit a big shot, but he got a single. Now, compared to the last 2 overs, this is a slight bit of better over. 5 came from that over, and after completion of over number 3, it's 21. They're going exactly 7 runs per over. That means the first 3 overs of the power play, KFC Kodikal, they're grabbing the opportunity to get it 21 runs. Just coming back to the equation, 21 which is deducted from 64. That means 43 more runs required for the victory in remaining 7 overs. In 42 balls, the 43 required. The match is evenly poised. The run required is not a big one here. Just over 6 runs per over. Now Mubir is about to attack from the far end.
So Mubir to come from the far and Austin Montero end, and it is also family end. Right arm over the wicket, swept that one. Imtiaz the fielder then the short fine leg region. Harris still slightly a bit disappointed. He knows that if he were able to get that one a little bit away from Imtiaz, he can get at least a couple or 3 runs. But Imtiaz is so good in that area, down at short fine leg, very fine. And Harris got a single. 22 without loss of any wicket. Mubir, right arm over the wicket, bowls again, swept that one very nicely down to square leg region for a single. So with that single score, numbers on to 23 without loss of any wicket in the over number 4 is in progress. Mubir to continue. 2 singles in 2 deliveries. Oh my goodness, one more opportunity. Now here I think Ashraf missed that golden opportunity. Now asking for the third umpire. Whether maybe Ashraf has got automatical stump or Harris safe or not. Just wait for the third umpire decision. What really happened? Of course, Harris is out of the strike. He wanted to go, wanted to use his feet coming down the track. Wanted to get that one down to fine leg, but by doing that, he misses the line completely. But Ashraf fails to collect the ball. But wait and see whether the ball which is fell into the stumps or the hand which is involved. That's what I want to see. The batsman is out. The out is a call from third umpire. That is automatically done. So at last a breakthrough here for Torpedoes-Khana, and 23 runs of partnership between Tazuddin as well as Harris, which is comes to an end. And it's they laid the foundation, and it's not like that they laid the foundation, and it's really good to see the team has got a start here. KFC Kodikkal, even though they are not playing with their full strength, but they are not really given up this match. This is really excellent body languages, positive things which is going in KFC Kodikkal, but providing opportunity here for the opposition team, Torpedoes-Khana. The wicket of Harris is definitely going to be the big breakthrough. So new batsman in is Afreed, is a new batter for KFC Kodikkal. Mubir to continue from the far end. Austin Montero end. Right arm over the wicket to Afreed. This time top edge, catches is a call. Catch it is a call as well as a run out opportunity. Just wait for no signal. That definitely is a top edge. One more single is been added to total. 24 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Mubir to ball from the far and right arm over the wicket to Tazuddin. The facing next delivery from Mubir. Delicate. This time again the opportunity is created for the run out. Sinan has got the ball directly to his hand, but fumble providing Afreed to complete the single. And the fielding which is not really up to the mark here from Torpedoes-Khana. So 25 for the loss of 1 wicket. Mubir again bowling from the far end. Very useful bowler for Torpedoes-Khana so far, did a great job. Again edging it down, does a reaching for the delivery. Tazuddin running hard between the wicket. He's running hard between the wicket. It's not an easy condition, but Tazuddin so far did a great job. All the runs we can see that came in the singles and couple. One more over completed. Mubir completes his over. Over number 4 completed. After completion of 4 over. And KFC Kodikkal chasing 64 to win this match. Still they are looking good. 26. They are going
as for the run rate required, 6.50 runs per over. The run rate is progressing here. Now 38 more runs required for the victory. 38 required from 36 deliveries. Ashwin brought into attack. Trump card bowler for the side. And Afrid straight away slide a bit of shuffled across the line of delivery. Good technique when you're playing against Ashwin. Maybe the batsman doesn't want to settle the bowler for the good deliveries. So shuffled across and flicks that one off his legs down to fine leg region for a single. 27 for the loss of 1 wicket in the over number 5 is in progress. Ashwin bowls. Beautifully bowled. Now I think it's going to be a testing time for the batters. Tazuddin wanted to get that reverse sweep but missed the line completely. The hero of the previous tournament, Ashwin, one who changed the complexion of the game in the final. This time he's lost his patience. Tazuddin, without coming to the line of the delivery, he wanted to play that one against the line, against the turn. And luckily didn't got outside the edge of the bat. 2 dotted deliveries put some pressure onto the batter. Third time in this over, fourth time in this over. Bowles, lovely slip shot, but only single this time he'll going to get. And with that single, score numbers on to 28. And Ashwin doing a right job. 4 deliveries, and they conceded just 2 runs. And he is now in operation. 5th time in this over. Right arm over wicket, beautiful in cutter. In cutter in the sense he bowled a leg cutter, but he's coming inside into the batter, left-hand batters. And batsman completely missed out. This is the third dotted delivery of this over by Ashwin. So here again Ashwin, last time in this over, bowls. This time the batsman Afrid will going to get a single here. Just 3 from that over. Good over there from Ashwin. First economical over, we can see that. And we can see that in the bowling department of Tarpados Khana. So after completion of over number 5, chasing 64 to win this match is 29 for the loss of 1 wicket. That means in the remaining 5 overs, 30 balls, they have to get another 35 runs to win this match, and just under 7 runs per over, and they require 100. In fact, it's exactly 7 runs per over they wanted to get. And before the next over going to start, the time to change in commentary box, I would like to invite Mr. Gopi to take out the microphone. Gopi, once it looks like the 64 is a difficult target, Cape Secodigal starts well, but Ashwin came in and started to change the complexion of the game, because the last over, much better over, 3 runs came from that over, and because of that, run rate asking is slight a bit of climbing up. Now it's a 7 runs per over, but got a 9 wickets in hand, Gopi. In this situation, I want to say match is evenly poised. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त पिछले ओवर में अश्विन का आगमन हुआ और उसके बाद एक किफायती गेंदबाजी उन्होंने की और यहाँ पर मैच इट्स गोइंग टू बी इक्वली बैलेंस्ड। और देखते हैं क्या होता है। छठे ओवर की पहली गेंद स्वीप के इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और जब तक जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज ताजुद्दीन और अफरीद पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एरिस 10 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, और गेंदबाज इस वक्त शफीक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और शफीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के इस बार गेंद को बिना देखे दौड़े, लेकिन 1 रन इस बीच प्राप्त करने में सफल। हालांकि गेंद कहां पर गई है ठीक तरह से बल्लेबाज ने देखा नहीं था। गेंद पर बल्ला उड़ाया, जैसे ही गेंद उनके शरीर पर टकराई दौड़ना शुरू किया। आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पीछे एक बार शफीक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक शोएब इम्तियाज शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। बराबर का संघर्ष है यहाँ पर जारी, और अभी भी मैच में कहना मुश्किल है कि कौन इस मैच में विजयी होगा। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का यूट्यूब पर।
और देश विदेशों में हजारों दर्शक इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए यूट्यूब पर, जो कि बेद्रा मीडिया इस वक्त बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो शफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर 4 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। 4 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर। और इस बीच कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज इस बीच तैयार तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर रन पर, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। जोखिम भरा रन, लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो, और इस वजह से बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ प्राप्त कर चुके हैं। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। एक गेंद अभी भी बाकी, 5 सिंगल से पहले 5 गेंदों में यहां पर बन चुके हैं। ताजुद्दीन सामना करने के लिए तैयार। इस बीच शफीक इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस ऑन इट्स फॉलो थ्रू बाय द बॉलर। और जब तक इनको बैकअप किया जाता, लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा। ही जस्ट गॉन फॉर अ माइटी विद द लास्ट मोमेंट, नॉट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 6 overs completed, 35 on the board, 29 required in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 7.25 runs per over। और निश्चित रूप से यहाँ पर मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी अ 50-50 एट दिस सिचुएशन। अश्विन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए वृंदावन कंस्ट्रक्शन एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और ताजुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट करते हुए। और जहां तक अश्विन का सवाल है, अपना पहला ओवर काफी बेहतर उन्होंने फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन बाय ताजुद्दीन, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इम्प्रोवाइजेशन बॉल आउट, ताजुद्दीन की पारी समाप्त। और इसी के साथ अश्विन यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो यहां पर बेहद जरूरी विकेट प्राप्त कर चुका है टॉर्पेडोज का ना। रिवर्स शॉट खेलना चाहता ताजुद्दीन ने, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर खेल गए, और बेहतरीन लेग कटर गेंद के जरिए विकेट प्राप्त करने में सफल अश्विन। अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन होता हुआ, 22 गेंदे 29 रन चाहिए, 29 टू गेट फ्रॉम 22 डिलीवरीज। एक और अनुभवी बल्लेबाज हकीम का आगमन यहां पर होता हुआ, और वो इस वक्त साथ निभाने के लिए तैयार। अफरीद का 8 विकेट इस वक्त सुरक्षित। और इस बीच हकीम स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए। अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज, और एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद हकीम के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। जिस तरीके से यहां पर गिल्लियां बिल्स उड़कर गिरे, देखने वाली बात थी। तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिया। 3 बेहतर गेंदे अश्विन इस ओवर में फेंक चुके हैं। अब 29 रन बनाने हैं, 21 गेंदे बाकी, 29 runs to get in remaining 21 balls. So one more fantastic match is now progressing here in this prestigious cricket tournament, Nutan Champions Trophy 2023. इस बार अश्विन ये गेंद फुल टॉस स्वीप किया, इम्प्रोवाइजेशन, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, इम्तियाज का थ्रो, और यहां पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 2 रन यहां पर मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से गेंद को स्वीप किया था इस वक्त फाइन लेग पर, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर। 27 रन और चाहिए विजय के लिए, और 20 गेंदें बाकी, 20 balls remaining, 27 more runs. Now they have to score for victory. और अंपायर विकेट को यहां पर सही करते हुए, और गेंदबाज
अश्विन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 26 नीडेड, 19 बॉल्स रिमाइनिंग और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आफरीद ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर और बेहतरीन ओवर यहां पर अश्विन का समाप्त हो चुका है। इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन उन्होंने प्रदान किए। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 7 overs completed, 25 runs to get from remaining 3 overs. That means in 18 deliveries with a required run rate of exactly 8.33 runs per over. I request the captains of KCCR Kadri and Goryang Bus please to be reported here for the toss procedure. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಕೀ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡಿಬಹುದು. ಆಭರಣ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಕೀ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಬೀಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬೀಗದ ಕೈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೀಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ ಆ ಬೀಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ. इस बीच पहले गेंद ड्राइव कर दिया, 1 रन मिला इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है, 17 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए। हकीम बैक ऑन स्ट्राइक, गेंदबाज रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट हकीम के लिए ये गेंद चिप गया, एनफील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा यह विकेट गिर चुका है। सीधा थ्रो पहुंचा था गेंदबाज के हाथों में और हैरिस अपने क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए और इसी के साथ हैरिस का विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। तीसरा विकेट गिर चुका है केएफसी कोडिकल के लिए। अफरीद माफ कीजिए, आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और अफरीद का विकेट का पतन यहां पर निस्संदेह कुछ समस्याओं को पैदा कर सकता है केएफसी कोडिकल के लिए। 24 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 16। 24 runs to get in remaining 16 balls. हालांकि तख्ता कुछ हद तक टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है यहां पर केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ मुबारिश इस वक्त क्रीज पर अपना कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। हकीम 24 runs to get from 16 deliveries और गेंदबाज 23 in fact 23 more runs now they have to score for victory in remaining 16 balls. 23 required in 16 balls और गेंदबाज रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चुके लेकिन रन नहीं मिलेगा। मुबारिश के लिए खतरा, यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो यहां पर अंपायर इस वक्त बढ़ते हुए खिलाड़ियों की और यहां पर मुबारिश पेविलियन वापस लौटते हुए अंपायर रोलैंड पिंटो कुछ बातचीत करते हैं इस वक्त खिलाड़ियों से और मुबारिश का विकेट यहां पर गिर चुका है। एक और करारा झटका केएफसी कोडिकल को लग चुका है। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 23 रिक्वायर्ड इन 15 balls now. The equation seems to be a stiffer now for KFC Kodigkal. They badly require at least 1, 4 or 6 at this stage to get back into this match. Without facing any delivery, Mubarish is backing to pavilion. नाजीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ हकीम क्रीज पर मौजूद और जहाँ तक केएफसी कोडिकल के विजय तक पहुँचने का सवाल है इस वक्त हकीम की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिलवान
हकीम सामना करने के लिए तैयार। 8वां ओवर उनके पारी का प्रगति पर, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद स्वीप करना चाहा, डॉट गेंद, वन मोर डॉट डिलीवरी। 4 गेंदे यहां पर फेंके जा चुके हैं, 2 गेंदे बाकी, अब 14 गेंदे बाकी और 23 रन चाहिए। 23 runs to get from 14 balls. What a match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. गेंदबाज रिलवान अगली गेंद के लिए तैयार। हकीम सामना करते हुए इस बार just gone for a mighty swing, not succeeded, gone through for a single and get it comfortably at last. 42, 22 to get, 13 balls left. और एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ रिलवान का। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज नाजीम के लिए, और तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट he's got a single for that stroke. Scoreboard moving up to 43 now. 21 required of last 2 overs. 12 balls and 21 runs. तो इस वक्त देखना यह है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त किसको सौंपते हैं। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए टॉर्पेडोज खाना के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। अगला मैच एक और बेहतर मैच, केसीसीआर कदरी विल टेक्स ओवर गोरी यंग बॉयज इन द नेक्स्ट मैच। वन मोर बिग मैच इज नॉट कमिंग अप राइट आफ्टर दिस मैच। तो काफी लंबी बातचीत के बाद 8 ओवर समाप्ति हो चुके हैं। तो 21 रिक्वायर्ड ऑफ 12 बॉल्स। शफीक गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए नाजिम के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। क्रीज के कोने से ही गेंद हल्के से गेंद को स्वीप किया, इंप्रोवाइजेशन, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 20 required, 11 balls left. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। और गेंदबाज शफीक एक बार फिर से तैयार, इस वक्त हकीम सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस वक्त इस बार जस्ट कॉल फॉर अ माइटी मिसेस, डॉट बॉल। 10 balls, 20 required. Badly required boundary or 6 at this stage to get back into this match for KFC Kodikal. The equation seems to be a much stiffer for them. छक्के और चौके की सख्त जरूरत। शफीक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हकीम के लिए यह गेंद इस बार lofted and I think it taken inside the fence. Not quite get that one from the middle of the bat. Got his stoppage. Long off fielder, no mistake. और हकीम का विकेट पतन हो चुका है। इस विकेट के पतन के साथ एक राहत भरी सांस लेते हुए इस वक्त टॉर्पेडोज सकाना के खिलाड़ी। अब लक्ष्य और कठिन होता हुआ, 20 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी, 9 balls remaining, 20 runs required, 19 for tie, 20 for win, just 9 balls left in their innings. तख्ता इस वक्त टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ, अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापस ला सकती है, लेकिन मौका जरूर है यहां पर कमबैक करने का केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को। दक्षित द नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, और शफीक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दक्षित के लिए।
चौके और छक्कों की सख्त जरूरत केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापसी करने के लिए। शफीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, निशाना यहां पर चूक चुका है और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। ओवर थ्रो के रूप में आसान सा मौका था रन आउट का, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो उनका निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है। द स्टिपुलेटेड टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। दे हैव टू ब्रॉट वन फील्डर इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल। अब केवल 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। 18 रन चाहिए, 8 गेंदें बाकी। 18 रिक्वायर्ड इन 8 बॉल्स। दक्षित तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार लॉफ्ट साइड, दिस टाइम आई डोंट थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस एंड टेकन कंफर्टेबली जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय अकरम। One more wicket fallen. The problems are now more building up for KFC Kodikal. 46 for 6, 18 required, 7 balls left. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त टॉर्पेडोज का ना लुकिंग राइट ऑन टॉप। Iqbal, the number 8 batsman is now comes out to the middle for KFC Kodikal और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शफीक की गेंदों का। अब तक इस ओवर में शफीक एक बेहतर गेंदबाजी कर चुके हैं। 7 गेंदों में 18 रन चाहिए विजय के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए टॉर्पेडोज काला के कप्तान इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर शफीक इकबाल के लिए। Driven down to mid on, gone through for a single, slight bit of fumble, has got the single and keeps the strike. 47 for 6, 17 required of last over now. 17 रनों की जरूरत अंतिम ओवर में। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही अब इस अंतिम ओवर में केएफसी कोडिकल को मैच में विजय दिला सकते हैं। ऑस्टिन मोंटेरो एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। शरण और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इकबाल। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ केएफसी कोडिकल की पारी में 17 रनों की दरकार इस बचे हुए अंतिम ओवर में। 17 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। फर्स्ट बॉल शरण, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। तैयार इकबाल के लिए। हियर ही बॉल्स, रिवर्स शॉट डाउन टू थर्ड एंड डाउन टू अश्विन, लेकिन एक रन बल्लेबाज को मिला। 48 for 6, 16 required, 5 balls remaining. और केएफसी कोडिकल इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। शरण रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, बाई का इशारा। 49 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 15 रिक्वायर्ड, 4 बॉल्स रिमाइनिंग। शरण इकबाल के लिए अगली गेंद। गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड, गॉड इज इनसाइड एज, सिंगल रन एडेड। 50 comes up for KFC कोडिकल, 50 for the loss of 6 wicket. 14 required, the last chance in front of the batsmen of Kodikal. 14 required of 3 balls. शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 3 गेंदें 14 रन चाहिए। इस बार गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर, 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 51 अंतिम ओवर में
जो इम्तियाज ने छक्का और चौका लगाया था, कुल मिलाकर 13 से 14 रन उन्होंने बटोरे थे, वो ओवर इस वक्त महंगा साबित होता हुआ केएफसी कोडिकल के लिए, और वही रन से इस वक्त केएफसी कोडिकल बिछड़े हुए। इस बार चूंकि जस्ट सिंगल 52, लास्ट बॉल रिमाइनिंग, 12 रन रिक्वायर्ड, 11 फॉर टाई, 12 फॉर विन। अगर गेंदबाज इस अंतिम गेंद पर कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर टॉर्पेडोज काला की विजय निश्चित है। Lost it, and this time over defense for about it, but that is not enough for them. They lost the match by 7 runs. So 7 runs victory, 7 runs thrilling victory for Torpedoes Kana against KFC Kodikal. And now they lost the match by 7 runs. So 7 runs thrilling victory for Torpedoes Kana against KFC Kodikal, and with that victory they are through to the next round of this competition. One more good match is now ended, and now the next match, one more good match is now coming up. KCCR Kadri will take over Gori Young Boys, and that match starts within just a short while. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब केसीसीआर कदरी और गोरी यंग बॉयज के बीच मैच यहां पर शुरू होगा। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And one more good match which is comes to an end. It's a close finish, and just like my friend Gopi is mentioning about that the last over score, which is suddenly it's become costly for team KFC Kodikal, because in the last over Imtiaz scored 1 boundary and a 6, and because of that they won the match, and slight a bit of but very good attempt there from KFC Kodikal, even though they has got a limited the players there didn't got regular playing 11, but they played a good game of cricket, especially when opening batters they starts well, but in the middle their wickets are tumbled, so that they couldn't manage to win the match. Congratulations Torpedoes Kana, they're through to the next round. Now is a one more good match, two very good teams. KCCR Kadri registered versus Gori Young Boys will go into play in their first round, and wait and see which team will go into win the match. And very bright sunny afternoon, and it's not an easy condition, and a 10 overs game is always going to be a big ask. Now Gori Young Boys, of course after the Gori Young Boys legends through to the finals, so that might be a slight bit of inspiration for the young Gori Young Boys, youngsters of Gori Young Boys. If a senior can do the job, why not for us? And for that I think they need to play a good game of cricket, especially against KCCR Kadri registered, and of course after that getting some prayer and game plan, they will going to enter the ground, and after that winning the toss selected to field first. So before we are going to this match, once again I would like to mention about this prestigious Nutan Champions Trophy 2023, the second year cricket tournament in name of Cricket Festival, and in the sweet memory of
Austin Montero, this cricket tournament is organized. A successful day number 3 which is completed, and we are into the last and final day of this cricket tournament. And the speciality of this final day is that all winning captain will be given a gift hamper, and from just casuals, and the 3 gift vouchers which is given for all the winning captains of this prestigious cricket tournament, and all finalist captains will be given with a silver coin. That means 3 teams which is qualify for the finals, and 6 captains will going to get silver coins on behalf of Nutan, the friends Urwa, and all the trophy which is sponsored by Rohan Montero in the remembrance of his dad Austin Montero. And thank you very much, Rohan Montero, for your contribution for the sweet memory of your father Austin Montero. And yesterday, today morning, they celebrated, of course, with remembered him for his birthday. The man of the series of the Masters Trophy and cash, which is sponsored by Prashant of Young Friends Urwa. So thank you very much, Prashant, for your contribution for the success of this cricket tournament. And in the final, the prize distribution ceremony, we have chief guest Mr. Prashant, and proprietor of Netherland Properties and Developers will be the chief guest. Rajesh of Koragajja Daivasthana Urwa will be the chief guest, and Prakash Pinto, the proprietor of Paragon Builders Mangalore, will be the chief guest for this prize distribution of prestigious Nutan Champions Trophy 2023. So these are all the speciality of this final day of this cricket tournament, Nutan Champions Trophy 2023. So opening batters came into middle for team KCCR Kadri. Looks like a slight bit of change in the opening pair here, along with Manjunath. Pramod is the one is came to bat, and maybe that they're thinking about that 10 hours game. So for that 10 hours game, I think the good start which is required, steady start which is required, so that they have changed their game plan, because losing the batsman like Ravi Sali and Padayur early, it's going to be a big loss, because the 10 out of format of games, the big game, and number of overs and number of deliveries which is considered comes into play, so that they need to keep their man Ravi in the down in the order. So now Fall brought into attack to bowl the first over for Gori Young Boys, and away from us. Right arm over the wicket to Pramod. Pramod delicately played it down and into the right of that short term midfielder. Improvisation is trying for. The first ball itself is went for the reverse flip, and got the single for that. With a single, KCCR Kadri off the mark, one without loss of any wicket. Karna, captain of the side, is having some word with the Naufal. Maybe they're talking about the field set, different field set which is required for different character of the batters. And Manjunath is very destructive, and he will going to face again. It's a big wide, far outside the line of off time, so that wide call by umpire. The extra comes off. It's a 2 without loss of any wicket. Gori Young Boys Masters, they qualify for the finals yesterday, after defeating Young Friends Urwa in the semi-final. Very good match. Young Friends Urwa, even they got a very good total, the 58, but fails to depend against God. This time he lofted, handsome looking drive. That will going to be maximum. Ball which is landed into the commentary box. The Manjunath is a kind of batsman. He is not really bothered about the kind of ball which is used for this particular tournament, whether a soft or hard, but he is a very hard hitter of the ball, so he can get the 6 quite easily. Magnificent struck. Timing is so good in irrigation there for Manjunath. This time, definite chance here for the fielder. Deepak down at deep long on will go to take this catch comfortably. This is all happening in cricket, isn't it?
The Manjunath, after he got a 6, he couldn't manage to control his emotion. This is a big problem for the cricketers. After getting a 6, you need to have a little slight bit of need to control your emotions, because it's a long format of games, a 10 hours format of games. You got a very good start. Getting a 6, you are more confident, but more confident is not in the sense that you need to go for another big shot. And he did a wrong thing here is that after hitting a 6, they need to see that the bowler like Naufal definitely is the kind of bowler who never gave up. They definitely wanted to bounce back, and he will go into ball one good delivery for the next ball. That's what the batsmen have to keep in the mind. The very next ball, the bowler Naufal bowled a slight bit of wrong line, negative line, and a slower one around the legs of Manjunath, and Manjunath went for the big shot and didn't got enough timing in that stroke, and he's back into pavilion. 8 for the loss of 1 wicket. Shailesh is the new batsman in, just walking towards the middle. 8 for the loss of 1 wicket. The first over is in progress. They got a run, KCCR Kadri, but the 10 hours format of a game is a totally different ball game. Oh, what a delivery! What a fantastic delivery! True to the defense of Shailesh. Very lazy to react to that one. Just like I mentioned, this is not a easy cricket for any batters. Yeah, have a look at the dismissal of Shailesh. Of course, he wanted to come to the line of the ball, but he's too early into that one, isn't it? Ball which came very late to him. Lazy movement of the feet, and pays the penalty for that. The wicket number 2 is back into pavilion. Naufal picked up a 2 in 2. That means he is on hat-trick. KCCR Kadri have lost their second wicket for 8 runs. Fantastic comeback here by Naufal. After that, a punishment. It's not easy for any bowler to handle the pressure. Now, captain walking towards the middle. Dilip as a number of 4 batters, being the captain of the side of KCCR Kadri. Wait and see how Dilip will go into play his captain's knock. It's not an easy condition when you are lost 2 wickets for 2 consecutive deliveries. The bowler always looking for the hat-trick delivery. Can he able to pick the hat-trick? So far there is no hat-trick, I think so, in this tournament. So Naufal has got a golden opportunity. 5 to 6 times some bowlers picked up a wicket, 2 wickets for 2 consecutive deliveries. Oh, that was a fantastic outgoing delivery. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Because always the batsman came into the middle with the under pressure, so that when you are bowling that away going delivery, moving away from the good land spot, always the opportunity to get the wicket. This time straight to the field, a chance of run out. Oh my goodness, fielder at square leg. Instead of giving the ball in the pull, he wanted to give that one after one bounce. It's always going to be a difficult opportunity for the wicket keeper to collect the throw. Almost looks to be one more wicket here for Gori Young Boys, but they lost the opportunity here. It's 9 for the loss of 2 wicket. Gori Young Boys in the first little correction. KCCR Kadri against Gori Young Boys. 9 for the loss of 2 wicket. The 2 very good matches which has come to an end today. The first one is absolutely fantastic match. The NM cricketers Mangalore, they really faced so many hurdles to get that 50 plus runs, 49 runs to win the match against Mangalore cricketers. Mangalore cricketers really fought hard for that match, but slight bit of they are not good in the fielding department, missing some opportunity. Then Torpedoes won the match. There's some drive on that one, nicely down to deep, extra coverage and long chase here for the field. Oh my goodness, opportunity of run out, and here we go, one more wicket is back into pavilion. Absolutely total mix up between these 2 batters. Disaster for Prasad. The promote little bit correction, definitely there are probably the couple of runs I want to say, because that ball is played in a gap. That ball absolutely played in a gap,
but the fielder did a great job from the deep extra cover. Almost is covering the ground from extra cover to deep cover point region. The fields the ball, returns the ball, but with that throw which is came into the wrong end, I want to say that there is ample time for the promote to go back, but it's too late. It's too late. Now it's a 10 for the loss of 3 wicket. Now new batsman in is that the Ravi Salian Padayuru. Even is little bit surgery in the batting order, but not a big difference. He came too early. It's only second over is in progress. Again driven that one down to deep long on region for a single. That remembers me the story of 1984 tour of West Indies to India, when Indians are struggling to face Malcolm Marshall. Then Sunil Gavaskar been is kept as a number 2 batters, but India lost 2 wickets in 2 deliveries. Then Gavaskar is walking towards the middle. Then Vivian Richards has has got some funny exchange of words told to Sunil Gavaskar, even though you are coming in a number 3 as a batter, but number 4 as a batter, but still you have to play Malcolm Marshall in the first over. So here is one more very good delivery bowled, and bowled by the bowler Ashik. He plays it down to short extra cover region. So 11 for the loss of 3 wicket. Ravi is on strike. Bowler Ashik bowls again. Salian is in a defensive frame of mind. You know exactly this is not a time for him to throw his bat, but he need to play sensibly for his team. Nothing much wrong about the run rate what they got, but they lost 3 wickets, so they need to keep the wickets in hand. But I think Gori Young Boys did a great job putting some pressure by picking up some wickets of KCCR Kadri. This time chipped that one, ball is in there, oh, drop the catch. Deepak really missed the golden wicket. So 12 for the loss of 4 wicket you had to see in the scoreboard, but now it's 3 wickets because the fielder in the deep long on region is drop the catch. I think Deepak is there in the deep long on. He's charging to the catch. Slightly bit difficult one, but he's just got underneath that ball, isn't it? He's got a very good position to take the catch ball, but slightly slipping out of his hand, and Salian has got a life. 12 for the loss of 3 wicket. Looking for the improvisation, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump and stops the ball. Good over there from Ashik. I think in this over he conceded 3 runs and responsible for 1 run out in that particular over. So after completion of over number 2, KCCR they searching for the right track. Nothing much wrong with the run rate. They got 6 runs per over, but wrong here is that they lost the 3 wickets. When you're coming to the 10 overs of format of a games compared to the 6 overs or 5 over of format of games, the fall of wickets is always going to be a key. The 3 wickets in the 2 overs in the 10 overs format of the games, I think the fielding team definitely they're in upper hand. Because all I can see that the mindset of the batsmen will going to change here when you are coming to the 10 overs format of the games. You need to convert that aggressive frame of mind into slight a bit of defensive frame of mind. Just they're thinking about, of course, we are only 2 overs completed. They need to play another 8 overs. The 48 deliveries remaining. So need to bat till the end. So by doing that, something is favorable for the fielding team, and the bowlers definitely wanted to capitalize that mindset of the batter. So now fall bowling from the commentary box end. Right arm over the wicket to Ravi. Ravi this time going for the drive. If it is a 4 or 5 hours game, the batter will going to nicely connect the ball. But whenever coming to this format of games, the batsman slide a bit off in a 2 minds, but they go for the expansive drive or defensive drive. This time far outside the run of stump, and maybe the Naufal is trying for the experiment. That experiment which is too much, as he bowled the big wide, which is missing the direction. The leg cutter is going further away outside the run of off stump, and wide call by umpire. 13 for the loss of 3 wicket. Dries that one. Lack of placement. Karna, the fielder, down at short mid off, fields the ball. He's standing in the edge of the circle, and there is no possibility of any run. Score remains on 13 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. 3 is in progress. A little correction. Again, this is what I'm talking about. It's not as easy condition.
when your 3 wickets are gone, even the batsman like Ravi Salian Paderu also slide a bit of feeling the pressure. Now for balls. Flighted one, opportunity. This time, this time again. I think Abhilash the fielder there in the backward point region. Once again, Ravi Salian has got a life. Second life. Sometimes it seems to be a difficult opportunity when you're going back and takes the catch. But I think you need to take the catch. You cannot give the life to the batsman. 2 lives for the batsman like Ravi Salian. I think you need to pay the penalty for that. 15 for the loss of 3 wickets. No foul. Balls Ravi. Ravi once again. After that he is trying for the big shot. Quickly realizing that of course there need to be a patience. The patience which is key to everything. One can't see the face in a boiling water rather than the warm water. They need to be cool and calm here. 15 for the loss of 3 wickets. Now for balls. Slashes. This time again the ball is in there for a while. But this time Abhilash so quick to get that ball. They're just running back. One more single. With that single, Skobana moves on to 16 for the loss of 3 wickets. 3 gone. It's 16 for the loss of 3 wickets. KCCR Kadri. It's 16 for the loss of 3 wickets, 3 overs gone. The Ravi is there in the middle. You know exactly, maybe some message which is coming from dugout of KCCR Kadri for Ravi Salian that you need to be cool and calm, because it's very difficult to say how many runs which is going to be enough in this format of games. It's a 10 overs format of games, 60 plus, definitely with a good total to depend if you have a good bowler and good fielding department. The bowler is introduced from the far end. Arif. It looks like it's a new face in Gori Young Boys. Arif, not watching him regularly, representing for Gori Young Boys. And he bowling first ball. This time a slight a bit of that ball is going towards the direction of outside the line of leg stump. And Ravi just wanted to read that the ball which is used, the condition which is in this particular tournament, which is not an easy condition for the stroke maker. It's 16 for the loss of 3 wickets. This time tip that one just over the infield, and Riaz down at short mid wicket region. Maybe that ball is too high. It is a slight a bit of too high for that to take the catch. Again the ball is which is played in the air by Ravi. Ravi is not looking that much of a comfortable, and maybe that's what I'm talking about. The ball which is when the ball which is not coming to the batter, then the stroke maker always struggling. This is a nicely driven down to deep long off region by Dilip. Dilip now is settled for the condition. He now knows that the ball which is not coming to the bat, and you need to wait for the ball to coming to the bat, and then only you can be the successful. And he's now hitting the ball very nicely. It's 18 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Arif bowls. Loose delivery outside the line of leg stump, but still Ravi, one of the very good striker of the ball in the onside region. He wanted it was a wide ball, but he wanted to try to hit the ball. Missed it completely. Umpire not missing here to signal the wide. And scoreboard is 19 for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. Nicely turns that one down to square leg region. They're running hard, but they will going to get only single for that. So far it's a very tidy bowling performance is continues here from Gori Young Boys. It's a 20 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. Arif again. The lips have done very nicely. Karna will going to get there. The ball which is not travelling quickly because of that the weight what having is not having that much of weight in the ball. And 21 for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. This time driven that one down to short cow point region for a easy single. With that single score moves on to 22. One more over completed. After completion of over number 4, it's
22 for the loss of 4 wicket. So 4 overs completed. It's a 22 for the loss of 3 wicket, and in another 6 over remaining. And I think it's a good recovery there from KC Sarkar, especially Ravi as well as Dilip, and they try to get some partnership going. We're not having the same Ravi, Sali and Padayur. Usually is a very aggressive, but and in this condition, you know exactly it's not aggressiveness is required, but is needed some the patience innings for his team, because they can get some acceleration if you're able to keep the wickets in hand. They can get some acceleration in the slog overs when 2 to 3 overs remaining, just like what Imtiaz did for Tarpados Khana. One of the best innings, I want to say. He's played a very good innings, because unless his innings, I think it's very difficult for Tarpados Khana to win the match, because way that is played his innings has been outstanding. He's very cool and calm till 9 overs, and the last over he got a very important runs, and in that runs they are able to win the match. Hit 1 boundary and a 6 in the last over, and that become quite handy for the Tarpados Khana to win the match. So 22 for the loss of 3 wickets. The 6 overs remaining. The bowler is introduced from the commentary box, and Manish. Oh, what a delivery! Magnificently bowled. But I think ball kisses the stumps, but bails are not off. That same thing has happened to me, Gopi, yesterday. Same that happens to me when I hit the stumps, but the bails which is not off. It's absolutely disaster for the bowler. The same stump and the same end. I kiss the off stump. I'm not really kissed the off stump, Gopi. That ball hits the stumps, but bails are not off. That's what I'm talking about. The ball which is used for this tournament is not that much of hard enough to remove the bail sometimes. 22 for the loss of 3 wicket. Definitely Ravi Salian has got us plenty of luck today. 2 chances, catching chances. One is a bowled out. It's the third time he's been a very lucky. So 23 for the loss of 3 wicket. Again outside the line of off stump. Absolutely perfect one. The perfect line is outside the line of off stump and negation. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Again with the bowler, the bowling Manish, right arm over the wicket. Lovely delivery, beautifully bowled. Because he's a different bowler, I think Manish is also new face I am watching in bowling department of Gauri Young Boys. But he's grabbing the opportunity very well, isn't it? So far he's looking a very good line and length. And 23 for the loss of 3 wicket. Again, lovely sweep shot there from Dilip. Dilip now quickly realizing that playing orthodox cricketing stroke is quite a difficult one. Why not to implement that sweep shot? Just getting under the line of the ball to just so closing the face of the bat, running it down to deep square leg region for a single. It's 24 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. 5 is in progress, let correction. Manish balls, this time Ravi right behind the line of the ball, but quite dangerously played, I want to say, because he's almost shuffled across the line of the dead ball in the middle and leg stump, but he wanted to keep the strike for the next over. 5 gone after completion of 5 overs. It's 25 for the loss of 3 wicket. Still it's going to be a interesting match is in progress, and similar run that they will go to get 50, but I think having 7 wickets in hand, I think they will go into more than that. And before the next over going to start, Gopi, the first over looks like when Manjunath hit one massive 6 into our commentary box. It looks like it's going to be a high scoring game, but Naufal bounced back very well. Picked up immediately after he picked up Manjunath's wickets and another wickets. Altogether 3 wickets which is quickly fallen. That's why the run rate which is slightly coming down. But 5 I don't think it's a bad run rate. So considering the fact that it's a 10 overs per games, they got a plenty of time to recover. And I think having Ravi Salian is having so many luck, 3 chances in this innings. And wait to see how he will going to capitalize. But I think it's equal battle is on.
बिल्कुल सतीश, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और रवि सालियन इस वक्त भाग्य बार बार उनका साथ देता हुआ और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा चौथे विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर जमते हुए और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त तक, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड वहां पर और 2 रन यहाँ पर दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। तो इस वक्त 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 28 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, कुल मिलाकर 20 रन की साझेदारी अब तक बन चुकी है चौथे विकेट के लिए और निस्संदेह धीरे धीरे यह साझेदारी इस वक्त जमते हुए केसीसीआर कतरे के लिए, दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद, आरिफ की गेंद को स्वीप किया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए रवि सालियान, पड्डयूर और दिलीप वो जानते हैं विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान देना एवं जरूरी इस वक्त बन चुका है और इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया और गेंद जब तक पहुंचे और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर, 3 मौकों में यहाँ पर रवि सालियान पटयूर बच चुके हैं और इस वक्त उन 3 मौकों का फायदा वो यहाँ पर उठाते हुए एक बेहतर पारी खेलते हुए दिलीप के साथ मिलकर और आरिफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, विकेट उखाड़े जरूर लेकिन सिर्फ अपने हाथ से, गेंद से नहीं, विकेट कीपर शिवराज ने और इस बीच बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापिस, 6 ओवर की समाप्ति, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, बराबर का संघर्ष यहां पर जारी, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन, 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। मीन टाइम नेक्स्ट मैच, one more good match is now coming up. NM Jaipur will take Young Friends Urwa in the next match. One more big match is now coming up right after this match. NM Jaipur versus Young Friends Urwa, and because of that I request all the players of these two teams, all the players of NM Jaipur and Young Friends Urwa, please to be report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು NM Jaipur ಹಾಗೂ Young Friends Urwa ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. तो 7वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, मनीष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रवि सालियान पड्डयूर इस वक्त सामना करते हुए और पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फिकर एक बार फिर से परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, शायद गेंद ऑफ स्टंप से कुछ इंच दूरी पर निकलती हुई और एक बेहतर गेंद के जरिए यहाँ पर पूरी तरह बल्लेबाज लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रवि के लिए अगली गेंद, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ इनसाइड एज ऑफ द बैट और गेंद जब तक पहुंचे शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और मनीष फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद स्विंग करना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पर रियाज गेंद तक झपके जरूर लेकिन गेंद को अपने पैरों के जरिए रोकने में सफल और एकमात्र रन इस गेंद पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए लगभग 30 रनों की साझेदारी यहां पर बन चुकी है ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अपनाते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज दिलीप और रवि सालियान पड्डयूर। मनीष, ये गेंद and this time straight into the hands of mid off fielder, नौफल के हाथों में गेंद पहुंची और ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक को इस वक्त चेक किया था रवि सालियान पड्डयूर ने और स्ट्रोक को रोक लिया था, हाफ माइंडेड दुविधा भरे मन से इस स्ट्रोक को खेला और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। तो रवि सालियान पड्डयूर की सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है
और एक बेहतर पारी खेलने के बाद वो पेविलियन वापस लौटते हुए और 34 रनों पर चौथा विकेट खो चुका। और पहली बार इस वक्त देखा गया कि रवि सालियान पटेल और इतनी सेंसिबल बल्लेबाजी यहां पर की है। तो 15 रन उन्होंने बनाए, कोई भी चौका और छक्का उन्होंने नहीं लगाया और इत्मीनान भरी पारी खेलने के बाद वो पेविलियन वापस लौटते। ही स्कोर्ड 15 रन्स इन 23 डिलीवरीज बाय रवि सालियान पटेल, patience full knock, and after being playing patience-full knock of 15 of 23 deliveries, Ravi Salyan Padayur is now backing to pavilion. Good innings came to an end from him, and it's 34 for the loss of 4 wicket in the over number 7 in progress. हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, एक और बेहतर बल्लेबाज और गेंदबाज इस वक्त तैयार। मनीष लेग स्पिन लेग कटर गेंद थी और डॉट गेंद के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति मनीष की, और कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी केसीआर कदरी जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 overs. 4 runs came from Manish over, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings. Abhilash, the bowler is now brought into the attack from Austin Montero, and और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिलीप के लिए। 8वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। बाएं हाथ राउंड द विकेट अभिलाष। ओवर की again just gone for a wide swing, not succeeded, collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Good start with a dot ball from Abhilash, और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर उछालना चाह, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्टोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और एक रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। तो हर्षित इस वक्त सामना करते हुए अभिलाष की गेंदों का, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, एक रन का इजाफा। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 8th over in progress. Still the runs coming in singles now for KCCR Kadri, and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Gori Young Boys. और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट, improvisation just over the gully fielder's head, chase for the fielder, he just get that one, come back for the second and get it comfortably at last. इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को स्कूप किया था गली फील्डर के सिर के ऊपर से और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। अभिलाष फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया इस वक्त, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त अपनाते हुए, और अभिलाष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद वहां पर, बेहतर फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, और इस बार बल्लेबाज ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर ने विकेट जब उखाड़े तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं, और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं इस गेंद पर।
Not out is the call from the third umpire. The batsman survived. और 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 8 overs completed, 41 runs on the board, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings. 2 ओवर का खेल बाकी और गेंदबाज इस वक्त 9वां ओवर यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 9th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दिलीप, जो कि एक सेंसिबल पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए. और आशिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 9th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और सामना करने के लिए तैयार दिलीप इस वक्त. फर्स्ट बॉल, रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, डाउन टू बैक टू द थर्ड मैन, not for a run, in fact it's a single run, just a single he got, and with that single run the scoreboard moving up to 42 now for the loss of 4 wicket in the over number 9 in progress. इस बार गेंद को ड्राइव किया वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर थ्रो को रिसीव करने में असफल. थ्रो को अगर रिसीव करते तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थ्रो को रिसीव करने में असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और 9वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर पकड़ती पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, काउंटर फॉर अ क्विक सिंगल बाय हर्षित एंड ही गॉट दैट वन कंफर्टेबली. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रन पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. लेग स्टंप से बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड, 1+1 2 रन एडेड. खराब बॉलिंग इस वक्त, दिशाहीन गेंद, दिशा से भटकती हुई गेंद इस वक्त फेंकी थी और आखिरकार 2 रन एक्स्ट्रा सतरीप के रूप में गेंदबाज इस वक्त प्रदान कर चुके हैं आरिफ. 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 9th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और फिर से एक बार गेंदबाज आरिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए हर्षित के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइड लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. अभी भी ज्यादातर सिंगल्स रन से सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज गोरियंग बॉयज के दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार जस्ट कॉल फॉर अ माइटी, नॉट सक्सीडेड. खुद अपने आप से नाखुश दिलीप, अपने सिर को झटक कर उन्होंने अपने नाखुशी का इजहार किया इस वक्त गेंद को ना कनेक्ट करने की वजह से और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और आरिफ तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर हर्षित के लिए. ऑफ स्टंप पर, जस्ट लीनिंग फॉर दैट, जस्ट ओवर द कवर पॉइंट, फील्डर सेड, अभिलाष द फील्डर. जब तक एक टिप्पे के बाद पीछे की ओर जाकर आफ्टर फर्स्ट बाउंस अपने पीछे की ओर जाकर वो गेंद को फील्ड करे. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 50 कम्स अप फॉर केसीसीआर कदरी. 50 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 9 overs completed. Now just a last over left in their innings. और यहाँ पर सारे खिलाड़ी वहाँ पर कवर पॉइंट फील्डर की ओर बढ़ते हुए, शायद अभिलाष उनके पैरों पर कुछ हद तक मोच आई है यहाँ पर क्रैम्प और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. 50 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद. And just talking about the next match, one more big match is now coming up. NM Jappo will face Young Friends Urwa in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು NM Jappo ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪುನಃ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
तो आज अंडर फ्लडलाइट्स मैच खेले जाएंगे, तीनों विभाग के फाइनल अंडर फ्लडलाइट खेले जाएंगे। और फ्लडलाइट्स के जो कि आज के फ्लडलाइट्स के स्पॉन्सर है श्रीमान श्रीकांत शेट्टी, जो कि विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स के भूतपूर्व खिलाड़ी, जिन्होंने इस आज के इस मैच के फ्लडलाइट्स का स्पॉन्सर किया है। और एक बार फिर से हम श्रीमान श्रीकांत शेट्टी का हार्दिक अभिवादन यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर अभिलाष, उनके पैरों पर मोच आई है इस वक्त और इस गॉट अ क्रैम्प ऑन हिज लेग। और यहाँ पर वो पेविलियन वापस लौटते हुए, लंगड़ाते हुए यहाँ पर पेविलियन वापस लौटते हुए, लंगड़ाते हुए। और यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए खेल रुक चुका है। 10वां और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। 10th ओवर एंड द लास्ट ओवर हैव टू स्टार्ट इन देयर इनिंग्स। So 9 overs completed, 50 runs on the board, 4 wickets lost। और यहाँ पर खेल एक बार फिर से पुनरारंभ होता हुआ। और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए Sawad, the bowler is now brought into the deck. Start the fresh proceedings from Austin Mantaran। और एक बार फिर से डिसोजा फैमिली बॉलर, इनका हार्दिक हम अभिवादन करते हैं। हमारे श्रृंखला के मेन स्पॉन्सर्स में से एक है डिसोजा फैमिली बॉलर मैंगलोर। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक, नॉट सक्सीडेड and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Good one from the bowler। तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हर्षित ने गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर सीमा रेखा के अंदर लपकते हुए। Not so power in that stroke, and long off fielder took the catch just inside the fence successfully. One more wicket fallen, 5th wicket gone. Harshit departs, and now it's 50 for the loss of 5 wicket with just 4 balls to go in their innings। और आज के लाइव, जो कि इस श्रृंखला का लाइव किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा, और आज के लाइव टेलीकास्ट के स्पॉन्सर है श्रीमान किरण कुमार, जिन्होंने इस लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। श्रीमान किरण कुमार मंदारा बैल, और जो कि सदस्य है नूतन फ्रेंड्स उर्वा के, श्रीमान किरण कुमार मंदारा बैल नूतन फ्रेंड्स उर्वा के सदस्य, उन्होंने आज के इस लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है, स्पॉन्सरिंग की है, जो कि बेद्रा मीडिया यहां पर कर रहा है। तो यहां पर गेंदे बाकी 4, और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, द बॉल स्टंप्ड पास्ड बिटवीन मिडल ऑफ स्टंप। 1 more wicket fallen, consecutive wickets for Sawad, and now it's 50 for the loss of 6 wickets। Three balls left in overall calculation in their innings। और 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेटें प्राप्त करने के बाद हैट्रिक का मौका इस वक्त गेंदबाज सवाद के सामने, और वो इस वक्त देखना यह है कि अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सवाद, नए बल्लेबाज के लिए हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, and this time it's going to be
डेलिबरेट, एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन. कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था इस वक्त, गेंद को सीधे पैरों पर टकराने दिया था. और क्रिकेट के नियम अनुसार ये डेलिबरेट कहलाता है, जानबूझकर गेंद को पैर पर लिया था, कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और रन को रद्द कर दिया गया है अंपायर ने. तो 2 गेंदे अब बाकी, टाइम पूरा हो चुका है. स्टिपुलेटेड टाइम इज नाउ कंप्लीटेड. 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज इस वक्त सवाद, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर और यहां पर रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर. वाइड का इशारा. 51 नाउ, 7th विकेट डाउन. 51 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट. 2 balls स्टिल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. 2 गेंदे अभी भी बाकी उनकी पारी में. इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का और नए बल्लेबाज तस्लीम का आगमन यहां पर होता हुआ. नंबर 33 की जर्सी पहने हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेंज की ओर कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दिलीप, जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए. सिर्फ 2 गेंदे बाकी अब उनकी पारी में और सवाद गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतर गेंद थी. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर सवाद तैयार दिलीप के लिए. Here comes the last ball. Misses. That's it. The innings is up. Run out happened. 51 for the loss of 8 wickets scored by KCCR Kadri. And now the target for Goryang boys is 52. In 10 overs they have to score for victory. Fantastic piece of bowling performance bowled by the bowlers of Goryang boys, and because of that they restricted the batsmen of KCCR for just 51 runs. And now 52 the target for them, and let's see can they reach the target or not. 52 they have to score in the stipulated 10 overs, so that with the help of 10 wickets, the present equation for them, that means in their stipulated 60 overs they have to score 52 runs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach द टारगेट और नॉट. और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब गोरियंग बॉयज की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you very much, Gopi, and welcome back. Welcome back. Good afternoon, cricket lovers. And meanwhile, I request NM cricketers Mangalore as well as the young friends Urwa. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮಗಿದು
ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್.ಎಂ. ಜಪು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So welcome back, and 52 is going to be a target for Gori Young Boys to qualify for the next round, and next round in the sense to qualify for the semi-final of this prestigious cricket tournament. Gori Young Boys have to get 52 runs to win this match, and wait and see how well Gori Young Boys will go into play against KCR Kadri. And as far as chasing this total is concerned, the 52, the 5.2 runs per over is required 100 for Gori Young Boys to win this match. It seems to be a little bit total, but in this format of a game, C152, it's going to be the big one. And if the bowler bowls well, fields well, and we are witness some the few matches, most of the matches, we are witness that even 50 plus runs, which is depended very well and made a little bit difficult for the chasing team. The perfect example, the previous match, first match and second match, where it becomes 49, which is becomes very difficult. Even 50, 60 plus runs is becomes difficult. But now I think Gori Young Boys, they got some good batting department where they can get the 52. The batters like Shivaraj, the batter like Saurav, batter like Abhilash, these are all players are loves to play the long format of a games. They love that 10 hours format of a games because they're getting enough time to settle down in the middle, to read the game very well. And I think these two batters in the middle, Riaz as well as Naufal, have to get a good start here for Gori Young Boys if they want to win the match. At the same time, for KCR Kadri, they need to get some good start from the bowling. And straight away Satish has got a ball in his hand from the Austin Montero and D'Souza family end. Right over the wicket. First ball, it's a warm-up delivery of the afternoon. Satish ball far outside the line of off stamp. A little margin for error. You can't do the mistake when you're depending a total like a 52 to win the match for the opposition. One without loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Satish from the far end. Right over the wicket. Riaz going for the expansive drive. This is what I'm talking about. This is not an easy condition for the stroke maker. They need to adapt to the condition, need to middle 2-3 deliveries. We wanted to play in the natural cricketing strokes, one without loss of 1 wicket. Satish balls outside the line of off stump, again a good delivery. The perfect example for that, the innings of Ravi Salian is quite a different innings to be played, because everyone is just enjoying his hard-hitting cricketing strokes. But today he's played a different innings of 15, which is not having any boundaries and sixes. This is what I'm talking about, how difficult the wicket it's going to be. Again, the guy wanted to get the single there. Naufal is not responded. Maybe they're saying that it's no need to panic at all. He's just wanted to keep the wickets in hand. Then we can get some this kind of total. So 3 dotted deliveries, slight a bit of pressure for Riaz, and 1 without loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Again the bowler Satish from the far end. Right over again, loud side lands, what a catch, magnificently held by the big man. Manjunath once again is looking outstanding. I am watching him in the last 2 seasons. From this season, he is lot more improvement in his fielding, especially when you are taking a catch, diving to his right. I'm watching the 2-3 diving catches in this season. It's taken some splendid catch, and it's been outstanding catch taken there by Manjunath. And Riaz wanted to get over the infield between extra cover and short mid off, and Manjunath taken a fantastic catch, diving to his right. It's not so easy for the tall fielders to dive to his right, and he's taken a screamer. And the wicket number first is back in the pavilion of Gori Young Boys. That's what I'm talking about. The Riaz after that 3 dotted deliveries, slight a bit of his feeling fresher. I don't know why, because it's a long format of game like 10 hours game. I think need to be cool and calm. The patience what I'm talking about is needed for each and every batter. So new batsman in is Sawad, just walking towards the middle. Sawad
is a new batsman in. One for the loss of one wicket. Satish has got a very important breakthrough, vital breakthrough. This is what I am talking about, the beauty of the game when you are having a 10 overs format of a games. Always a very good cricket to watch for the cricket lovers. This is beautifully ball, perfect one. This is all happening when you are taking a wicket. When the fielders supporting you in the field, then then the bowlers will go to galvanize their level of confidence. And this is the result from Satish. Right over the wicket to Sawad. Sawad this time wanted to sweep the ball, missed it completely. Good over. Fantastic over which is comes in India from Satish. Bowled a absolutely perfect over. Just a single run. And it's in the form of extra. The wide, otherwise absolutely fantastic over. One for the loss of one wicket. Goryang boys has got a shackling start, isn't it? They lost one wicket for just one run. Just talking about this cricket tournament, all winning captains will be given gift vouchers from Just Casual. The three captains will going to get that the gift vouchers from Just Casuals. Thank you very much, Just Casual, for your contribution. And all finalist captains will be given with a silver coin. And 6 captains of 3 finalists will going to get the 6 silver coins. 6 captains will going to get 6 silver coins. All trophy which is sponsored by Rohan Montero in the sweet memory of his dad Austin Montero. And the man of the series of the Masters Trophy and cash which is sponsored by Prashant of Young Friends Urwa. All individuals cash and trophy which is sponsored by Pami Kodiyalbail. Thank you very much for your contribution. And the big main sponsor for this cricket tournament and a live telecast which is sponsored by Kiran Kumar Mandharabail and member of Nutan Friends Urwa. Thank you very much, Kiran Kumar. The start of the first delivery of the over number second. This time he wants a single. Sawal wants a single. Naufal not interested. And no damage done. And one more big sponsor, the floodlight, which is donated by Vijay Lakshmi cricketers Shrikant Shetty. Shrikant Shetty, the former cricketer of Vijay Lakshmi cricketers, the sponsor this floodlight under floodlight matches. Thank you very much, all the sponsors, for your heartfelt contribution for the success of this cricket tournament. So started with a 2 data deliveries. This time, caught and ball opportunity. The Dilip is reacted a little bit slowly, isn't it? He can get 2 hands for that, but he is giving his right hand to take that cotton ball. But ball is just missing his hands. It's 2 for the loss of 1 wicket. This is all happening. I'm just talking about how difficult wicket is going to be. We are saying it's a wicket is a difficult, but it's not a matter of a wicket, I want to say. But as a cricketer language, you are always saying that the wicket is a difficult one. But the ball which is used for this match, this tournament, is a difficult one. And once again, the full toss delivery. Ball which is not coming to the batters. Even that was a full toss delivery. Sawad couldn't manage to capitalize that one. Free meditated switch it is attempted. Missed it completely. And there is no chance at all for any run. 2 for the loss of 1 wicket. Now, very interesting. The fielder is called from mid-off to long off to mid-off, but Dilip doesn't want to do that. He is sending mid-off, going back to deep long off. Oh, beautifully ball. Perfect one from Dilip. Sawad departs. Now Goryang boys are looking in a deep trouble. 2 for the loss of 2 wickets. They cleaned him up with the beauty of the delivery. The off cutter coming into the batter. And Sawad a little bit early into the stroke. That I'm talking about. Dilip is using the condition very well of that ball. He's not trying to ball that quicker one, but he bowled a slower one. And it's good enough. It's good enough for the batter Sawad to miss his bat, and he hits his 2 for the loss of 2 wicket.
Saurav is a new batter just coming into the middle. I think he's a perfect the batter to come in this position. He's got all the techniques, but he need to spend the time a little bit to settle down, and need to use the condition. Yes, the condition is a slight bit of favorable for the bowlers, but to settle down is so important. And wait and see how Saurav will going to handle the pressure here. 2 wickets back in just 2 runs in the second over is in progress. Dilip balls. The first ball, he wanted to get that one into the third man region to try to get the switch it. And a fantastic over. One more good over. 2 overs, only 2 runs. And 2 wickets are back into pavilion. And we can see that all 2s in the scoreboard. 2 for the loss of 2 wicket. The overs is a 2. And one more 2 is there. That is a target which is a 52. And 4 2s altogether in the scoreboard. And wait and see. And even the jersey number of big man Manjunath is also 52. One more 2 is there. It's a 25, not a 25. It's not a 52, it's a 25. But another 2 is there. So difficult time continues here for Gori Young Boys, but still they got a lot of time to get back into the game. For that, some players like Naufal need to take the initiative if we wanted to back in the game. Satish to continue from the far end, Austin Montero end. Right arm over the wicket, balls Naufal. Delicately played by Naufal, just placing the ball down to back of point region for a single. So with the single, scope moves on to 3 for the loss of 2 wickets. KCCR Kadri registered the first time in a history when they lifted the prestigious UFC trophy, RRP Memorial Trophy. One of the golden moment for KCCR Kadri registered. 3 for the loss of 2 wickets. Again swept that one down to square leg region, and they completed that one very well. So scoreboard moves on to 4 for the loss of 2 wickets. But when we are coming to that limited over format of the games, the KCCR Kadri is not really having that much of success in this season. 1 or 2 occasions that they are lifted some prestigious titles, and scoreboard is 3 for the loss of 2 wickets. Again Satish balls. Lovely delivery. This is that what I'm talking about. How difficult it's going to for the batter. The condition, it's not easy. Satish knows that the condition is very suitable to bowl the slower one rather than the quicker one. So he bowled some slow deliveries to get some good deliveries for Naufal. 3 for the loss of 2 wickets. This time again going for the expansive drive. Again he is not meeting the ball. This is what all about we are talking about. Now I think Naufal lost his patience. He knows that this is the last over of the power play. He wanted to get one or 2 good shot, big shot, but at least the boundary he wanted to get. So let's try to break the shackle. Because so far I think as KCCR Kadri they able to put some pressure by bowling some quiet overs and wicket taking delivery overs. Satish ball. That's why he want to try to bring that one around the legs of the batter. And white call by umpire. That ball is too much going away outside the line of leg stump, and Naufal wanted to get that one into fine leg region. So 1 + 1 2 bonus run now for Gori Young Boys. It's 5 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Satish is considered a big wide in that occasion because batters are struggling to get the runs on the board. Again they wanted, oh my goodness, Saurav. Why is going for the run without seeing the ball? Absolutely. It's unnecessary and irresponsible. It's 5 for the loss of 3 wickets. It's a 5 for the loss of 3 wickets. Saurav back into pavilion. It's once again Saurav is not really justifying his position in this batting department of Gori Young Boys.
So 6 on the board, little bit correction in the scoreboard. 6 for the loss of 3 wicket. The 4 runs already came from this over. One is 1+1, the 2 runs, one which is taken by Saurav, then Naufal. Now it's going to be very important that Shivaraj is a batter, just came into middle. Shivaraj is now the key player for Gori Young Boys. I've already mentioned there is a 2-3 key players who can be very suitable for this condition. One is Shivaraj, one is Abhilash, but Saurav is also, but I is disappointed, highly disappointed. He couldn't manage to capitalize this condition where he can be very handy. It's 6 for the loss of 3 wicket. 3 gone. So 6 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed, and Gori Young Boys once again they got a shackling start, isn't it? The run which is not good enough. At the same time they lost 3 wickets. But I think Gopi, this pair, Shivaraj as well as Naufal, the 2 experienced campaigner for the side of Gori Young Boys, especially in this condition, Gopi, big format of a games like 10 overs. Shivaraj is the kind of a batter that loves to play the long format of the game. So one who got a 100 behind him in this particular UCG ground, and he need to play the street angle role if Gori Young Boys wanted to win the match. But so far, KCC Kadri are looking in top in after 3 overs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, शिवराज 10 ओवर के फॉर्मेट में एक बेहतरीन बल्लेबाज जाने जाते हैं, और यहाँ पर जहाँ तक गोरी यंग बॉयज के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त शिवराज की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है सतीश, और अच्छा साथ उनका निभाना होगा इस वक्त दूसरे छोड़ के बल्लेबाज को। और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बचे हुए 7 ओवर में। गोरी यंग बॉयज की पारी में 46 रन और चाहिए 7 ओवर में, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त डीप पैकुड़ा स्क्वायर की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और गेंदबाज तस्लीम एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए इस वक्त तैयार शिवराज, और तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट शिवराज के लिए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। गेंद को खेलना चाहा क्योंकि बाई का इशारा, और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। Still a difficult time continuing here for the batsmen of Gori Young Boys. Still they have a long way to go. और गेंदबाज तस्लीम ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, right behind the line of that ball and driven that one perfectly by Naufal down to a wide long off for a single, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, अपील, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। शिवराज की पारी समाप्त। कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद अंपायर ने अपनी उंगली यहां पर उठाई, रोलैंड पिंटो ने, और शिवराज का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। और निस्संदेह शिवराज का विकेट का पतन गोरी यंग बॉयज के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि शिवराज, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने कहा, शिवराज 10 ओवर के फॉर्मेट में बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और उनका विकेट का पतन निस्संदेह इस वक्त गोरी यंग बॉयज को मुश्किलों के दलदल में और ढकेल सकता है। 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिस इज एन एब्सोल्युटली अ शैकलिंग स्टार्ट फॉर गोरी यंग बॉयज, एंड अ फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ केसीसीआर कद्री एट दिस सिचुएशन। और शिवराज का विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। एक और बेहतर बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज की ओर से दीपक इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए
और वो इस वक्त सामना करेंगे तस्लीम की गेंदों का। 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिस इज एन एब्सोल्युटली अ बैड स्टार्ट फॉर गोरी यंग बॉयज। और जहां तक एक साझेदारियाना पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारियाना पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है। और तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उभरता विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ उभरता विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना इस वक्त चूक चुका है। निशाना समसों पर टकरा था तो शायद यहाँ पर दीपक मुश्किलों में गिर सकते थे, लेकिन यहाँ पर निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका। 4 ओवर की समाप्ति, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 overs completed, 10 runs on the board, 4 wickets lost. Still the difficult time is now continuing here for the batsmen of Goryang boys. 42 more runs now they have to score for victory in remaining 36 deliveries with a required run rate of exactly 7 runs per over. Still they got 6 wickets kept intact. 6 wickets they got in their hand. And after this match, one more big match is now coming up. Young friends Urwa will take over NM Jaipur in the next match, and because of that, I request once again all the players for these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और ऑस्टिन मोंटेरो इनकी ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए गेंदबाज दिलीप इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह पार्टनरशिप इज नाउ बैडली रिक्वायर्ड फॉर गोरियांग बॉयज टू गेट बैक इनटू दिस मैच। और 7 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है। और ओवर की पहली गेंद, यह गेंद दीपक के लिए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला, शॉर्ट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ कहते हुए फील्डर से और फील्डिंग के नियम के बारे में। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार नौफल के लिए ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया वाइड स्पीड ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिलीप, रिवर्स शॉट एंड ही लॉस्ट हिज विकेट। Flighted delivery, just wanted to play the reverse shot. The ball pitching right on his nearer to the bat, and after beating his bat, it stuck to his off stump. Bells are disturbed, and that is the end of Deepak. So disaster continuing here for the batsmen of Goryang boys. Now they are looking deep in trouble. It's 12 for the loss of 5 wickets. तो यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ करना एक और प्रमुख बल्लेबाज गोरियांग बॉयज की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज दिलीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी गोरियांग बॉयज के लिए। और इस बीच गेंदबाज दिलीप अगली गेंद लेकर तैयार करना के लिए, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा अपील, लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा गई। The ball pitched outside the line at the last moment, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 12 for the loss of 5 wicket. और 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर।
फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया, इम्प्रोवाइजेशन, गॉन थ्रू फॉर अ किक सिंगल, ओह डायरेक्टली शाइन एंड इज गॉन. Love fall is backing to pavilion. One more blow for Goli Young Boys and one more success for KCCR Kadri. That was an unnecessary single, and because of that, one of them lost his wicket. Love fall back to pavilion, and this is an absolutely one more big blow for Goli Young Boys. It's 12 for the loss of six wickets. They are struggling. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और यहाँ पर रवि सालियान पटयूर और दिलीप की साझेदारी का यहाँ पर याद करना जरूरी है, उनकी बेहतर साझेदारी को. हालांकि वक्त के नजाकत को समझते हुए सेंसिबल बल्लेबाजी उन्होंने अपनाई थी और दोनों ने 15-15 रन का योगदान दिया था. वो जानते थे गेंद आराम से बल्ले पर नहीं आ रही है, बल्लेबाजों को दिक्कत है यहाँ पर हो रही है गेंद का सामना करने में. इस बीच एक और विकेट गिर चुका है. चिप किया था इस बार और गेंद कवर पॉइंट पर बेहतर कैच लपकते हुए यहां पर फील्डर. 7 विकेटें 12 रन. विकेट ताश के पत्तों की तरह यहां पर गिरते हुए. विकेट्स आर फॉलोइंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. 12 for 7. और जिस तरीके की बल्लेबाजी रवि सालियान पटयूर और दिलीप ने अपनाई थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही तरीके की बल्लेबाजी थी, सेंसिबल बल्लेबाजी. हालांकि धीमी साझेदारी उन्होंने जरूर निभाई, लेकिन उनके इस बेहतर साझेदारी की बदौलत यहां पर केसीसीआर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. और यहां पर जिस तरीके से गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों के विकेट गिर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्लेबाजों को कितनी दिक्कतें इस वक्त हो रही है गेंद का सामना करने के लिए. और गेंदबाज यहां पर किस तरह इस हल्की गेंद का फायदा यहां पर उठा रहे हैं. एक और बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. 5 ओवर की समाप्ति, 12 रन 7 विकेट के नुकसान पर. 40 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 30 balls. They got only 3 wickets in their hand. प्रसाद गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, करना सामना करने के लिए तैयार. ड्रिवन डाउन टू कवर पॉइंट, गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल. इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट. जस्ट अ सिंगल दे गॉट. स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. नए बल्लेबाज आशिक का आगमन यहां पर हो चुका है, सामना करने के लिए तैयार. प्रसाद फ्लाइट हेड चिप किया, वाइड लॉन्ग ऑफ पर, not more than a single. In fact, they're looking for the second, but won't get it. Has got only a single for that stroke. 14 for 7. Still they have a long way to go. और जब जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उनके अंतिम उम्मीद, अंतिम आशा करना के रूप में निर्भर. और करना का प्रेजेंस, करना की उपस्थिति इस वक्त गोरी यंग बॉयज के लिए बेहद जरूरी है. चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन वहां पर फील्डर शायद कैच को छोड़ चुके हैं और बल्लेबाज इस बीच 2 रन के लिए अपना छोड़ यहां पर अपने छोड़ पर वापस लौटते हैं. शायद वहां पर कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए फील्डर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 16 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. Karna survived in the previous delivery. प्रसाद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और एक बार फिर से करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. Just gone for a big one, not succeeded, not quite get that one from the middle of the bat. Has got a single for that stroke. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. स्टिल द बैट्समैन ऑफ गोरी यंग बॉयज सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. और प्रसाद फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, लेग स्टंप से बाहर, वाइड, 1 more extra. 18 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. 6th ओवर इन प्रोग्रेस. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट, not quite mid again, gone through for a quick single and get it comfortably at last.
रन से चाहिए इस वक्त गोरी यंग बॉयज को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 overs completed, 19 runs on the board, 33 to get, 4 overs remaining, that means 24 ball left. In fact, no, over is not completed, one ball left, in fact. And last time in this over the bowler bowls Prasad, over की अगली गेंद लेकर तैयार। Driven down to long off, not more than a single to end the over, 20 for the loss of 7 wickets, 6 overs completed, 32 to get in remaining 4 overs, that means in 24 balls, and the asking run rate is now gone up exactly 8 runs per over. Just they got 3 wickets kept intact. तो यहां पर विशाल गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सातवां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, 7th ओवर स्टार्ट्स और विशाल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए कुछ हद तक जोखिम इस वक्त उठाना होगा बल्लेबाजी में, कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी होगी बल्लेबाजों को गोरी यंग बॉयज के, अगर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करनी है तो। फर्स्ट बॉल Vishal to Karna. Lost it! This time, I think it could be taken. Yes, it's taken. Karna departs. One more wicket fallen. Gori young boys are now struggling. 20 for 8. उछालना चाहा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। और लॉन्ग ऑफ के फील्डर आखिरकार कोई गलती नहीं की, तो करना का भी विकेट यहां पर गिर चुका है और इस विकेट के पतंग के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज के उम्मीदें काफी कम हो चुके हैं। So number 10 batsman is now comes out to the middle, Manish. 20 for the loss of 8 wickets. Everything going in favor of the bowlers of KCCR Kadri now. And everything going against Gori young boys at this situation. और गेंदबाज विशाल मनीष के लिए ड्रिवन इन द एयर, जस्ट ओवर एक्स्ट्रा कवर फील्डर सेड, मंजुनाथ शायद फील्डर थे वहां पर और ऊपर की ओर छलांग लगाने के बावजूद इस गेंद को लपक नहीं पाए, गेंद उनके पहुंच से बाहर, 1 रन का इजाफा। 21 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस और गेंदबाज इस वक्त फिर से तैयार। रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, मिसेस एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, थोड़ा सा मिस जजमेंट उन्होंने किया, गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनकी हो रही थी और आखिरकार उनको बीट करते हुए निकल गए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो जरूरतमंद चौका इस वक्त गोरी यंग बॉयज के लिए लग चुका है। बल्लेबाज आशिक का चौका लगाने वाले बल्लेबाज और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ड्रिवन स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गॉन टू रखते, ओह मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। शायद वहां पर रन बन सकता था, लेकिन यहां पर नॉन सेकंड बल्लेबाज मनीष ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, फलस्वरूप दोनों बल्लेबाज एक छोर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर और यहां पर रन आउट हो चुका है मनीष के रूप में। 9th विकेट फॉलन, 25 for 9 with just last wicket now left for Gori young boys.
तो अभिलाष हालांकि फील्डिंग के दौरान चोटिल होकर इंजर्ड होकर वो बाहर गए थे अपने पैर में मोच आ जाने की वजह से, इसको क्रैम्प ऑन हिज लेग, और एक बार इस बार बल्लेबाजी पर उतरते हुए अंतिम बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विशाल की गेंदों का. द लास्ट बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल फॉर गोरी यंग बॉयज. Of the toss, just a single. Scoreboard moving up to 26 now with that single for losing 9 wickets in the over number 7th in progress. इस बार गेंद बेहतर थी और ओवर की समाप्ति. For the loss of 9 wickets, 7 overs bowled, 26 to get from 3 overs. लिखित गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए अभिलाष हालांकि चोटिल होने के बावजूद वो बल्लेबाजी पर यहां पर उतर चुके हैं. अंतिम बल्लेबाज के तौर पर सामना करने के लिए तैयार. फुल टॉस, प्ले दैट वन, नॉट फॉर अ रन, एंड सिली मिड ऑन फील्डर कलेक्टेड द बॉल. 26 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स. लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. Wide declared by umpire. 27 for the loss of 9 wickets. बेहतर गेंद थी, गेंद पर रक्षात्मक तरीके का खेल खेला और रन इस बीच नहीं मिलेंगे. इस बार बेहतर गेंद थी. $27 for 9. Reverse shot, played that one, improvisation down to a backward third man for a single. अभिलाष इस वक्त चल कर जाते हुए एक रन प्राप्त कर चुके हैं. 28 for the loss of 9 wicket. 24 runs to get now. और केसीसीआर कदरी को चाहिए सिर्फ एक विकेट इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए. और गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप पर बीट हुए, पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में. वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज की यह गेंद plum, absolutely plum. That's it. Gory Young Boys innings bundled out for just 29 runs and a 22 runs comprehensive victory for KCCR Kadri against Gory Young Boys. And with that 22 runs comprehensive victory, they are through to the next round of this competition after defeating Gory Young Boys by 22 runs. So the next match, one more good match is now coming up. NM Jeppo will take over Young Friends Urwa. One more big match is now coming up, and that match starts within just a short while. And we are just taking a short break. We'll be back right after short break when the next match will going to start within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
I request the captain of Young Friends Urwa, please to be reported here for toss. I request captain of Young Friends Urwa to please be reported here immediately for the toss. Captain of Young Friends Urwa. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫರ್ ಅಂತರ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹನೀಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಹನೀಫ್ ರನ್ ತರ್ಕ ಮುಸ್ತಾಫರ್ ಅಂತರ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಹನೀಫ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Thank you very much, Gopi. So good afternoon and welcome back for the semi-final and first semi-final of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023 and NM Cricketers Mangalore versus Young Friends Urwa. And after a toss which is won by the captain of NM Cricketers Mangalore, Atif, elected to field first against Young Friends Urwa, and the umpires are there in the middle. Everyone is there at respective position, just waiting for the opening batters of Young Friends Urwa. I request captain, please send your opening batter of Young Friends Urwa as soon as possible. So very bright sunny afternoon and in this UCG cricket ground, and we are witnessing some very good crowds here, and quite understandable. Today is a weekend, Saturday, last day of the week, and we are getting some good number of crowds here to get some good cricket here. And Young Friends Urwa, after that they got a direct place in the semi-final. They are playing their first match, but they are playing the semi-final because of 7 matches, 7 teams which is participating, so that Young Friends Urwa has got opportunity to play semi-final. After that they got bye in the first round, and now NM Cricketers Mangalore, after they defeated Mangalore Cricketers in a very close encounter, one of the best match of the day, number 1, and NM Cricketers Mangalore came out from their trouble when they are very much looks like they are struggling to win the match, but Riaz once again played a very good innings for his team under pressure, and takes his team safe to home, and they qualify for the semi-final. Young Friends Urwa, and they are now playing their first match, and we didn't see how well these opening batters Santosh as well as newly married Arshad, of course he's got married in last Monday, and started his second innings, and we didn't see after he started his second innings in his life, how can it going to help him to improve his batting in the after that innings. Wait and see. And here he came as opener batter. He's in non-strike again, Arshad, and on behalf of all cricket lovers, on behalf of all officials, we would like to wish him a very happy married life for Arshad, and so umpire Arish Padil signaling towards our scorer Satya Sarup, and ready here for scoring here, and here is Riaz first ball from the far end, from the Austin Montero and D'Souza family bowler Urwa end. First ball, Santosh quite nicely places that one. Intelligent cricket there from Santosh. Places the ball down to deep cow point region for a couple of runs, and he's off the mark. This is a kind of intelligent cricket is much required. This condition like this, maybe they are observed the one or two matches here. Santosh, he knows that it's not a kind of the wicket where you can enjoy the big shots, but sensible batting is more important than the big shot. Riaz from the far end, right arm over the wicket, went for the reverse sweep, but missed it completely. That's the reason. Ball which is not really coming to the bat as batsman expecting. Maybe Riaz is bowling a quicker one, but he's also not getting that much of quickness. And first dotted delivery of this over, second delivery completed, third time in this over. This time absolutely perfect stroke there from Santosh, right behind the line of the ball. Everything is right behind that stroke from Santosh to pick the single, and with a single score numbers on to 3. Now very interesting to see that how Arshad will go into construct his innings, whether he will going to continue his destructive batting, or can he wanted to whether he wanted to play some sensible batting. Wait and see. Arshad just watching the field set now. For him, one fielder is situated in the mid wicket, one fielder at deep long off. There is a short mid up, short cover point, short third man, backward point, short fine leg, short square leg, and mid on. Riaz balls. This time Arshad nicely plays it down. This is a kind of technique is always going to be very useful to get the rotation of strike. Picked up a single there
with that single scoreboard numbers on to 4 on the board. By observing the result of the previous match where Goryang boys struggled to get 52 and they lost the match by the margin of 22 runs. Now batting first team now quickly realizing that it's not a kind of the wicket where you can get 70 or 80 runs in 10 overs, but it is a kind of wicket where it is 50 is also very much enough if he bowls well, bats well, field well. The first delivery we're seeing that Santosh fails to make a contact with the bat. He wanted to get that one into fine leg region, missed it completely, and scoreboard now remains on 4 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Riaz again, improvisation. Ball is in there for a while, but out of the reach of the fielder down at short third man region. Zaid, I think, the fielder, then the short third man fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. 5 came from the first over. Steady and decent start here from even the bowler as well as for the batters, and equal start for both the teams. 5 in the first over of the bowling of Riaz, and the first over of power play which is completed. So right off our commentary box in the main stage, there is all the winners trophy situated. There is no runner-up trophy, but only the winner trophy for the winners. And very attractive and very beautiful. It's not a huge one, but it is a very beautiful one, and very cute trophies. Nutan Champions Trophy situated in our main stage. Again, the first ball outside leg stump. Slight a bit of ball is going down the leg stump, and looks like it's slight a bit of batter which is involved there from Santosh, so that no signal came from umpire. So one more addition, with the addition of that single, scoreboard numbers under 6 on the board without loss of any wicket. Atif, the captain of the side, successful captain for NM Cricketers Mangalore in this season. Able to clinch 4 to 5 big titles in this particular season. The last week they won Adinateshwara Trophy 2023. And Mariamma Mutabidre has become the runners-up in that final. The tournament which is played at Nehru Maidan. The 1 lakh big cash prize. Atif again, bowling away from us. First ball of the over number, second ball of the over number second. Full toss. Arshad quite watchful in that occasion. This shows that how the Arshad is just changing his mind here. Otherwise, full toss delivery, no way Arshad missing that one opportunity. He can go for the smash, but he know exactly that it's a condition of the game is not so easy for the batter. So he just wanted to get the single, premeditated, so that he couldn't manage to take the advantage of that full toss. Atif again. Santosh shapes that one, loose stroke, straight to the hands of Azhar. It's not quite enough to have a patience for 1 over, especially in this format of a game, Sunday format of games. The patience which is always going to be key for the success. This time half-hearted chip here from Santosh. Look at that disappointment, isn't it? Always going to be a hurting factor for the batter like Santosh. When you have got a variety of strokes, when you have got a potential of even the condition is not suitable for the batter, but the kind of batsman Santosh, it can be very handy. But I think it's a huge wicket for NM Cricketers Mangalore now. The wicket of Santosh definitely going to be a huge one. Azhar down at orthodox wideish long on region, taken a comfortable catch. It's 7 for the loss of 1 wicket. Young friends who have lost their first wicket. The new batsman is Prasad. Now 2 left-hand batsmen are in the strike. 2 left-hand batter
for Young Prince Urwa. So Young Prince Urwa has got a number of left-hand batters, and in the present cricket, I think no one team has got that much of left-handers. What Young Prince Urwa has got. Already the two left-handers are in the middle. Then Rajesh Ubar is one more left-hand batters to come. The 7 for the loss of 1 wicket. Atif got a breakthrough in his first over. Nicely plays it down to deep cover point. Running hard. In comes the throw, but not good enough. Very good placement, but I think Prasad, after he plays the ball, he almost comfortable that he thinks that only single is there. But Arshad knows that ball is went in the gap, so he's charging and calling his partner for the second, rightly so. With that couple of runs scored, but numbers down to 9 for the loss of 1 wicket. This time he went for the sweep shot, going for the quick single. So with that single score, numbers down to double figure 10 on the board. It's a good score. It's a 10 is not a bad score. It's a good score on the board for Young Prince Urwa. The Atif to ball from the commentary box, and being the captain of the side, he's got a huge wicket of Santosh in that over. Nicely plays it down to square like mid-wicket, mid-on region. Arshad picked up a single. Second over completed. Completion of over number 2. Young Prince Urwa, 11 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 5.5 runs per over. 5.5 runs per over. The first ball of the over number 3rd is started from the far end, and bowler Diaz starts his second over. The first run which has been taken there, 12 for the loss of 1 wicket. So again the bowler Riaz changing his angle. Of course is bowling down the wicket. Bowling around the wicket, balls this time again. Nice bit of piece of batting there by the left-hand batsman Prasad. He picked up a single, 13 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily, these two batters, left-hand batters, they try to get some partnership going for Young Prince Urwa. It's a 13 for the loss of 1 wicket. Again, now flicks that one. Oh, good stop. Very good stop. Otherwise, ball is raising. Ball is raising towards a fine leg, deep fine leg region, and the fielder did a great job to got a hand onto that. It's a wrong hand, left hand. Able to stop that speed of that flick of Arshad. 14 for the loss of 1 wicket. Again, this time he defeats the fielder. Long chase here for the fielder, but just a single there, and a good piece of fielding there by the fielder. And it's not that the outfield is not quick, but ball which is not travelling quickly, so that it is giving opportunity for the fielder to run back and to field the ball.
15 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Riaz again bowls. This time, oh, what a catch! He is a very special man as far as NM cricketers, Mangalore, the fielding or batting or bowling, anything. But he is one, absolutely, sometimes he is very, very surprise. He is definitely going to surprise everyone. And the way that he's taken that catch. And again, Arshad, the half-hearted push in the relegation. And just pays the penalty for that. And a big wicket here for NM cricketers, Mangalore. And absolutely one more stunner taken there by the fielder Faisal. 15 for the loss of 2 wicket. Arshad departs. And this is so shows how difficult it's going to be a batting here in this particular tournament. Half a drive, half a push, pays the penalty for that. And without getting any entertainment here for the crowds, Arshad departs. It's 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Aman is a new batsman in. He's got opportunity here to come in the number 4 position. And got a place in a young friends who are wait and see how well we're going to justify his place in this young friends who are playing 11. In the presentation ceremony that will going to commence after this tournament, maybe it was after 9:30. Three good players, former cricketers will going to felicitate. One is Gangadhar of Young Friends and Jugal Sports Club on our represented. This time a lovely improvisation. Aman down to deep third man division. Protection has been given for that. Using the face of the Riaz very well to get the single Aman. So 3 completed after completion of 3 overs. Young Friends 16 for the loss of 2 wicket. Still they have to go 7 overs to go. 42 deliveries remaining. It's plenty to get some good score here for Young Friends. They lost 2 wickets, but they need to get a partnership. And NM cricketers Mangalore also he knows that if any score around 55 to 60 is going to be a good score to depend in this condition. There is a so warm welcome for Prasanna of Morning Star for this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. Warm welcome on behalf of Nutan Friends as well as on behalf of all cricket lovers for this prestigious cricket tournament. The 16 for the loss of 2 wicket and Faisal brought on the attack from the commentary box end. Right arm over the wicket bows to Aman. Chip that one, loose stroke, one more wicket is back into pavilion. This is not an easy wicket. I want to already mention. Once again, this is a perfect example for that. How late the ball is coming to the bat. Batsman early into the stroke and pays the penalty for that. Checking a stroke. If you see the 3 dismissal, I want to say that 3 dismissal. The first dismissal of Santosh when he chipped the ball and got out by giving catch to Azhar down at wideish long on. The second wicket is played by Arshad. Is one more stroke which is almost looks like checking the stroke in the last moment. And the last one, Aman once again struggle to get the timing behind the stroke. So new batsman, the left-hand batsman, one more left-hand batsman is on strike now for Young Friends. Went for the reverse sweep, missed it completely. Rekwan
Again, nicely place it down to short third man region. And can I know the name of the new batter? There is no jersey number in this. There is no jersey number. So, umpire Vivek, can I know the batsman's name? Yes, thank you, thank you. Jalal is a new batter in. Jalal is a left-hand batter. Is from Krishnapur, I think so. Yes, he's a very good striker of the ball. This time improvisation, nicely plays it down to deep square leg region. The running guard looking for the second, but very difficult to get. One more single, 18 for the loss of 3 wicket. Jalal is known to be a very good striker of the ball. Very popular name as far as cricket in Suratkal Krishnapura Shakobit is concerned. Outside the line leg stump, going to be a wide. One more extra. It's 19 for the loss of 3 wicket. Jalal from Parangipete, it's not from Suratkal. Again, the wide outside the line of off stump. Absolutely right call from umpire. It's a ball which is going outside the line of leg stump and coming around after that ball passes that line. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. There is a deep backward point, deep widest long off. There is a square leg which is fine leg unorthodox. Got outside edge of the bat. They're going for the run. Is where there is no run at all. So Faisal completes his over. After completion of over number 4, searching for the right track. Young friends Urwa, 20 for the loss of 3 wicket. For the loss of 3 wicket. 5 gone, 4 gone, 6 remaining. 6 remaining. Sensible batting which is badly required for young friends Urwa. But NM cricketers Mangalore are looking in good position here. So 20 for the loss of 3 wicket. Ayaz the ball from the far end. Round the wicket. Outside the line of off stump and wide call by umpire. Rightly so, one more addition to total. With the addition of that single, score moves on to 21 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Ayaz from the Austin Montero end. Right arm around the wicket, and we are talking about the felicitation to Gangadhar and Chitraveer, ex-cricketer, and Vishwanath of former cricketer of Nutan friends will go to felicitate in that prize distribution ceremony. So Harmony for Humanity, and that award will be given to Irshad of NM Cricketers Mangalore and SK Charan of Challenge Bowler will be honored with the Harmony for Humanity award in that prize distribution ceremony of Champions Trophy 2023. Meanwhile, one more single has been taken there by Prasad by getting this by placing the ball down to square leg region, swept the ball nicely, and scoreboard numbers on to 22 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Maybe young friends Urwa is just having a target in the mind that 50 plus is quite enough for them to restrict the opposition. Beautifully ball, perfect one. Jalal little bit lazy to his footwork. Tried to push the ball without moving his front foot to the line of the ball. And that was away going delivery. Off cutter, but that leaving the batsman, left hand batsman. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. It's 22 for the loss of 3 wicket. This time Jalal, first time seeing that he's lost his patience as he's looking for expansive drive. Again, the timing is not coming proper.
It's 23 for the loss of 3 wicket. Just seeing that against Mangalore cricketers, NM cricketers, Mangalore struggled to get 49. It's a very hard fought victory for Mangalore cricketers. So that maybe the young friends were thinking about that similar total they wanted to get. This time Prasad looking for the expansive switch it, but very lucky that ball just misses the stumps, isn't it? It's a 23 for the loss of 3 wicket. It's 23 for the loss of 3 wicket. Just we are talking about that award, which is humanity for harmony for the humanities, which is given only because of the last year, the first edition of Nutan Champions Trophy 2023. Just coming back to after this delivery, again edging it down to third man region. There's no chance of any run. One more over completed. Completion of over number 5. So 23 for the loss of 3 wicket. And we are talking about that award which is given for Irshad of NM as well as SK Charan. That's only because of the last season of last edition of Nutan Champions Trophy 2023. One incident which has happened, which is definitely it is unforgettable incident which has happened when Sandeep of challenge bowler, when he tried to take the catch in the cow point region, they're going back, then he was injured very badly and he becomes unconscious, and that time it's a quick work which is required for him to take into the hospital, and that time Irshad of NM Cricketers Mangalore and SK Charan, and definitely they did a great job, especially Irshad is giving oxygen, the artificial oxygen, natural oxygen in fact, and then is taken into the hospital, and Charan is the one who is taking him to hospital by driving his car and getting quick treatment for Sandeep, and is recovered very quickly because of that. So that we are this is a, and definitely the Nutan friends really grateful to the two people for their humanity, and that's why that award is given for the two people, harmony for humanity. This is a very good concept from Nutan friends Urwa, because it's always going to be a lifts the spirit of cricket. Cricket is not all about your performing in the middle, but even after that there will be a lot of things which is we need to be noticed, and this is the one thing. It is absolutely fantastic to watch that humanity from these two people. Now time to change in commentary box as well. I request Mr. Gopi to take over the microphone, the remaining overs of the innings of Team Young Friends Urwa. धन्यवाद सतीश। सो 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और यंग फ्रेंड्स उर्वा का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त रनों के लिए तराशते हुए उनके बल्लेबाज, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त ओवर का, तो छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज की अगेन लॉस्ट इट, दिस टाइम आई थिंक इट्स कुड बी क्लियर डिफेंस, एंड नाउ इज गॉन। इन फैक्ट the ball lost its speed at the last moment and comfortably held just inside defense by the fielder. I think he played that one just against the wind at the last moment, और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए लपक ली गई लॉन्ग ऑफ पर, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। Jalal the man dismissed. Young friends Urwa are now looking in trouble. It's 26 for 4. तो यहां पर विकेट गिर चुका है 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची शॉट मिड विकेट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 overs gone and really the testing time continuing here for the batsmen of young friends Urwa at this situation, and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of NM Mangalore. तो अयाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश, और 4 ओवर का खेल बाकी, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 60 का आंकड़ा, 60 मार्क इस वक्त क्रॉस करना होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा को अगर एनएम के बलाढ्य बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव डालना है। तो ये गेंद स्टीयर किया इस वक्त थर्ड की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज इस वक्त संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 4 विकेट के नुकसान पर मंगलौर के 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच में इस वक्त मुकाबला जारी, यंग फ्रेंड्स उर्वा एनएम और एनएम जप्पू के बीच, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची डीप फाइन लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर। अयाज गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, राजेश इस वक्त स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं। दर्शकों से मैदान इस वक्त भर चुका है और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, इम्प्रोवाइजेशन नॉन टू अ शॉर्ट फाइन लेग, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह एक साझेदारियाना पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है, और प्रसाद जो कि नंबर 3 बल्लेबाज के हैसियत से मैदान पर उतरते यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए अभी तक क्रीज पर डटे हुए एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट पेड इट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। यंग फ्रेंड्स उर्वा इस वक्त एक बेहतर स्कोर खड़ा करने की पूरी कोशिश यहां पर करता हुआ उनके बल्लेबाज ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट तैनात, डीप फाइन लेग, जबकि डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, और अयास दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है। 7 overs completed and still the batsmen of young friends who are searching for the right track. 32 runs they managed to score for losing 4 wickets after completion of 7 overs. Next match, KCC Arkadri will take over Torpedoes Kana. The second semi-final of this competition is now going to play right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. One more good match is now coming up right after this match. और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो एनएम मैंगलोर, एनएम जप्पू और यंग फ्रेंड्स मैंगलोर के बीच में इस वक्त संघर्ष जारी है। मुजीब गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पुश किया स्टेप आउट करते हुए, सेंसिबल क्रिकेट और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा, एब्सोल्युटली सेंसिबल, स्टेप आउट करते हुए 3-4 कदम आ गया है और हल्के से गेंद को वहां पर टैकल कर दिया, टैप कर दिया था, वहां पर हल्के से पुश कर दिया था। ये देखते हुए कि फील्डर जो मौजूद है वही स्पीड ऑन पर थोड़े से पीछे है, मिड विकेट पर भी फील्डर में पीछे है और तेजी के साथ दूसरा रन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे क्रिकेट खेलने में राजेश माहिर है और फील्डरों को विचलित करते हैं वो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के बाद, और गैप पर और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल बेहतर तरीके से राजेश। और
एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। इस बीच अंपायर विवेक जो कि गेंद की परीक्षा यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो पहला सेमीफाइनल मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ अब अंपायर गेंद को लिए वेस्ट स्क्वायर लगा अंपायर हरीश पटेल की ओर बढ़ते हुए गेंद की परीक्षा इस वक्त करने के लिए है। और जहाँ तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा का तो 34 रन इस वक्त बन चुका है, जबकि 7.1 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। 7.1 ओवर कंप्लीटेड इन देयर इनिंग्स, दे मैनेज टू स्कोर 34 रन्स फॉर लूजिंग 4 विकेट। और दूसरी गेंद के लिए इस वक्त मांग की गई है, शायद गेंद में कुछ दरार आई है तो इस वजह से अंपायर ने इस वक्त फैसला किया है कि गेंद को बदल दिया जाएगा। तो उतनी ही पुरानी गेंद इस वक्त अंपायर को इस वक्त दी जाएगी और उस गेंद को बदल जाने के बाद उतनी ही पुरानी गेंद के साथ खेल एक बार फिर से आरंभ होगा। तो अंपायर इस वक्त गेंद को सौंपते हुए गेंदबाज के हाथों में, मुजीब के हाथों में। और खेल एक बार फिर से आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ। राजेश सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। 8वां ओवर शुरू हो चुका है उनकी पारी में। मुजीब इस वक्त सामना करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद राजेश के लिए एक्स्ट्रा विकेट ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंटली। वंस अगेन ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक, सेंसिबल क्रिकेट, just working it away on the onside at the last moment, just बल्ले के मुंह को हल्के से खोलते हुए इस वक्त गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया था ऑफ द टोज डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और 2 रन बल्लेबाज राजेश प्राप्त कर चुके हैं। निस्संदेह ऐसी क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा को। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। वाइड का इशारा, 1+1, 2 runs now added to the total, 38 for the loss of 4 wicket। और जब कभी भी ऐसे स्ट्रोक से बल्लेबाज खेलते हैं तो निस्संदेह जब कभी भी स्ट्रोक से बल्लेबाज खेलते हैं तो निस्संदेह गेंदबाज विचलित हो जाते हैं और कुछ हद तक दबाव महसूस करते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना ओवर द विकेट स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। लेग बाय का इशारा और इस बीच 8वें ओवर की प्रगति यहाँ पर होते हुए और राजेश सामना करने के लिए तैयार। मुजीब की गेंदों का दाहिना ओवर द विकेट, इस वक्त मुजीब यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए राजेश के लिए एक बार फिर से गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, हल्के से गेंद की लाइन से बल्ले को हटा लिया। 1 रन 2 रन मिलेंगे वाइड के रूप में। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, 41 द स्कोर। कम से कम 60 के आंकड़े तक अगर यंग फ्रेंड्स उर्वा पहुंचता है तो निस्संदेह एनएम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में क्या छूट चुका है और बैकअप होता हुआ, लेकिन इससे पहले 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। फॉलो थ्रू में अपने हाथ अड़ाए थे मुजीब ने, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका, 42। So this is turning out to be a good over in young friends Urwa's point of view. 10 runs already scored in this over. राजेश सामना करते हुए इम्प्रोवाइजेशन, फाइन डाउन टू अ फाइन लेग और आतिफ फील्डर, माफ कीजिए रियाज वहां पर फील्डर मौजूद, तो 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। तो संघर्ष इस वक्त जारी है और मुजीब इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, प्रसाद जो कि सामना करने के लिए तैयार, स्वीप किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। एक बार फिर से रियाज पिक्चर पर दिखाई देते हुए 1 रन का इजाफा, 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 8th over has been came to an end. Fantastic over in young friends Urwa's point of view came to an end. 12 runs came from this over and because of this over young friends Urwa now looking in a good situation.
44 for the loss of 4 wicket, and slowly and steadily this partnership is now building up for the 5th wicket between Rajesh and Prasad. 2 overs left in overall calculation in the innings. 2 ओवर का खेल बाकी, और कम से कम इन 2 ओवर में कम से कम 15 से 20 रन भी अगर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज बटोरते हैं तो एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो हमसे दूर वाले छोर से यानी ऑस्टिन मोंटेरो एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज आतिफ, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रसाद, जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए इस वक्त खेलते हुए। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और 9वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज आतिफ तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट, परफेक्ट स्ट्राइक इनटू द गैप एज वेल, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। बैकवर्ड थर्ड बाउंस से फील्डर दौड़ कर आए, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज आतिफ, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन फिर से मिलेगा। 46 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। गुड गोइंग ऑन हियर फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। 10 balls remaining in overall calculation in their innings. कम से कम 1 या 2 करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा अपनी टीम के रन रेट को एक्सेलरेट करने के लिए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, चूंकि विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा, इज गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। आतिफ फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। राजेश सामना करने के लिए तैयार। धीमी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर जस्ट अ सिंगल। 48 बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में जारी रखते हुए आतिफ बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। और प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और प्रसाद का जहां तक सवाल है, इस वक्त 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करता है। इस बैटिंग ऑन 14। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। आतिफ स्वीप करना चाहा, टॉप एज, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। एक बार फिर से 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। ही इज मूविंग ऑन टू 15 नाउ विद दैट सिंगल प्रसाद, एंड सेंसिबल नॉक कमिंग फ्रॉम हिम एट द सिचुएशन। राजेश सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का, और आतिफ इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। राजेश के लिए यह गेंद गेंद को इस हल्के से फुल टॉस गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था। 2-3 कदम आगे की ओर आए, और जैसे ही देखा कि गेंद फुल टॉस के तौर पर उनकी ओर आ रही है, हल्के से गेंद पर बल्ला उड़ाते हुए गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। 50 कम्स अप फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। 50 came in exactly 9 overs for losing 4 wicket with just a last over remaining in their innings. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು। तो इस बीच स्कोर रुक चुका है 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। मुजीब इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। राजेश सामना करने के लिए तैयार। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। दर्शकों से मैदान इस वक्त भर चुका है, और मैदान खचाखच तो नहीं लेकिन भर चुका है जरूर। खचाखच यानी जंप पैक स्टेडियम, लेकिन यहाँ पर जंप पैक स्टेडियम होने के लिए कुछ वक्त और गुजरना बाकी है। और इस बीच ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लॉस्ट इट दिस टाइम आई थिंक चांस एंड टेकन बाय अजहर। उछाला था लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे इस वक्त। अजहर उन्होंने कोई गलती नहीं की। 5वां विकेट गिर चुका है। इट्स 50 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट 5 balls left in their innings, and a good innings came to an end from Rajesh. 50 for the loss of 5 wicket for young friends Urwa. तो एक बेहतर पारी राजेश की समाप्त हो चुकी है।
12 रन उन्होंने बनाए. He scored 12 runs into his credit. और अंपायर ने इशारा किया कि स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय यहां पर समाप्त हो चुका है. तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया जाएगा. तो सिर्फ 4 मात्र खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के अंदर बाहर मौजूद. तो नए बल्लेबाज शकीर, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और मुजीब की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. मुजीब अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. अगली गेंद मुजीब टू शागिर. Reverse shot, improvisation, finds the gap as well. This time this could be gone over the just we have to wait and see. And this time I think he's got a problem on his leg. ऐसा कहना पड़ेगा, उनका पैर ट्विस्ट हो चुका है यहाँ पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है या नहीं देखना पड़ेगा. सारे खिलाड़ी इस वक्त इन क्रिकेटर्स के उनकी ओर दौड़ते हुए और वो खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर इस वक्त बैठे हुए हैं. तो यहां पर उस खिलाड़ी का उपचार यहां पर करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. अंतिम क्षण में गेंद को अपने पैर के जरिए रोकना चाहता और इस प्रयत्न में शायद उनका पैर तिरछा गया. हिज लेग वाज ट्विस्टेड और इसकी वजह से उनके पैर में कुछ हद तक मोच आई है और वो दर्द, कुछ हद तक दर्द इस वक्त महसूस करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. रियाज जो कि खिलाड़ी थे वहां पर जिनके पैर पर इस वक्त मोच आई है और टीम के अन्य खिलाड़ी उनका इस वक्त उपचार करते हुए. एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, वन मोर बिग मैच इज नाउ कमिंग अप. KCCR Kadri will takes over Torpedoes Kana in the next match. Second semi-final will be played right after this first semi-final match. And because of that, I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. It's a boundary. It's a boundary declared by umpire. और 4 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं शकीर. बेहतरीन तरीके से गेंद को इम्प्रोवाइज करते हुए खेला था इस वक्त. फाइन शॉट थर्ड फील्डर की बाईं ओर से 4 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और 10वां और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. 4 गेंदे अब बाकी उनकी पारी में. जस्ट 4 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. और थर्ड टाइम इन दिस ओवर. मुजीब काम्स. शागिर सामना करने के लिए तैयार. पिछले गेंद पर चौका प्राप्त करने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए सामना करते हुए इस वक्त यह गेंद लेग स्टंप से बाहर. एक्स्ट्रा पिकर गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल की दिशा में. 1 रन मिलेगा और इस बार शायद गेंद इस गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. डिफ्लेक्शन हुआ था और 1 रन का इजाफा. एक्स्ट्रा पिकर गेंद थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर. इट्स 55 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 10th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज फिर से एक बार मुजीब गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. पैरों पर गेंद टकराई. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर जहां पर स्वयं मुजीब ने जाकर गेंद को फील्ड कर लिया गेंदबाज ने, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए. 56 रन बन चुके हैं अब तक. 56 रन बन चुके हैं तो 5 विकेट गिर चुके हैं और गेंदें बाकी है इस वक्त सिर्फ 2. और मुजीब एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट शागिर के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, लेकिन ये बार विकेट गिर चुका है. निशाना दागा फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद मुजीब ने और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ स्टंप्स पर. 56 for 6 with just a last ball to go now in their innings.
तो इस वक्त प्रसाद उनकी पारी के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और मुजीब गेंदबाजी करेंगे प्रसाद के लिए. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. मुजीब टू प्रसाद. इस बार चूके फाइन लेग की दिशा में फाइन निकल चुकी है इस वक्त गेंद. एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. विकेट रन सेकंड पर थ्रो पहुंचा लेकिन 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. स्ट्राइकर रन पर थ्रो करते तो शायद यहां पर मंसूर के लिए कुछ मौका हो सकता था, लेकिन थ्रो जब तक नॉन स्ट्राइकर रन पर पहुंचा वहां पर कोई बैकअप नहीं. दूसरे फील्डर जब तक गेंद को बैकअप करे, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. सो द इनिंग्स इज अप. सो यंग फ्रेंड्स उर्वा started slowly, progressed slowly, but finished well with 58 for the loss of 6 wickets after the completion of their 10 overs. And now they set a competitive target of 59 in 10 overs for NM Mangalore. 59 they have to score with the help of 10 wickets. The present equation for them in their stipulated 60 deliveries. That means they are stipulated 10 overs. And let's see can they reach the target or not. 59 they have to score. और मैं समझता हूँ एक चुनौती भरा स्कोर है इस वक्त एनएम मैंगलोर के सामने यंग फ्रेंड्स उर्वा ने जो रखा है. और उनके गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक घातक गेंदबाजी करते हैं. तो निस्संदेह एनएम मैंगलोर के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव आ सकता है. लेकिन जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की उन्हें जरूरत है और अपने बलाढ्य बल्लेबाजी के लाइनअप के जरिए 59 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो उनके सलामी बल्लेबाजों को एक बेहतर प्रदर्शन देना होगा. उनके आरंभिक बल्लेबाजों को, ओपनर्स को एक बेहतर प्रदर्शन देना होगा. खासकर 3 ओवर पावर प्ले का जो है उसका उन्हें फायदा उठाना होगा. देखते हैं क्या होता है. 59 रनों का 59 टारगेट. उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब यहाँ पर मैंगलोर की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. So welcome back. Thank you very much, Gopi. So 59 is going to be a target for team NM Cricketers Mangalore to qualify for the semi-final of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. And I think little correction to get the place in the final. This semi-final is going on,
And after this, second semi-final will be played between Gori Young Boys versus KCCR Kadri. And NM Jippo Young Friends Urwa. They are now definitely desperately wanted to get in the final of this prestigious cricket tournament. The semi-final is on, and opening batters quite a bit of a change in opening pair for in this match. And NM Cricketers Mangalore sending Mansoor to open the innings, and along with the Mansoor, Tawfiq just came into bat here. So wait and see. It's a promotion up in the order for Mansoor. How much it going to help team NM Cricketers Mangalore? But maybe the NM Cricketers Mangalore has got a strategy that in the previous match, when they're chasing 49 to win the match, they struggled against Mangalore Cricketers, isn't it? And that only because of in the first 3 overs, in that first 3 overs of the power play, they fails to get the runs on the board. So that's why they're a little bit struggled. So that it doesn't want to lose this power play over. So that they wanted straight away, they wanted to put some pressure onto the bowling department of Young Friends Urwa. And that's the reason behind that Mansoor has been promoted up in the order to get the advantage of the power play. And it's absolutely going to be a very good contest between these two very good teams. So from the far end, that means Austin Montero as well as the D'Souza family bowler Urwa end. The first ball, full toss delivery. Tawfiq suddenly it misses the golden opportunity. But that ball is certainly surprised the batsman, isn't it? When you're playing your first delivery and the first delivery of the match, the batsman not really expecting that full toss from the bowler. That's why he's not ready to play that sharp full toss. That's why he missed it. And no time has done. Ashad balls of again. This time I wanted to go for the expansive switch it Tawfiq, but he missed it completely. Quite deliberately Ashad bowled that one outside the line of leg stump so that he can beat the bat of Tawfiq, and there is no chance at all for anyone. 2 dot deliveries to start with Arshad. Again from the far end. Left arm. Down the wicket. Drives. Beautiful drive. Down to deep cover region. Shagir behind them. Oh my goodness. Absolutely sloppy fielding there by the Shagir. I'm not really understood sometime the youngster why you are there putting their legs. If you're having 2 hands, your job is to put your 2 hands on the one hand. But if you try to get the foot behind the ball, it need to be very accurate, isn't it? You need to be very accurate to that. You need to put your feet in the line of the ball. If you miss that one, then very difficult for you to chase the ball. Absolutely poor piece of fielding there by the fielder. What could be a couple of runs? That boundary will give a lot of confidence for Tawfiq, because he's just wanted to break the shackle. But exquisite cricketing stroke, I want to say there from Tawfiq. Plays it quite nicely between cover and extra cover. And he got 2 runs for that. This time sensible batting, pushing and running. The fielder is charging from the cover point region to stop the single. But batter has got ample time to complete the single. With that single, score moves on to 5 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Arshad really not happy with the effort of the fielder. And the boundary which is considered is going to be very costly in this condition. And Arshad again bowls. This time helicopter shot, what Mansoor loves to play. They come back for the second, and this is not a good thinking by the fielder Aman. It's not a good thinking, I want to say, because it's going to be a long distance, isn't it? When you are try to return the ball towards the striker's end, it's long distance, as well as the ball which is not really having that much of weight, so throw which is not really coming quickly to the hands of wicket keeper. It's a perfect end to return towards the non-striker's end, and Mansoor got a start here, and he got a couple of runs, and scoreboard now moves on to 7 without loss of any wicket. Arshad again. Just that ball almost close to the off stump, and Mansoor survived from the delivery. First over completed. Completion of over number first. NM Cricketers Mangalore has got a very good start. 7 is always going to be a good run in this format of our games. 7 without loss of any wicket. Still, they have got 9 overs to spare, and 52 more runs required for the victory. The 54-52, what equation we are talking about?
The 59 which is going to be a target. The 7 on the board without loss of any wicket. NM Cricketers Mangalore against the Young Friends Urwa, so known as arch rivals. Young Friends Urwa in this season, one or two tournaments they are able to lift the titles. The big titles for Young Friends Urwa is that in the RRP Memorial Trophy, without having a complete potential in their team, but they managed to reach to the finals. And KCCR Kadri register as well as Young Friends Urwa, they came into the finals of RRP Memorial Trophy, and once they become the champion in the limited over matches. And NM Cricketers Mangalore also, they got a fantastic season, 22-23. Now Shakir brought into attack, right arm over the wicket balls. This time up and over, down to deep extra cover region. Fielder situated for the right position for that stroke of Taufik. Catch has been taken there by the fielder in the deep. Looks like among the fielder there in the deep extra cover region completes the catch. Taufik departs. It's 7 for the loss of 1 wicket. Nothing wrong with the stroke, I want to say. Taufik played an exquisite extra cover, lofted extra cover drive, but placement is not good enough. The placement is not good enough here for the batter Taufik to get the distance, but he is finding himself short of his target. The 7 for the loss of 1 wicket. His new batsman just walking towards the middle. Looks like number 6 Zaid. Azim, I think so, not Zaid. Azim, yes, Azim is a new batter in. One more talented batter and very useful cricketers, and still remember his innings, which is when he played in Bajal ground, the Bajal Champions Trophy. He played a very good innings for his team. And now it's a Sagir to ball to Azim. What a shot! Magnificently driven down to deep extra cover region, but at the same time fantastic piece of fielding by Prasad. He is absolutely born athletic. The way that he runs back is unbelievable. The more than the speed of the ball which is travelled, then the speed of that fielder has been outstanding to chase that one just inside the boundary line. Perfect cricket we are witnessing. 9 for the loss of 1 wicket. Again checking the stroke in the last moment. That ball is coming into the batter. Azim quite hardly faced that one. It's not what kind controlled or intended cricketing stroke, but he managed to get a single there. With that single, scoreboard moves on to double figure 10 for the loss of 1 wicket. It's a 10 for the loss of 1 wicket. Again Shagir. Balls to Mansur. Mansur wanted to play that reverse stroke, one of his favorite and signature stroke. He played that cricketing stroke in Nehru Maidan against Santosh. There's some tries that one. Oh, there's some diving effort there from the fielder, but not good enough. Not good enough from the fielder to stop the single. The one more single has been taken there. With that single, scoreboard numbers on to 11 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. I think the Jalal, the fielder down at short mid wicket, diving to his left to stop that one, but he missed it completely. Shagir drives, beautiful stroke down to deep long off, but just a single here for Azim. The runs are coming very freely. Even the wickets have fallen after completion of over number 2. It's 12 for the loss of 1 wicket. NM Cricketers Mangalore this time doesn't want to lose this match. They know exactly the run rate required here. They're just concentrating about the run rate. They're not missing a single delivery to rotate the strike. It's 12 for the loss of 1 wicket. So next match, it's going to be a second semi-final. Torpedoes Khana versus KCCR Kadri.
so that I request all the players of both the teams to be reported here immediately to sign the official chart. So 12 for the loss of 1 wicket. Now, just coming back to the equation, the 12 which is deducted from 59, that means 47 more runs required for the victory in 48 deliveries. That the equation looks to be very equal. The match is anybody's game. It's going to be anybody's game. The very good number of crowds are enjoying the game of cricket under the shadows of the tree in this hot condition. This time lofted, what a shot, what a shot, one bounce into the fence for 4 runs, magnificently played there by Azim. I just mentioned he can surprise everyone. The kind of cricketing stroke he played in this particular cricketing stroke, absolutely sweet sound. Instrumental sound came from the bat of Azim once the ball which is has a contact with the bat. Off volley, the ball which is came in off volley, and batsman just waiting for that one. You know exactly where the fielder is. No one there in the deep in the offside region, and you can't bowl that off volley when you are not having any protection in the deep, and especially when you are bowling to the caliber of Azim, it's been a very little margin for error. The 16 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Arshad back to his bowling mark. Bowling left arm around the wicket. This time one more. What a shot! This is a beautiful and glorious shot. We just wait for the umpire signal. Now umpire Adesh Patel lifting his 2 hands. That is a maximum. What a fantastic struck. Absolutely. Just like a stroke from the cannon. Unbelievable struck, isn't it? The way that he shuffled across the line of the delivery, across the line, swinging his bat, and he got the distance for that. It's absolutely, it's as far as the dimension of this cricket ground is concerned, it's one of the longest part of the ground. Again, wanted to drag that one outside the run of off stamp. This time, Arshad did the right job, that is bowled a slower one, because the batter always loves to come ball which is coming very quickly to the bat. When a stroke maker like Azim, he really enjoyed that quicker delivery from Arshad, so that he bowled a slower one. So 23 for the loss of 1 wicket. The over number 3 is in progress. This time opportunity, and is taken. Mansoor looks like that bat which is stuck in the ground, and that's all happening when you are trying to hit the ball pretty hard. Then last moment he wanted to check the stroke. Then bat which is stuck in the ground, and top edges which comes into play. That mid off fielder takes a comfortable catch. The wicket number 2 is back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. It's 23 for the loss of 2 wicket. So 23 for the loss of 2 wicket, and runs came in this over, and it is a huge runs in this format of a game when you are conceding boundary and a 6 in 1 over. Ayaz is on strike now. The first ball, this time ball is in there for a while, and Rajesh, who is charging from the third man region to take the catch, but ball just falling short of him, and the batter has got opportunity to complete the single. It's 24 for the loss of 2 wicket. The over number 3 is in progress. The last over of the power play is in progress.
Now once again Azim is back on strike, so that mid-off is going back to deep long off. Mid-off is going back to deep long off. Now wait and see what Azim will going to do here. The last ball, last direction, Arshad balls outside the run of off stamp and checking the stroke in the last moment. And last delivery, which is dotted delivery, but productive over for NM Cricketers Mangalore, even though the wicket of Mansur, which is fell in this over, but still I think NM Cricketers are looking in a control. It's 24 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 8 runs per over. Now 35 more runs required for the victory, and they got 42 deliveries to spare. The 42 deliveries to spare, and 35 more runs required for the victory. The run rate required is exactly 5 runs per over. The run rate is 5 runs per over. Once the beginning of the match, beginning of the innings, it's 5.9. The run rate required. Now it's coming to exactly 5 runs per over. That's only because of a big over, huge over the previous over, where Azim hitting 1 6 and 1 boundary. Then all in sudden the run rate required, which is coming down. So Karthik is a bowler who can be very handy in this situation if he bowls a good line and length. Bowling left arm from the wicket. First ball he wanted to turn that on the onside region. They're going for the quick single. Prasad might be trying for the run out, but quickly realizing that there is no backup. So if he misses the stumps, then it's going to be one more run for the opposition team, so that he is not interested. It's 25 for the loss of 2 wicket. 34 more runs required for the victory. Karthik have to produce one good over here for young friends who they wanted to back in the game. This time again wanted to push the ball in the offside region, but fails to collect. It's a 25 for the loss of 2 wicket. Again, this time straight to the answer field. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement, isn't it? And he's back into pavilion. Azim slight a bit of an aggressive frame of mind. After that, he hit 1 boundary and a 6 in the previous over. But you need to see that from that end, it's not easy. From the far end, getting the distance is always going to be the big ask. He just pays the penalty for that. It's 25 for the loss of 3 wicket. When things are slowly turning out for NM Cricketers Mangalore, now young friends who knows that wicket taking over, which is much required for them to back in the game. So they're able to put some pressure to the incoming batters now. It's 25 for the loss of 3 wicket. The over number 4 is in progress, and Karthik produced a vital breakthrough here for young friends Urwa. So Santosh Senior is not representing in this young friends Urwa. Might be a slight bit of useful condition for the bowler like Santosh Japu. Now 4th over is in progress now. But I think Karthik can be the very effective. I already mentioned the one of the wicket taking bowler for team young friends Urwa. Karthik, if he bowls a good line and length, left arm. Oh, this time is plum. This time is a plum in front of wicket. No doubt at all. He shuffled across the line of the delivery. Ball is hitting his back leg. And umpire Vivek has got no hesitation in his mind, raising his finger. And is back into pavilion. It's 25 for the loss of 4 wicket. This is what I'm talking about. The Karthik might be effective. That's why I'm talking about as a Santosh Japu I'm talking about is might be missing here. Otherwise going to be the useful condition for the bowler like the cutter bowlers like Karthik, with the way that he is getting some extra movement and extra help from the ball. And first ball itself, Atif, the captain of the side, out for golden duck. It's 25 for the loss of 4 wicket. The face of the game is slight a bit of changing here.
maybe the NM cricketers in Mangalore, after getting a very good momentum, they're just losing their momentum because of the 2 wickets, which is quickly back in the pavilion in this particular over. The over of Karthik is producing a 2 vital breakthrough. That means he's on hat-trick. The Karthik is on hat-trick now. So far there is no hat-trick. 5 to 6 bowlers who taken 2 wickets in the 2 consecutive deliveries but fails to get the hat-trick. Now here is a Karthik has got opportunity to get the hat-trick here. But Riaz, Lukasan Asif is the man. Now walking towards the middle. One more very useful cricketer, experienced campaigner for NM Cricketers Mangalore came to the middle. So Karthik with the hat-trick delivery. Bowling away from us, left arm. Oh, that might be the outside the line of off stump, the impact of the line, the sharp incoming delivery. That I think Asif is survived because he's shuffled across the line. He's just coming towards his off stump, outside the line of off stump. That's why he managed to survive, because there's a big off cutter there from Karthik coming into the batsman. And it's 25 for the loss of 4 wickets. Over number 4 is in progress. Fantastic. The match is in progress. This time pedaled at one top edge. But ball which is not carried to the fielder, because ball which is landed between a deep square leg and a square leg. One more addition. Fantastic over there from Karthik. The kind of over is badly required for young friends Urwa. When it was an expensive over ball by Arshad in the far end. Now Karthik produced a very important over. But still looks like the 26 for the loss of 4 wickets. A good run on the board for NM Cricketers Mangalore. But they only bother about that they lost 4 wickets. 33 more runs required for the victory in remaining 36 deliveries. 36 required from 33 deliveries. The match is evenly poised. It's going to be everybody's game. Asif, 33 required deliberation of 36 balls. So 36 delivery remaining and 33 runs required for the victory for NM Cricketers Mangalore. The bowler is introduced. Looks like the new face from the far end. So from the Austin Montero and the D'Souza family and the bowling chain. And for Asif, there is a fielder in the deep long off, one at deep long on. The fielder down at backward point. The one fielder down at mid wicket orthodox. One fielder at square leg behind the square between fine leg and square leg. Here is the first ball. This time, oh my goodness, they're going for the run. They're going for the run. Ayaz wants a run, but Asif doesn't want. It's quite surprisingly, because it's a full toss delivery. I want to know the name. Umpire, please, I want to know the name of the bowler. Guru. Thank you. So Guru is the bowler, and introduced by the captain of the side. This time across the line, swings that one, missed it completely. Maybe Asif wanted to disturb the concentration of the bowler by shuffling across the line up delivery. Try to swings that one on the mid wicket region. It's not a bad idea. Whenever playing in this side, you can get opportunity to get the big shot by the direction of the wind. That's why Asif shuffled across the line of the delivery to get a big one. But Guru is not providing the opportunity here. 27 for the loss of 4 wickets. Guru boss nicely pedaled that one. Ayaz is so good in that particular cricketing stroke. That's why he's going to be a very key player now for NM Cricketers Mangalore. If he goes on bat in the middle, its goal is going to be a trouble for the opposition team. It's 28 for the loss of 4 wickets in the over number 5 is in progress. What a match is we are witnessing here. 31 more runs required for the victory in 33 deliveries. This time swings, top edge, opportunity for the fielder. Shakir going back and takes a catch. Huge wicket here for young friends Urwa. Guru strikes. Asif is trying for many times in this over. Then he wanted to get a one big shot across the line. He tried to swing that one, but it's not an easy wicket to bat on. I already mentioned. Of course, Asif has got a big shot, a 2 big shot, but not like everyone. It's not an easy wicket to bat on.
And it's definitely going to be a match is evenly balanced now. It's 50-50 now. Because the 5 wickets which are back in the pavilion of NM Cricketers Mangalore. But the hero of the previous match yet to come. And what we are talking about, Riaz is a man who has changed the complexion of the game against Mangalore Cricketers. He is now kept in the down in the order. Now still he is not coming to the middle. That may be the reason behind that. Riaz has been a little bit got injuries while he is tried to stop the boundary. So that looks like it's going to be a big impact in this match. If Riaz fails to come to bat here, then it's going to be a big loss here for Team NM Cricketers Mangalore. New batsman in is Irshad. There's one more experienced campaigner for the side of NM Cricketers Mangalore. Let's wait and see how he is going to handle the pressure. Guru to ball. Nicely swept that one down to square leg, fine leg region. But while trying to get a second run here, Irshad looks like the bat which is stuck in that non-striker's end. It's slight a bit of a problem here. The plenty of injuries we are witnessing here. After Riaz has got of injuries. It's a 29 for the loss of 5 wickets in the over number 5 completed. And it's an equal battle is on. Still they have to get another 30 runs to this match. And in the remaining 30 deliveries, they got a 5 wickets in hand. And Gopi. So now looks like now he's in trouble. The spray what a quick relief spray they're asking for. Looks like after that the relief spray and looks like Ashad slight a bit of is comfortable. Looks like he's very comfortable now. And Gopi 29 for the loss of 5 wickets. Equal battle is on, isn't it? At one stage when Azim hits one boundary and a 6 of the bowling of Arshad, looks like it's going to be easy for NM Cricketers from Mangalore to win this match. But after very next over, Karthik came in and picked up 2 valuable wickets of NM Cricketers Mangalore. And the previous over also, Guru picked up 1 wicket, the wicket of Asif Adur. And because of that, I think this match is now going to be very interesting. It's going to be anybody's game. So Guru is not yet to complete and last ball remaining. It's not a 5, I am talking about 5 which is not completed. It's a 29 for the loss of 5 wickets. Guru has got a last delivery. And Ayaz is on strike, almost covered his stamp. This time, oh, what a job! Magnificent! This is an outstanding, I want to say that from Rajesh Hubar. Oh my God!
Gopi, whether he's playing cricket or volleyball, I don't know, but it's just like a volleyball tap. And the way that he's made his run out is unbelievable. Just I want to see it in the replay. The way that just have a look at that one. Absolutely unbelievable. I'm not really getting a full picture of that in the screen, but Gopi, it's only Rajesh can do that, isn't it? He is unbelievable in the field. The way that he's tapped the ball, I think is collecting the ball and throwing the ball. It takes a few seconds to return the ball, but tapping the ball went straight to the hands of Santosh, and the batsman shot off his crease. It's an outstanding run out done by an unbelievable, a rare occasion. We are seeing that kind of volleyball run outs, and Rajesh has got a huge wicket. A wicket of Asher is back into pavilion. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर जिस तरीके का रनआउट किया था राजेश ने, काबिल तारीफ है। जैसा वॉलीबॉल सर्व को जो रिटर्न करते हैं उसी तरीके से गेंद को ढकेला था उन्होंने, और उनका बिल्कुल ढकेला हुआ थ्रो सीधे विकेट कीपर संतोष के हाथों में पहुंचा, और संतोष को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई यहाँ पर आउट करने में। तो चतुर सोच, और ऐसा काम सिर्फ राजेश ही कर सकते हैं। काफी चतुर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर इस रनआउट के बदौलत अब एनएम क्रिकेटर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल. At one stage, they were 24 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs, and a fantastic comeback made by the bowlers of Young Friends in the last 2 overs, conceding just 5 runs and captured 4 wickets of NM Mangalore. छठा ओवर प्रारंभ होता हुआ शेयर किया, पहली गेंद इस वक्त जाती हुई पॉइंट पर। 30 गेंदों में 30 रन चाहिए, अब 29 गेंदें बाकी, 29 रन चाहिए। 29 to get from 29 balls, just 4 wickets they got in their hand. What a fantastic match is now progressing here. और यहाँ पर अरशद, माफ कीजिए, इस वक्त अजहर सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, रियाज कुछ हद तक चोटिल हो चुके हैं। वहां पर डीप थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते समय कुछ उनके पैरों पर क्रैम्प आए थे, तो इस वजह से वो अब तक बल्लेबाजी पर नहीं उतरे हैं, लेकिन उन्हें लोअर ऑर्डर पर बल्लेबाजी के लिए रखा गया है। और यहाँ पर कुछ हद तक रणनीति जरूर होगी एनएम मैंगलोर के कप्तान की, उन्हें तो थोड़ा सा देर से इस वक्त भेजा जाए। तो यहाँ पर अजहर आ चुके हैं, और अजहर के साथ है इस वक्त अयाज, जो कि नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज कार्तिक की ओवर की अगली गेंद का। 29 टू गेट फ्रॉम 29 बॉल्स। दर्शक लगभग मैदान पर इस वक्त भर चुके हैं। शाम का वक्त 4:15 यहाँ पर बच चुके हैं, और एक हाई वोल्टेज मैच यंग फ्रेंड्स उर्वा और एनएम मज्जप्पू के बीच में यहाँ पर खेला जाता हुआ मैच इस वक्त बराबरी पर आकर रुक चुका है। और कार्तिक बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स, इस बार गेंद निकली थी ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर, लगभग 1 या 2 इंच दूरी पर, और अजहर का भाग्य यहाँ पर उनका साथ देता हुआ, और यहाँ पर निस्संदेह अजहर बाल बच चुके हैं। तो बेहतरीन गेंद थी इस वक्त कार्तिक की, और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट कार्तिक का। ये गेंद इस बार अजहर के लिए ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, मिडल का खतरा, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो पहुंचा, और यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। अयाज के लिए खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है। थ्रो पहुंचा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट कीपर द्वारा, विकेट कीपर ने विकेट चटका है। और देखने वाली बात यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे, जब अयाज का बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं, और यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर सतीश अगर ये विकेट गिरता है तो निस्संदेह एनएम मैंगलोर के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Of course, cricketers Mangalore desperately wanted to see that Startup not going to out for that, but at the same time, young friends who desperately wanted this man. But one more drawback here for NM cricketers Mangalore, the hero of the previous match, Riaz, is not looking fit. Otherwise, he can be the man who can come in front, but he is not coming yet, means he is not fit enough. But wait to see, Gopi, the kind of decision we are just coming from the third umpire. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर देखते हैं, इज गॉन, अयाज इज बैकिंग टू पवेलियन, 100% नॉट फिट। रियाज को इस वक्त उतरना होगा क्योंकि उनकी जरूरत है इस वक्त। पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी और मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाफ विजय दिलवाए थे। अब यहाँ पर वो मैदान पर
उतर चुके हैं और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा दिस इज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पैर। इस पैर के ऊपर एनएम क्रिकेटर्स की विजय यहाँ पर निर्भर है। बिल्कुल प्रेशर और दर्द को किस तरह महसूस कर पाते हैं देखना पड़ेगा। इस बार बेहतर गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए मे बी इट्स टू हाई, लिटिल बिट हाई आई थिंक सो। और गेंद इस बार रन मिलेंगे एक, तो यहां पर एक रन जुड़ चुका है और इस वक्त यहां पर रियाज से सामना करने के लिए तैयार। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, दबाव और दर्द दोनों को इस वक्त झेलना होगा उन्हें। और यहाँ पर देखते हैं वो किस तरह यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। लेकिन क्षमता, एबिलिटी उनमें जरूर मौजूद है एक बेहतर पारी खेलने की इस दर्द के बीच में भी। तो इस दर्द के बावजूद और यहाँ पर गेंदबाजी इस वक्त कार्तिक आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार रन नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ 23 for 2 at one stage, 31 for 7 now, and this is an absolutely tremendous comeback made by the bowlers of young friends Urwa। और यहाँ पर बंधनों को तोड़ना है, just breaking the shackles। इस वक्त एनएम जप्पू को एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी। और इस बीच गेंदबाज कार्तिक इस वक्त तैयार था, बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक, जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक। इस बार चूके हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा रियाज इस वक्त प्रेशर ऑफ करना चाहते थे लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों। तो बेहतर ओवर की समाप्ति, कार्तिक के 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गॉन, 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट एंड 28 रिक्वायर्ड in remaining 24 deliveries and the first time the asking run rate is now gone up to exactly 7 runs per over। और यहाँ पर 28 रन बनाने 24 गेंदों पर उतना मुश्किल नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। But the main question raises about the wicket, they got only 3 wickets in their hand। क्यों सतीश? Well, Gopi, absolutely you're right. Talking about the wickets which is remaining, these are 3. It's not a question of how to get to 28 runs and 24 balls. Maybe it's manageable, Gopi. But just like losing 1 wicket here, then it's going to go all over for an epic this match. Of course, the next to come is Faisal. He can bat as well. He cannot underestimate his potential because in the last tournament he played a very good innings for his team when everyone is paid. So it's not that cricketers Bangalore they got till 9 till 10 they got a batting potential. That's even the entrance who knows that there are not chance to relax here because but only they relax after getting 3 wickets only they can win the match. Until I think the match which is not yet over because this is cricketers Bangalore and of course it's going to be a fantastic scenario. The kind of the competition what we didn't want to watch here and the same competition is going on. It's going to be anybody's game. But the entrance is first time looking in our hand. बिल्कुल सतीश, और यंग फ्रेंड्स उर्वा का तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ और इस बीच ओवर की पहली गेंद शागिर गेंदबाजी शुरू करते हुए संचय बल अपनाते हुए इस वक्त 1 रन के लिए दौड़ पड़े और इस वक्त शॉर्ट कवर तक पर जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, 27 रिक्वायर्ड, 23 बॉल्स रिमेनिंग। रियाज बैक ऑन स्ट्राइक और तो इस वक्त गेंदबाजी शागिर इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए इस वक्त ठहर चुके हैं। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, स्वीप किया इस वक्त टॉप एज लेकिन कुछ ज्यादा गेंद उछाल नहीं लेती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, रन्स मिलेंगे 1। स्ट्राइक इस वक्त रोटेट करने होंगे हर गेंद पर एनएम जप्पू के ये दोनों बल्लेबाजों को अगर उन्हें मंजिल की ओर बढ़ना है। तो जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए डॉट गेंदे और खासकर इस जोड़ी को उन्हें यहाँ पर तोड़ना होगा, यहाँ पर अपना पलड़ा अपना तख्ता मजबूत करने के लिए। और इस बीच शागिर दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट,
द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और एक बार फिर से शगीर गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 3 गेंदों में 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं। 21 बॉल्स लेफ्ट, 25 more runs now they have to score for victory. It could be anybody's game at this situation. और शगीर एक बार फिर से तैयार रियाज के लिए, इस बार टॉपेज और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। रियाज इज बैकिंग टू पेविलियन। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर पैडल स्कूप खेलना चाहता। द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस, टॉपेज पर टकराई। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर अरशद ने कोई गलती नहीं की और अरशद का यह कैच इस वक्त रियाज को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है और यह विकेट का पतन निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा सतीश एनएम जप्पू के विजय के उम्मीदों को काफी हद तक कम कर चुका है। Looks like NM cricketers Mangalore now one day the miracle batting which is definitely required for them but Gopi Azhar is there, still is there in the other end and he is going to be a very dangerous batsman as well as winning the matches for NM cricketers Mangalore is concerned. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। ये गेंद इस बार पैडल स्वीप, इस वक्त गेंद को फैसल ने खेल दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर। और बिल्कुल सही बात आपने कहा सतीश, अजहर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और ऐसा देखा गया है अजहर इससे पहले भी कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं, अंडर प्रेशर खेलने में वो माहिर है और यहाँ पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी वो खेलने की क्षमता रखते हैं और यहाँ पर जरूरत है उनकी टीम को एक बेहतरीन बल्लेबाजी की और यहाँ पर देखते हैं अजहर अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल यंग फ्रेंड्स का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ और एक बेहतर कैच यहाँ पर अरशद ने लिया था सतीश, अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए रियाज को पेविलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। दाईं ओवर द विकेट शगीर की गेंद, यह गेंद इस बार अजहर के लिए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, गेंद को खेला राजेश, गेंद को रोकने में सफल। 20 गज के दायरे के बाहर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड 7th over has been came to an end. One more good over in young friends Urwa point of view came to an end from Shagir. 36, 23 required, 18 balls left, just they got 2 wickets in hand. और एनएम जप्पू अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा उनके बल्लेबाज को एक रास्ता इस वक्त तय करना बाकी, डेस्टिनेशन को अगर पहुंचना है तो मंजिल तक अगर पहुंचना है तो यहां पर देखना यह है कि अगला ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। रिफवान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए दर्शकों से लगभग मैदान यहां पर भर चुका है और नूतन फ्रेंड्स क्लब उर्वा मंगलूर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है दिवंगत ऑस्टिन मोंटेरो इनकी मधुर याद में और यहां पर एक हाई वोल्टेज मैच यहां पर प्रगति पर मुकाबला जारी है मंगलूर के 2 प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस टीमों के बीच में, यंग फ्रेंड्स उर्वा और एनएम जप्पू के बीच में। पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस बार कदमों के सहारे गेंद पहुंची शॉर्ट स्कोर लेग पर ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ರಿ ತಂಡದ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ और 37 रन यहां पर बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर और 22 रन इस वक्त चाहिए। 22 रिक्वायर्ड, 17 बॉल्स लेफ्ट और अजहर इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद फैसल के साथ जो दूसरे छोर पर मौजूद है स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार और नहीं माफ कीजिए अजहर नॉट ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, स्ट्राइक इस वक्त फैसल के पास और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिफान दाइनाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाइनाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में क्लीन कलेक्शन फंबल, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को मिलेंगे सिर्फ एक, दूसरा रन लेना नहीं चाहा और 1 रन के साथ 2 स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 21 नीडेड, 16 बॉल्स लेफ्ट और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो रिफान
इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और अरशद जैसे स्ट्राइक पर आए, माफ कीजिए, अजहर जैसे ही स्ट्राइक पर आए, यहाँ पर फील्डिंग में जमावट की गई है, फील्डिंग में तब्दीली की गई है और अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एट लेकिन नहीं, गेंद यहाँ पर टिप्पा खाती हुई स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और इस बीच अजहर इस वक्त बच चुके हैं, एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 39 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 8 ओवर इन प्रोग्रेस और कुल मिलाकर इस ओवर में 3 गेंदे फेंके जा चुके हैं। 20 रिक्वायर्ड, 15 balls left, 2 wickets they got in their hand और निश्चित रूप से द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, बराबर का टक्कर इस वक्त जारी और इस बीच गेंदबाज रिफान गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यंग फ्रेंड्स उर्वा के दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज करते हुए इस वक्त रिफान, ये गेंद इस वक्त फैजल के लिए डॉट गेंद को स्वीप करना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को देखा कि ऑप्शन से बाहर की ओर निकल रही है, गेंद को छोड़ दिया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और जहां तक सवाल है स्कोर इस वक्त 20 रन और चाहिए, 14 गेंदें बाकी। अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय यहां पर समाप्त हो चुका है, स्टिपुलेटेड टाइम इज नाउ कंप्लीटेड और एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो इस वक्त देखना यह है कि क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ 4 फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद, ठीक सीमा रेखा के पास और इसका देखना यह है कि क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज इसका किस तरह फायदा यहां पर उठाते हैं। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और गेंदबाज रिफान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर खेलना था, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, एक मात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। 40 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 19 नीडेड एंड 13 balls left in their innings. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. दर्शकों के दिल की धड़कनें यहां पर तेज होते हुए और यहां पर बराबर का संघर्ष जारी है मंगलूर के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस 2 टीमों के बीच में इस पहले सेमीफाइनल मैच में विजय दर्ज करने के लिए इस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रिफान और सामना करते हुए इस वक्त अजहर और रिफान की गेंद, देखना यह कि अजहर इस ओवर के अंतिम गेंद पर क्या करते हैं। दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को पुश करते हुए रन लेना चाहा था, स्ट्राइक रोटेट करके स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते थे लेकिन एक्स्ट्रा किकर गेंद थी, फुल टॉस के तौर पर आए, गेंद को वहां पर दबा नहीं पाए, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 72 ओवर की समाप्ति और 19 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी और सतीश अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। As far as the condition of this game is concerned, you're right, young friends who are looking in the top. 70-30 I want to give in this particular 30 I want to give for NM Cricketers Mangalore for the reason that Azhar is still there in the middle. He has got ability to convert that 30 into 100% because he is such a dangerous batsman. And just watching his the career he played for, either he played for young friends or any team. I'm not talking about that. I'm just talking about the career that he is one of the best finisher as as far as finishing the match is concerned. He's always going to be the man. So I think the young friends who are captain knows that until we are अजहर के लिए खतरा नहीं, वाइट थ्रो, काफी वाइट थ्रो और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। अजहर स्ट्राइक पर आ चुके हैं और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। और जहां तक सवाल है ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು। ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ।
और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। अजहर जब तक क्रीज पर मौजूद है, यहाँ पर एनएम मज्जप्पू की उम्मीदें यहाँ पर बरकरार है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, अजहर अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। गेंदबाज शाहनवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अजहर के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि बैक टू द बॉलर की दिशा में डॉट गेंद बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को फेंकी थी। और अब गेंदें बाकी हैं 10 रन चाहिए 18। अब कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर अपनानी होगी अजहर को, और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी वो आने वाले गेंदों में अपनाते हैं। और फिर से एक बार गेंदबाज शाहनवाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट, ही इज ऑफ द स्ट्राइक। 42 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हजारों दर्शक इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का मुआयना इस वक्त यूट्यूब पर करते हुए, जिसका शानदार तरीके से इस वक्त सीधा प्रसारण कर रहे हैं यूट्यूब पर बेद्रा मीडिया के सर्व सदस्य, और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट। और यहाँ पर निस्संदेह मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है, और फैजल सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट शाहनवाज फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए, अभी भी 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार स्वीप करना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ स्लॉग स्वीप, नॉट सक्सीडेड, डॉट डिलीवरी। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन, वन मोर डॉट डिलीवरी, 17 रिक्वायर्ड, 8 बॉल्स लेफ्ट। और यंग फ्रेंड्स उर्वा का तख्ता अभी भी भारी लगता हुआ, चौके और छक्कों की सख्त जरूरत कमबैक करने के लिए इन मज्जप्पू को इस मैच में। और शाहनवाज अपनी ओर की अगली गेंद फैजल के लिए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट तक पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा यहां पर, फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 16 रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स टू गो, अंतिम गेंद बाकी। और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर अजहर क्या करते हैं, क्या वो आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, क्या वो सिंगल से लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं अंतिम ओवर में। और निस्संदेह अजहर के दिमाग में इस वक्त कश्मकश चल रही है कि इस अंतिम गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाई जाए। देखते हैं अंतिम गेंद पर वो क्या करते हैं। शाहनवाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अजहर के लिए यह गेंद, फुल टॉस, पुल किया है मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, क्या छूट चुका है, आसान सा मौका गंवाते हुए, और अजहर का विकेट यहां पर बच चुका है। और सतीश, न सिर्फ अजहर का विकेट बच चुका है बल्कि अजहर इस वक्त स्ट्राइक प्राप्त कर चुके हैं अंतिम ओवर में। तो यह कैच छोड़ना निस्संदेह यहां पर काफी महंगा पड़ सकता है अगर यंग फ्रेंड्स उर्वा अंतिम ओवर में इस मैच को हारता है तो। Well, Gopi, everyone thought that it might be all over for Azhar, isn't it? The way that the fielder has got a right position, isn't it? It doesn't look like it's going to be a difficult catch. But Gopi, it's you need to understand the condition of the game, the pressure of the game, and against having that much of crowd. Might be the fielder is having slight bit of extra pressure, isn't it? That's the result. I want to say that it's not an easy condition for the fielder in the outfield, especially those are fielding in the outfield. That's maybe the reason. But anyhow, Gopi, the life is life, and giving life for the batsman like Azhar, and you are pointed out here is that not only he drops the catch, but he allowed the batsman to get the strike in the last over. Even those 15 to get from last over, just slight a bit of big ask. I'm saying this big ask, Gopi, the reason that the condition of the ball, is not easy for any stroke maker, isn't it? That's why it's going to be not easy. 15 to get, of course, you cannot question the ability of Azhar, but you need to question the ability of the potential, the ball which is used for this tournament, Gopi, and that's maybe the reason that still if 15 to get, Azhar is in the strike, but still I think I want to say young friends Urwa, they're looking in the top, even they dropped the catch of Azhar in the last delivery of the previous over. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर अजहर का कैच छूट चुका है। अब देखते हैं अंतिम ओवर में क्या करते हैं अजहर। तो रिफॉन गेंदबाजी यहाँ पर आरंभ करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, पहली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, निशाना लग चुका है और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। अजहर का विकेट गिर चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश
सतीश, अजहर का विकेट का पतन एनएम मैंगलोर के द्वार को लगभग बंद कर चुका है यहाँ पर. Absolutely, Gopi. The door, which is almost 99.9%, which is closed for NM Cricketers Mangalore. And I'm just mentioned, Gopi. This is what I wanted to pick the point here is that the ball which is used for this cricket tournament is not easy for the stroke maker. And even the Azhar is batted for a long time. You can see that how many deliveries playing and how much runs he's got. It's quite a different innings, isn't it? He scored only 7 runs, but he played for 13 deliveries. This is quite a different innings. This is what I'm talking about. The way that Ravi is played innings for KCCR Kadri, that is sensible innings, because he knows that this is not the tournament where you can enjoy the big shots, but sensible batting is very important. Here is Gopi. He scored 7 runs in 13 balls. Just look at the difference between ball. If he is able to rotate the strike, it's much better for team NM Cricketers Mangalore. Losing each and every balls when you are scoring a ball-to-ball runs required, losing each and every dot deliveries means, missing each and every dot delivery means you are providing opportunity for the opposition. Now Gopi, Faisal. You cannot underestimate this man, because the way that he batted in the previous tournament, when 7 wickets is down, he hit 2 sixes down to mid-wicket region. But this is the last over for NM Cricketers Mangalore. बिल्कुल अंतिम इस वक्त उम्मीद फैजल के रूप में. दाहिना हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं. और इस बार एक और खिलाड़ी को अंदर बुला लिया जाएगा. अब सिर्फ 3 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. और यहां पर देखना यह है कि फैजल इसका उपयोग यहां पर उठा पाते हैं. 15 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी. 15 रन टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स. और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश. गेंद जो कि काफी नरम इस श्रृंखला में इस्तेमाल किया जाए. गेंद का स्वभाव ऐसा है कि बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कत यहां पर पैदा हो रही है. और इसकी वजह से पिछले मैच में केसीसीआर कदरी के ओर से देखा गया था. रवि सालियान पड्डे और दिलीप ने एक सेंसिबल पारी खेली थी. और यहां पर इसका उदाहरण हम देखा यहां पर अजहर के रूप में, जो कि 13 रन बनाकर सिर्फ 7 रन 13 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाने में सफल रहे. वो ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्लिकर. 15 required, 3 balls. The last chance in front of NM जप्पू. और गेंदबाज रिफान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फैजल के लिए. दाहिना हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कट मैन पर. रन से मिलेंगे निशाना एंड इज गॉन. Young friends Urwa are won the match by 14 runs. Absolutely memorable victory for young friends Urwa against the strong contender for the title. NM Jappu is now knocked out of the tournament. And this is an absolutely memorable victory for young friends Urwa. Kyo Satish? Absolutely, Gopi. Why not? Because if you see the young friends Urwa, the playing 11, it's not a playing 11 you are watching in the last 2, 4, 5 seasons. It's quite a different playing 11. New faces and along with some 4 experienced players, they need to give their 100%. This is the beauty of cricket, Gopi. Cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. Having 11 good players in the side is not good enough. But your determination, the dedication, which is more important in cricket. And if you have that one, you can upset any big teams. This is a perfect example for that, Gopi. And 23 at one stage, in 3 overs, they lost 2 wickets. And everyone thought it might be all over for young friends Urwa. But the way that Karthik, and I think is a bowler who got 2 wickets in this condition and takes the match away from the opposition. And after that, everyone performed very well. And they won this absolutely memorable match, memorable match for young friends Urwa. Not only they won the match, but they came into the finals of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. And congratulations for young friends Urwa. Hard luck NM Cricketers Mangalore. They played a very good game of cricket, but not quite enough. Especially the batting department of NM Cricketers Mangalore, slight a bit of lacking in their planning. And at the same time, the injuries of Riaz, slight a bit of NM Cricketers Mangalore in the back foot, because in the middle order, it's just definitely they're missing him. And young friends Urwa, absolutely, they played an absolutely fantastic game of cricket with the limited, the big names in their teams, but still they managed to upset big teams in this semi-final. So we are coming to the second semi-final. KCCR Kadri versus Torpedoes Khana. One more big match will go into coming up.
and the spectators certainly wanted to enjoy the game of cricket in this match as well. Thank you very much. Thank you very much, Gopi. Welcome back for the second semi-final. Arish Padil, umpire, signaling towards the scorer. Everything is ready here. And after winning the toss, the captain of KCCR Kadri registered they elected to bat first. Quite surprisingly, I'm not really having any surprise because KCCR Kadri, they won their first match by defending the total. They defended very well, and after scoring of 55 runs, looks like they wanted to bat first here to put some pressure onto Tarpado's Khana. And we'll see how well the strategy will going to work out here, as the batter is just came into middle. This time first ball nicely driven down to deep extra cover region for a single,
by the batter, opening batter, so just in about 45. Pramod is off the mark with a single, and that brings the big man, the very good striker of the ball, and Manjunath is on strike now. Sharan just testing the window lubrication, the wind of the ground, the direction of the wind might be he wanted to get one fielder to extra cover region because the wind is blowing, and that's very important for the bowler to as far as the setting of field is concerned. This time Manjunath wanted to swap that one side to the answer fielder, chance of run out there, and again Rilwan is so quick in that region down at in front of square. He just returns the ball to the hands of bowler, and there is no chance at all for in run. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. Sharan again, right arm over the wicket. This time again Manjunath wanted to play his favorite switch it, but missed it completely. This is a premeditated, and Sharan is a kind of bowler who is releasing the ball last moment, so that he is quickly judging that the batsman going for the reverse stroke, so he bowled outside the line of leg stump. Again Sharan bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time appeal for leg before wicket, but ball certainly going to miss the leg stump as far as umpire Arish Padil's view, and rightly so. Slight bit of ball is going down the leg stump, not a slight bit but a slight margin that ball is going to miss the leg stump, and leg by call by umpire. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Pramod, the back on strike for him, one fielder at short fine leg. There is a two fielder, one at fielder at square leg behind the square, one at in front of square, and one fielder down at deep long on and deep extra cover. This time tip that one over the top of the infield, and again the Tanvir is a fielder. Oh, is a slight bit of fumble. The Pramod wanted a third there, but they're not interested. Tanvir just wanted to go back and try to field the ball. By doing that, I think ball is having a contact with his legs, so that ample time for the batter to complete the 2 runs. With that couple of runs, Koban moves on to 4 on the board without loss of any wicket. What a fantastic tournament so far we are witnessing in this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. All matches absolutely fantastic for the spectators. This time bowler's back dry, off stop by the bowler, run is follow through, and Pramod wants a single, but I think he's very choosy, and as far as the batsman Manjunath is concerned, he is very choosy. He is not taking any risk at all as far as taking a quick risky run is concerned. He is a kind of batsman, he doesn't want to take any risk, and rightly so. So 4 runs came from that over of Sharan, and as always, as usual in fact, the team KCC Kadri has got a steady start. Both the batters has got a steady start. Only 4 runs in the first over. That means Sharan bowls a very tidy over the first over. The Mubir is a new bowler, has been introduced by the little correction. The second over, Mubir will go into ball from the far end. Austin Montero and D'Souza family end, and he will go into ball right arm over the wicket. Special thanks to Shrikant Shetty of Vijay Lakshmi Cricketer, the former legend cricketer, who has provided floodlight for this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. This time nicely swept that one. Good piece of fielding there by the fielder. Quickly moving to his left. 100% commitment there from the fielder. Just a single here for Manjunath. With that single, Skubana moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. Mubir again bowling from the Austin Montero end. Right arm over the wicket, delivers. Pramod wanted to get the reverse sweep. There's some chance of run out there. Oh my goodness. Mubir, just an whisker, that ball is missed the stumps, isn't it? Ball which is almost looks at he's just got a target, right? But ball just going over the top of the stumps, isn't it? Otherwise it's going to be a disappointment finish here for the Pramod. They taken a risky single here, but you need to take the risk, isn't it? Sometime. 6 without loss of any wicket, because this is not a wicket where you are getting your runs very easily. This time he's got a proper connection, but as like I mentioned about the ball which is not having that much of weight to get that boundary. Just a couple of runs here for Manjunath, even though he got a proper connection.
but unable to get the boundary here. With that couple of runs, I think a couple of runs, his scoreboard now moves on to 8 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Mubir to deliver from the far end. Right arm over the wicket to Manjunath. Manjunath wanted to get that one down to find in that occasion, but by playing the switch it. But Ashraf, look at the Ashraf behind the stump. He is very much interested to ask the umpire for the caught behind, but nothing much has happened in that delivery. Ball misses the bat and back to bowler now. Bowler Mubir, so far looking so good. Right arm over the wicket. Manjunath lofted, fielder going back and Sharan taken a fantastic catch. Just like I mentioned, this is not an easy wicket for any stroke maker. Again, the Manjunath is a finding shot. Even looks like he's got that one over the top of the infield. Of course, he succeeded to get that one over the top of the infield, but the way that Sharan is taking his position quickly but running back, absolutely fantastic, isn't it? It never looks like it's going to be the fielder inside the ring is going back and taken the catch. It looks like the fielder is in outside the circle taking the catch. That kind of quick movement there from the fielder. Once the batsman hoisting it over the top of the infield, the ball which is not travelling, so that the opportunity is always there for the fielder to take the catch. It's 8 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. The new batsman in is the Shailesh, slowly walking towards the middle with the jersey number 8. I'm watching it after a long time. That is a 10 overs of format games. This kind of cricketing tournaments, which is organized in the 80s and 90s, I still have a remember. Has got a memory when we are playing that 10 overs format games. Lot of examples, even 35, which is restricted by the opposition team, fielding team in 10 overs. And this is the one tournament really pretty hard for the batter to get the runs. Again, leg by call by umpire. And one more over which is comes to an end after completion of over number 2. KCC Kadri searching for the right track. They're 9 for the loss of 1 wicket. And 2 overs completed. So during 90s and till the 2000, the teams like Reliance Cricketers, Jaipur, and even Hanuman Cricketers has got a lot of example of restricting the opposition. Even they are depending a small total like 35 or 40 because of their good bowling and the commitment in the field. They can any team can restrict the opposition because it's a 10 overs format game. This is a very difficult format, I want to say, because even bowling team, fielding team has got opportunity to come back, and at the same time the chasing team also got opportunity to come back because of that format of the game. This time beautifully bowled. This time I think Shailesh did the right job. In the previous match he is bowled out for the same delivery which is coming into him. This time he quickly learning from the mistake what he did in the previous match. This is what I want to see. The batsmen have to learn from the mistake. Of course, the mistake is common, but coming with the correction for the next match is so important. And Shailesh did the right job. This time he is right behind the line of the ball, not in the lazy movement, but he is quickly moving his bat and pad together to get the single. This time he went for the reverse sweep. Ball is in there for a wild chance of run out there. Sharan is the man, is trying for that, but ball is hitting the back of the batsman Pramod. Then one more single has been taken. With that single, scoreboard numbers on to 11 for the loss of 1 wicket. And the over number 3 is in progress. Right arm over the wicket again. Outside the line of offside, going for the off drive. But ball is got outside edge of the bat and the wicket keeper fails to collect the ball. Then third man fielder fields the ball. One more addition to total. Scoreboard now 12 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Slowly and steadily these two batters try to adapt to the condition of the game and try to get some partnership going for team KCC Kadri. This time appeal for leg before wicket, but suddenly that ball just going down the leg stump. The way that the batsman bowling it's slight a bit of wide of the crease. When you're bowling wide of the crease means the angle of the delivery, the shaping
definitely outside the line of leg stump. That's why umpire not interested. And even the batsman is standing well out of the line of outside the line of leg stump. This time nicely driven right in the gap. Then good piece of fielding there by again the fielder down at extra cover region. One and pick up and throw there, and just a single here for the batter. 13 for the loss of 1 wicket. 13 for the loss of 1 wicket. Sinan the fielder, a very good fielder down at short extra cover region. And here is again. This is too much. This is too much, isn't it? Of course, we need to have a variation, but it's not that kind of variation, isn't it? He is just adapting for the slower one, and that is a very slow indeed. And maybe the batsman can reach to that delivery to get that one into the fence, but wide call by umpire. It's 14 for the loss of 1 wicket. Again, the appeal for leg before wicket, but a slight bit of impact of line, slight a bit of outside the line of off stump, and leg by call by umpire. One more addition, good over there from Rilwan after completion of over number 3. KCCR Kadri 15 for the loss of 1 wicket. And Kadri is going exactly 5 runs per over. This is not a bad run rate, seeing that the 55 plus runs is always going to be a good total to depend. With that, Mangalore cricketers are given fight for NM cricketers Mangalore for that 49 runs. With that, young friends Urwa, they fought hard for the victory, and they got a victory against NM cricketers Mangalore by defending only 56. So considering all these factors, I think NM cricketers correction KCCR Kadri registered. They certainly aiming towards that total of 50 plus runs on the board. And even Torpedoes Khana knows that giving opportunity for the opposition to get that runs, it's going to be a psychological advantage for the fielding team. Shafiq brought into attack from the far end. 4th over. Right arm over the wicket. This time a ball is in there, and Mubir won't get there. Ball which is landed safely. There is no cover point. There is a deep cover point. There is a short extra cover. Mubir there in the short extra cover. I have to run to his friend to take the catch, but it's too late. Ball which is landed safely. Loose stroke played by Shailesh. That shows that how the ball which is difficult for the batter. Ball which is not coming to the bat. 16 for the loss of 1 wicket. Shafiq. Balls big wide. Absolutely big wide. Far outside the run of off stump, and the wide call by umpire. And Skoban Amazon to 17 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Sensible cricket is badly required here for the team KCCR Kadri, and even the wicket taking over is badly required for Torpedoes Khana. Shafiq again. Balls, this time nicely plays it down to deep cover point region. Real one just charging from the deep cover point region. And batsman have to settle for the single. Pramod picked up a single, and well, along with that single, he is getting one warning as well from umpire Roland Pinto for running in the middle. 18 for the loss of 1 wicket. Shafiq. Right arm over the wicket delivers. This time sensible batting here from Shailesh so far. He knows that how important to get the singles, rotation of strike. It's 19 for the loss of 1 wicket. In the over number 4 is in progress. The Prasad to take a strike. Shafiq. This time he wanted to get a reverse sweep, but missed it completely. Then leg by call by umpire. One more addition of that single. Skoban Mozan to 20 on the board for the loss of 1 wicket. So very, very quiet cricket is going on here. The runs which is coming in the form of singles. Oh, Spectra. No, I just want to wait for the umpire signal. Whether the ball is wide or a no ball, what umpire want to see. It's a wide wicket declared by the umpire. The warning number 2 has been given for the bowler Shafiq. It's a 22 for the loss of 1 wicket. 21, let me correction, 21 for the loss of 1 wicket.
driven that one down to deep long on region for a single. And scoreboard numbers are 22 for the loss of 1 wicket. Shafiq again, right arm over the wicket, delivers. This time again Shailesh quite deliberately, little correction Pramod, to chip the ball down to the long off region for a single. One more over completed. Completion of over number 4. KCC Arkadri now slowly and steadily they're getting the runs what they really wanted. They're going almost 6 runs per hour, just under 6 runs per hour. It's 23 for the loss of 1 wicket. At 23 for the loss of 1 wicket in the over number 4, which is complete. Now 5th over will going to start here. Ashwin brought into attack. Then starts with the delivery, which is slight a bit outside the leg stump, and the wicketkeeper behind the stump, Ashraf, did the job. Now I think it's always going to be a testing time for the batters. The temperament, the technique, everything is tested now because Ashwin is the man. Now is an umpire, square leg umpire, asking for the third umpire for the stump out. It's a 23 for the loss of 1 wicket. 23 ಒಂದು 23 for the loss of 1 wicket in the over number 5 is in progress. So in that in this final day of this cricket tournament, of course, the 3 finals to be played. After this match, one more the match which is going to play, that is the finals of local group, and AK Friends Kalbavi as well as team NF Sirva, the 2 teams which just came into the finals. And they will going to play the first final of this prestigious cricket tournament, and the second final will be played between Gori Young Boys versus Reliance Cricketers Japo. The not out decision came from umpire. The batsman is safe, and last final will be played between, of course, Young Friends Urwa. Already they reached to the final, and winner of this second semi-final will going to play the last final of this prestigious Nutan Champions Trophy. That means the first time in this UCC cricket ground, the 3 categories, the final will go into play. Nicely pedaled that one down to deep square leg region for a single, and with the single score numbers on to 24 for the loss of 1 wicket. Just like I talking about, Ashwin is a key bowler for the side of Torpedoes Khana, bowling away from us. This time beautiful leg cutter, absolutely fantastic. This is the one line. This is one line is troubled many batsmen, especially for the right hand batsman, when which is going to be the delivery, which is slight a bit of deviation, pitching in the middle stump, and a slight leg cutter which is defeats the bat. Always he enjoys that ball line. Again wanted to pedal that one, but this time I think it's going to be one more leg by here, and it's always going to be a testing time for the bowler batter, especially in this condition. Ashwin will going to enjoy his bowling, which is not that much of hard. It's very soft enough for the bowlers like Ashwin to get some good bowlers. It's 25 for the loss of 1 wicket. Ashwin again. This is the one. Absolutely beaten by the flight and the turn. And Ashraf did their job, and back to bowler. This time again bowls and missed it. One more good over. Absolutely perfect one here for Ashwin.
just like I mentioned about the temperament and technique will go into tested in this over of each and every batsman. Then the 25 on the board for the loss of 1 wicket, and another 5 overs remaining. And Gopi, welcome back. It's after that it's a good going. It's a 23 for the loss of 1 wicket, and after completion of 4 overs. But this over, Ashwin once again bowling as per his potential, and considered only 2 runs in that over, and that means Ashwin's 2 overs always going to be very crucial for Torpedoes Khana, and even for KCC Kadria. So they knows that his over is always going to be very dangerous, not to give the wicket but need to get some runs. But if they fail to get the runs, but succeeded to keep the wickets in hand, and wait and see how many runs they will go to score. But it will be 50 plus runs, always going to be a very good total in the big semi-final. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया। और सतीश जैसा कि अश्विन के बारे में अगर कहा जाए तो अश्विन आमतौर पर बेहतर गेंदबाजी करते हैं किसी भी हालातों में, और यहाँ पर उन्होंने अपने काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की है। इस बार गेंद को स्कूप किया डीप मिड विकेट पर। और जहाँ तक केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों का सवाल है, इस वक्त अश्विन को देखकर परखकर पिछले ओवर में उन्होंने खेला था, सिर्फ 2 रन जरूर उन्होंने बनाए थे, लेकिन अश्विन के ओवर को अवॉइड करना उनके लिए जरूरी था। तो वहां पर अश्विन का ओवर में सिर्फ 2 रन जरूर बनाया, लेकिन उनका ओवर खत्म हो चुका, कोई सफलता उन्होंने अर्जित नहीं किया। ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, इस बार स्टंप्सों को उठा लिया और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद सीधे नॉन स्ट्राइक रेट पर टकराई थी, बिल्स गिर पड़े, और जैसे ही गेंदबाज ने देखा कि बेल से गिर पड़े, स्टंप्स बिखर चुके हैं, एक स्टंप को गेंद के साथ उन्होंने उठा लिया। और यहां पर बल्लेबाज प्रमोद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते। एक बेहतर पारी प्रमोद ने खेली और आखिरकार 26 रनों के ऊपर केसीसीआर कतरी दूसरा विकेट खो चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत खेला जाता हुआ। शुभकामनाएं इस वक्त भेजी है डिसोजा फैमिली बोलूर ने, तो एक बार फिर से हम डिसोजा फैमिली बोलूर का हार्दिक अभिवादन करते हैं। और तो जहां तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो मैच इस वक्त बराबरी का प्रगति यहां पर करता हुआ। तो तो यहां पर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो फाइनल मैच तो यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इना तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद बढ़ते हुए 2 रन यहां पर बल्लेबाज को मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। तो फाइनल मैच के पश्चात यहां पर हॉनरिंग का कार्यक्रम है, सम्मान कार्यक्रम है। श्रीमान गंगाधर जो कि यंग फ्रेंड्स और जुगुल की ओर से बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, और श्रीमान चित्रवीर एक्स क्रिकेटर और श्रीमान विश्वनाथ नूतन फ्रेंड्स, इन तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित यहां पर किया जाएगा फाइनल मैच के बाद। और हॉनरिंग फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत दिखाने के लिए यहां पर सम्मान किया जाएगा श्रीमान इरशाद जो कि एनएम क्रिकेटर्स और श्रीमान चरण एस के चैलेंज बॉलर के, जो पिछले साल जब संदीप कैच पकड़ने के प्रयत्न में नूतन ट्रॉफी के दरमियान कैच पकड़ने के वक्त एक मैच में कैच पकड़ने के वक्त जो कि चोटिल हुए थे, उनका सिर पर चोट आई थी, तब इरशाद ने इंसानियत के नाते उनको ऐसा कहना पड़ेगा फर्स्ट एड देते हुए उनकी जान जो कि बचाई थी। और इसके चरण ने जो कि एम्बुलेंस के जरिए काफी तेजी के साथ उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। तो इस इंसानियत के कार्य के लिए यहां पर हॉनर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, हॉनरिंग फॉर ह्यूमैनिटी। और निस्संदेह ये सब कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम फाइनल मैच के पश्चात यहां पर इस भव्य स्टेज पर होंगे मैदान की दाईं और इस बार गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा 31।
2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मुनीर दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ड्राइव्स नॉट क्वाइट मिड विकेट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 32 रनों पर। सो गुड ओवर इन केसीसीआर कतरीज पॉइंट ऑफ व्यू गेम स्टूडेंट, 7 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर। और 6 ओवर के बाद 32 रन बच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs for KCCR Qatari. They are looking in a good situation. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. अगर 60 के आसपास या 60 के आंकड़े को KCCR Qatari पार करता तो निश्चित रूप से वहां पर दबाव आ सकता है टोरपेडो स्काला के बल्लेबाजी पर, जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और यहाँ पर इसके लिए कोशिश इस वक्त जारी है केसीसीआर कतरी के बल्लेबाजों द्वारा कि 60 के आंकड़े या फिर 60 के आंकड़े को पार अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचाने के लिए। इस बार गेंद को परफेक्ट लेग कटर गेंद थी अश्विन की, और इस लेग कटर गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 7वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक बार फिर से थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, और आखिरकार गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से भी बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total. The total is now moving up to 34 now for the loss of 2 wicket. दिशाहीन गेंद थी इस वक्त अश्विन की, अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर। Kept lower at the last moment, just wanted to sweep that one, missing the line completely. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा। एक रन बल्लेबाज तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज शैलेश और दिलीप, एक सेंसिबल बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए। इस बार रिवर्स शॉट फ्रॉम इन फ्रंट, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद उनके पैरों पर टकराई, और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। शैलेश की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिर चुका है। अश्विन अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और 35 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर केसीसीआर कतरी हो चुका है। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और एक बार फिर से गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अश्विन की गेंद, फुल टॉस, गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में हर्षित ने खूबसूरती के साथ। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक और बेहतर ओवर अश्विन का समाप्त हो चुका है जिसमें 4 रन उन्होंने प्रदान किया। एक बेहतरीन स्पेल उनका समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 6 रन 2 ओवर में, 5 रन सिर्फ अश्विन ने प्रदान किए अपने 2 ओवर में। 2 overs no maiden, 5 runs and 1 wicket and a fantastic spell came to an end from अश्विन। निस्संदेह अपने क्षमता काबिलियत के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की और आखिरकार यहाँ पर 7 ओवर के बाद 36 रन जोड़ चुका है केसीसीआर कतरी। 3 ओवर का खेल बाकी। ऑस्टिन मोंटेरो इनकी ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज रिलवान और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित। तो फील्डिंग में यहां पर जमावट चलते हुए मिड ऑफ, कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड बैन, शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट इस वक्त मौजूद और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए हर्षित सामना करने के लिए तैयार। रिलवान अपनी ओर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, लेकिन वहां पर फील्ड हो चुका है 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर द्वारा।
हालांकि थोड़ी सी मिसजजमेंट जरूर हुई थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए अपने हाथों को गेंद की लाइन पर लाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन 20 गज के दायरे के अंदर 1 रन का इजाफा, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑप्शन से बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा निशाना, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं। वाइड का इशारा, कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल, और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। द सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा आज शनिवार का दिन जरूर, लेकिन दर्शकों से लगभग इस वक्त मैदान भर चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को खेलना चाह, पैरों पर गेंद टकराई, निशाना इस वक्त लग चुका है, लेकिन यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अंपायर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग कर चुके हैं। तो देखना यह है कि जब निशाना स्टंप्स पर टकराया था तब बल्लेबाज हर्षित अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं, तो देखना यह है कि इस वक्त तृतीय अंपायर यानी तीसरे अंपायर इस वक्त क्या निर्धार देते हैं। So no doubt is the call and the batsman survived. और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ केसीसीआर कतरी, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैयार रिलवान, दाहिने हाथों पर द विकेट दिलीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ डीप का वो पॉइंट इस वक्त मौजूद
और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर, दूसरा रन लेना चाहते हैं हर्षित, तो कदम आके जरूर बढ़ाए लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के लिए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट ऑफ सबसे बाहर और रन के लिए दौड़ पड़े निशाना, और इस बार ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर वंस अगेन। तो यहां पर गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर निकल रही थी और गेंद तक पहुंचना चाहा था और आखिरकार ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी इस वक्त, और आखिरकार यहां पर तृतीय अंपायर के लिए कॉल दी गई है और देखना है कि तृतीय अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं। वाइड के लिए भी इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है। तो नॉट आउट एंड वाइड, तो वाइड घोषित और बल्लेबाज बच चुके हैं। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 43 रनों पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस। और परिस्थिति को समझते हुए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। निस्संदेह बल्लेबाज जानते हैं इस वक्त स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, तो इसकी वजह से इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल्स और कपल के जरिए और एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ते हुए केसीसीआर कदरी के बल्लेबाज। और अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची सीली पॉइंट पर, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे लेकिन निशाना लगाना नहीं चाहा उन्होंने आखिरकार, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस। Meantime, I request the captains of the local pool, AK Friends and NFC Urwa, please to be reported here for the toss procedure for the final match, for the grand finale of a local pool. और फिर से एक बार गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को स्टीयर करना, क्विक पेस ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट behind the stumps by wicket keeper, and the batsman fell just short out of his game. In fact, he lost his bat. In fact, हर्षित अपने बल्ला को खो चुके थे और इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद को विकेटों पर इस वक्त लगाने में सफल और विकेट उखाड़ने में सफल, और इसके बदौलत, इस बेहतरीन विकेट कीपिंग की बदौलत हर्षित का विकेट यहां पर गिर चुका है और चौथा विकेट गिर चुका है 44 रनों के ऊपर। हर्षित आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, 1 बॉल लेफ्ट एंड नाउ इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो रवि पटयूर इस वक्त बल्लेबाजी पर उतरते हुए, कुछ देर से उन्हें इस वक्त भेजा गया है और खासकर मैच के पावर प्ले में और मैच के अंतिम ओवर, डेथ ओवर्स में रवि पटयूर फायदा उठाने में काफी माहिर है और यहां पर
देखना यह है कि तो इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार था ना तो ओवर द विकेट ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ, पॉइंट पर गेंद पहुंचती है, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर्स कंप्लीटेड, 45 रन्स ऑन द बोर्ड for losing 4 wicket. KCCR Kadri looking in a good situation. 2 overs left in overall calculation in their innings. So 9th over starts in KCCR Kadri innings. पहली गेंद played that one defensively by रवि पटयूर, रन से नहीं मिलेगा, बेहतर शुरुआत डॉट गेंद के जरिए तनवीर गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 2 डॉट बॉल्स इन अ रो, 2 लगातार डॉट गेंदे रवि पटयूर यहां पर खेल चुके हैं और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए तनवीर यहां पर कर चुके हैं। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार टॉप एज, मौका लंबा फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बखूबी लपकने में सफल। रवि पटयूर ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन द बॉल गेट्स टॉप एज ऑफ the bat of the batsman and finally comfortably held at long off area just inside the fence. It's 45 for 5. Ravi Padayur departs and now just 9 balls remaining in their innings. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, गली की दिशा में गेंद को खेला, इस बार ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज नहीं बच पाएंगे। दिलीप की पारी समाप्त हो चुकी है, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ मिड विकेट फील्डर के गेंदबाज के हाथों में स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स और आखिरकार दिलीप की एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 46 for 6 now and this is turning out to be a good over in Torpedoes Khana's point of view. सिर्फ 2 रन इस ओवर में अब तक पहले 4 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं तनवीर और एक विकेट भी प्राप्त करने में सफल रवि पटयूर के रूप में एक रन आउट भी यहां पर हो चुका है और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 8 बैट्समैन फॉर KCCR कद्री, तस्लीम का आगमन यहां पर होता हुआ और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश, तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। 47 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, स्टिल अ लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम बार तनवीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और तस्लीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और दाहिने हाथों पर द विकेट अगली गेंद
Just one. Brilliant, absolutely brilliant behind the stumps, but the batsman got his back foot onto his crease at the last moment, and because of that, he's a fantastic over came in and from Tanveer. Just 3 runs he conceded, and got the wicket of Ravi Padayur. So 9 overs completed, 47 for 6, and now just the last over remaining in KCCR Kadri's innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में केसीसीआर कदरी के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त केसीसीआर कदरी की पारी में. फर्स्ट बॉल, शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद. वांटेड स्वीप बैट वन, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर. 1 रन बाई के रूप में विकेट कीपर चुके, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए विकेटों के पीछे. 48 नाउ, स्टिपुलेटेड टाइम इज नाउ ओवर, और एक खिलाड़ी को इस वक्त आगे बुला लिया जाएगा. 1 फील्डर ब्रॉट इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल, और 4 खिलाड़ी मात्र इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात सीमा रेखा के पास. शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त अगली गेंद. यह गेंद इस बार विकेट कीपर एक बार फिर से चूके, 1 रन का इजाफा. 49 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. 2 बेहतर गेंदें शरण ने फेंकी थी, लेकिन दोनों गेंदों में गेंद को विकेटों के पीछे गैदर करने में असफल रहे विकेट कीपर. फलस्वरूप 2 रन नब्बाई के रूप में बल्लेबाज प्राप्त करते हुए अपने अर्धशतक से एकमात्र रन दूर, और गेंदबाज इस वक्त शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, गेंद को खेला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड बैन पर. 1 रन, और इसके साथ द 50 कम्स अप फॉर केसीसीआर कदरी. 50 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 10th एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी. जस्ट 3 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और फिर से एक बार गेंदबाज शरण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की दिशा में, इम्तियाज गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 51 रनों पर. 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. Two balls remaining in their innings. Sharan. Oh, wicket keeper misses. Gone to a single, and they get it comfortably. One more by. 52 now. बेहतर गेंदबाजी जरूर शरण की, लेकिन विकेट कीपर की गलती, और फिर से 1 रन बाई के रूप में प्राप्त करते हुए केसीसीआर कदरी के बल्लेबाज बाई के रूप में 1 रन प्राप्त कर चुके हैं. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. शरण तस्लीम के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार. बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची पॉइंट पर. 1 रन, जस्ट लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट. 53 the score. 6 wicket down. 10 overs completed. Their 10 stipulated overs completed. After completion of their stipulated 10 overs, they managed to score 53 runs on the board for losing 6 wicket for KCCR Kadri. And now the target for Torpedoes Khana is 54. In 10 overs, they have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition in top seeded teams group. 54 the target for them in 10 overs with help of 10 wickets. The present equation shows for them, and as far the required run rate is concerned, exactly 5.40 runs for they have to score for victory with help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Meantime उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब टॉर्पेडोज खाना की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू.
So 50 for the target, and the innings of Torpedoes Khana is now going to start. First ball of the innings is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त तैयार सतीश पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में सिरन और तनवीर आरंभिक बल्लेबाज और सिरन इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सतीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया गेंद पहुंची स्लिप डाउन क्षेत्र पर रन्स नहीं मिलेंगे स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर और एक बार फिर से सतीश दो बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप पर बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक 3 डॉट बॉल्स इन ए रो और बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त कर चुके हैं सतीश और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर जारी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दिस टाइम ड्रिवन डाउन टू मिड ऑफ कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक और तनवीर ने गेंद को ड्राइव तो जरूर किया था लेकिन मिड ऑफ पर गेंद पहुंचे और जब तक वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया रन से बल्लेबाज को नहीं मिला फिर से एक बार गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट सतीश गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े इस बार 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल काफी खराब गेंद इस वक्त फेंकी थी 5 लगातार बेहतर गेंदें फेंकने के बाद यहां पर एक खराब गेंद फेंकी वाइड के रूप में सतीश ने 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में प्रदान कर चुके हैं टोरपेडोस खाना को और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए इस बार किक किया जस्ट दिस टाइम जस्ट ओवर द मिड ऑफ फील्डर सेट इनफैक्ट जीत और कोशिश जरूर की थी मिड ऑफ फील्डर ने लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में सफल 1 रन मिला पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोरपेडोस खाना स्टडी स्टार्ट जिसे कहते हैं कर चुका है 71 की शुरुआत 4 रन बिना किसी नुकसान के जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त टोरपेडोस खाना के सलामी बल्लेबाजों को एक बेहतर आरंभिक शुरुआत देनी होगी अगर उन्हें 54 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो और जहां तक सवाल है केसीसीआर कदरी के गेंदबाजों को तो सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप उनके पास है और उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी है विकेट टू विकेट बल्लेबाजों को खामोश यहां पर रखना पड़ेगा और विकेट उखाड़ने होंगे चंद कसे ओवर यहां पर फेंकने होंगे बल्लेबाजों पर अगर दबाव डालना है तो 50 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 9 ओवर्स और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ तो इस वक्त तो दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दिलीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर टोरपेडोस खाना की पारी में शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है तो अगली गेंद के लिए तैयार ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन एंड ही गॉट दैट वन फाइन ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट और 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेला था इस वक्त डीप बैक और थर्ड मैन पर और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी और विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला
तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 2023 की शानदार प्रगति होती हुई इस ढलते हुए शाम में भी शाम के 5:45 बज चुके हैं और इस प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है नूतन फ्रेंड्स क्लब उर्वा मंगलोर ने दिवंगत ऑस्टिन मोंटोरो इनके मधुर याद में। और इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और जीत और कोशिश जरूर की थी इस वक्त फील्डर ने, लेकिन गेंद को लपकने में सफल और एक रन बल्लेबाज को प्राप्त होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दिलीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर शॉट फाइन लेग पर नॉन स्ट्राइकर पर खतरा, थ्रो पहुंचा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। सिनन की पारी समाप्त, काफी आगे निकल आए थे, गेंद पहुंची सीधे शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर एंड पर और गेंदबाज को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें रन आउट करने में और इसी के साथ सिनन का विकेट गिर चुका है। टॉर्पेडोज का अपना पहला विकेट खो चुका है, जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का यहां पर प्रगति पर। सो सिनन आउट after being scoring 5 runs into his credit, and now Torpedoes Kana are 7 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. We are just waiting for the number 3 batsman. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल अशरफ और इस वक्त बातचीत यहां पर चलते हुए अंपायर्स और खिलाड़ियों के बीच में और इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है कि वो गेंद वाइड थी या नहीं देखने के लिए। राइट डिलीवरी, नो वाइड, इट्स अ राइट डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी और यहां पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ अशरफ का, तो अशरफ इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तनवीर और दिलीप इस ओवर में अंतिम बार। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है दिलीप का, जिसमें सिर्फ 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार तनवीर एक बार फिर से उनका सामना करते हुए दिलीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट तनवीर के लिए। इस बार just gone for a mighty swing this time, not succeeded. The ball kept lower and went into the hands of wicket keeper. One more good over in KCCR Kadri's point of view came to an end. 2 overs gone, 7 runs on the board. Still the batsmen of Torpedoes Kana searching for the right track. और इससे पहले कि तीसरा ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। तो सतीश, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. 54 the target, 7 runs scored
47 to get, 8 overs remaining, 48 deliveries remaining, 47 runs they have to score for victory, just under 6 runs per over. Still they got 8 wickets in hand. और जहाँ तक मैच का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, it's going to be a 50-50 at this situation. Thank you very much, Shikubi, and absolutely right. And the 7 runs in 2 overs. That means KCR Kadri, they are bowled 2 very good overs. And being the fact that 54 runs in this condition is going to be a very good total to depend. But even Torpedoes Khana is also knows that having wickets in hand without losing a wicket, if they are able to get 25 to 30 runs in the first 5 overs, then it's going to be so easy for them to win the match. So strategy is on from both the teams to get the place in the mega final of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. Satish brought into attack from the far end. One who bowled a very good first over of just 4 runs. This time again try to post the ball, misfield that, but absolutely it's stoppable one. Each and every run going to be very crucial, isn't it? Whenever the batsman getting his run is standing in the other end, it might be a very relaxed man, especially in this particular cricket tournament. It's not the easy condition. The batsman certainly wanted to stay in the non-strikers end rather than the strikers end, because that much of tough situation for the batters, isn't it? And the conceding runs means you are giving confidence for the opposition. 8 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Satish again bowling from the far end. Right arm over the wicket, bowls to this time a drive light in the gap, beautifully driven down to deep mid wicket boundary. Oh, this is a football, but ball never went to the goal post, but ball went to the out of the park. The way that the fielder is trying to stop that ball, of course, he's got there quickly realizing that he can't be able to get the ball from the hand. He wanted to try to stop the ball from his leg, and he got a goal kick, and it's a kick which is went out of the park and the boundary signal. The 12 for the loss of 1 wicket, and it's over number 3 is in progress. Right arm over the wicket balls. They say wanted to get that one down to 3rd man region, but missed it completely. That will going to give a lot of oxygen here for the batter. Whenever the batter getting a boundary means definitely the batter will going to be so happy. In this condition, getting a boundary is not easy. So it's a very good cricketing stroke there from Tanveer. This time again he wanted to repeat that one, slide across the line of the delivery, not coming from the middle of the bat, but meantime they got opportunity to come back to complete the single. With the single, scored Namuzan to 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. There's a lot of excitement we can see this in this particular match. It's going to be anybody's game. Torpedoes Khana wanted to be in the final, and KCR Kadri also wanted to be in the final. Satish again from the far end. Right arm over the wicket, bowls Ashraf. Ashraf this time drives that one down to deep long on for an easy single. Timing is not that much of proper, but quite enough for him to get the single down to deep long on. With that single, scored Mozant to 14 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. After this match, the mega final of the local group between team NFC Urwa versus AK Friends. And here is again the bowler bowling right arm over the wicket balls outside and above stump, going to be a punishable from umpire, so that a wide call by umpire with the addition of that wide. Scored Namuzan to 15 for the loss of 1 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ please cooperate, thank you, please cooperate. It will going to disturb the concentration of the batters when you are inside the boundary line. Thank you. The 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Again from the far end, Dilip right arm over the wicket balls. This time lofted that one down to deep long on. It's going to be a very good stop by the fielder. This is a chance of run out. My goodness. This is I think it's Satish in the occasion is slight a bit of absence of mind after he completes that run out. He just wanted to get the run out in the striker's end, but quickly realizing that the batsman is slight a bit of struggling to reach his home. Then it's a very close one. Then third umpire Roland Pinto referred for the third umpire. It's 16 for the loss of 1 wicket, and a wicket here for
KCCR Kadri suddenly will going to give the opportunity to come back. Ashraf might be looking like he is also not that much of confident. Even the fielders of KCCR Kadri looks like they are confident, but we need to the confident level of the third umpire, whether he is having a confident enough to give out or not out. That's what you need to see here. The third umpire Vivek will going to get the result of this run out. It's 16 for the loss of 1 wicket. Everyone's eyes, we can see that the KCCR Kadri is just watching towards commentary box. So what could be the decision of this run out? Even two batters, Ashraf as well as Tanveer, having Vivek also said they wanted to get some good angles to get the result of that run out. Wait and see whether the batter is safe or not. Absolutely, the fantastic cricket tournament is in progress, and I would like to give a special thanks to Sampath Shetty, the managing partner of Lotus Properties. Thank you very much, Sampath Shetty, for coming here and spending in this very prestigious Nutan Champions Trophy 2023. And now the decision is suddenly is going to be very close here. Sometimes it will take us a little bit time to get the good result of this match, good result of this run out. And after this match, the mega final will go into play between team NFC Urwa versus team AK Friends. And after that, the Masters Trophy final between Gori Young Boys versus team Reliance Cricketers Jabbo. And after that, the last one, the final between Young Friends Urwa versus winner of this match. This second semi-final is definitely is in a very interesting. It's going to benefit this game. In this situation, is a not out, which is a decision from umpire. The batsman is safe, and Ashraf is safe here, so that decision now coming in favor of the batter Ashraf. So 17 for the loss of 1 wicket. Over number 3 completed, and 3 completed. It's 17 on the board for the loss of 1 wicket. Just coming back to the equation, and now 7 overs remaining, and the sense 42 deliveries remaining. They have to get another 37 runs to win this match. 37 required from 42 deliveries. The match looks to be very interesting. 1 or 2 good overs suddenly will going to bring KCCR Kadri back in the game. Wicket taking over also, that I think is good enough for them to back in the game. But sensible batting which is required for Talpa Toscana to get into the finals of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. Altogether, we want to say that this match is very difficult to predict. Slight a bit of upper hand here for Talpa Toscana, because they lost only 1 wicket, and so far the batter Tanveer is looking very good the first time in this tournament from the bat. The
Taslim is brought into attack. The starts with the delivery, which is coming into the batsman. Nicely played there by Ashraf. Sensible batting there from Ashraf. Just pushing the ball down to short cow point region, the vacant area to get the single. With the singles covered, Namozan to 18 for the loss of 1 wicket. Taslim is a very good bowler actually. One who represents for the team matrix, but he's not representative for team matrix in the local pool. So he's representing for KCCR Kadri in this match. This time chipped that one, but right in the gap. Down to deep cover point. Whenever the ball is running in the gap, it's going to be an opportunity for the batter to come back for the second. So Tanvir is playing a very important role here for Torpedoes Khana in this difficult condition where it is absolutely a very good condition for the bowlers. So 20 for the loss of 1 wicket. Now 34 more runs required for the victory. KCCR Kadri desperately required some breakthrough and economical over as a Taslim again. Right over the wicket to Tanvir. Tanvir this time lost his patience. Might be wanted to play that one against the turn. Extra bounce here for Taslim. Beaten by the turn and the bounce. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Taslim again. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Delivers. This is going to be a spectre wide. Big wide. Taslim might be try to get that one outside the line of leg stump while seeing that Tanvir is going for the reverse sweep, so that he's changing his line, but by changing that line he's lost his concentration, so he bowled a big wide outside the line of leg stump, and 21 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Taslim again. Away from us. Right arm over the wicket, drives that one right in the gap. There is no mid on, so that he will go and get a single quite easily. So runs are coming very freely now for Torpedoes Khana. It's a 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Taslim again. Back to his bowling mark. Right arm over the wicket, bounce. That ball very close to the leg stump, isn't it? That was very close to the leg stump because the batsman shuffled across the line of delivery. He wanted to get that one very fine because fine leg inside the ring. There is a deep square leg. Because of the Taslim, he's got extra pace in his bowling. If he get a slight bit of connection, he will going to get the boundary for that. Now square leg coming a little bit fine between fine leg and square leg. After that attempt which came from the batter, Taslim again balls, drives that one, not quite getting hold of that properly. Manjunath is just rushing to the ball, but fails to stop the single. So with the single, 1 more over completed, 4 gone. After completion of 4 overs, chasing 54 to win this match. It's 23 for the loss of 1 wicket. Now 6 over remaining, 36 balls remaining. They need to get another 31 runs to win this match. Now his time is exactly 6 o'clock. Now captain brought into attack now. Dilip is known as the bowler who can be the game changer, especially for KCCR Kadri so many times, especially in the RRP Memorial Trophy. He has been surprised everyone with his bowling performance. Now needed such kind of performance here if he wanted back in the game. The first ball outside the line of off stump and going to be a punishable from umpire. This is not a good start here from captain of the side, to conceding runs in the form of extra. 24. This time lofted, but out of the reach of the fielder. The Prasad, the fielder there in the deep wideish long on, the experienced campaigner down at deep wideish long on. And he picked up a single for that. 25 for the loss of 1 wicket. The partnership is building up here between Tanvir and Ashraf. This is really going to be dangerous for the fielding team. Again, Tanvir is looking now so confident. Now he is just reading that condition of the game as well as the condition of the ball which is used for this tournament and condition of the wicket. Once you get eye in, that is, it's going to be so easy. It's 26 for the loss of 1 wicket. This time going for the mighty one, misses the line completely. Luckily that ball just misses off stump. Maybe looks like the excitement here from the bowler. Maybe the ball has got a bat onto that. I don't know what really happened.
It's 26 for the loss of 1 wicket. The over number 5 is in progress. Right arm over the wicket bowls. Pushes and running. They're going for the quick single here. Sensible batting here from Ashraf. Just like I mentioned earlier, this is not a wicket where the batsman will going to enjoy the big strokes. So far, there is no number of sixes. Only I think the 5 to 6 sixes so far, and just 10 to 12 boundaries so far in this day number final of this cricket tournament. Again, misjudgment by Tanvir. He thought it might be a wide, and he's just left the ball. And wicketkeeper collects the ball. No chance of any runs. Score remains on 27 for the loss of 1 wicket. Half of the job completed. Now they need to complete another half of the job. Tanvir again. He will going to be striker. This time he lobbed it. And somebody. He is such a dangerous batsman. He is such a dangerous batsman. Once he get in, he is definitely going to be a game changer now. Magnificent retrieve out to deep long on. The captain been punished here. And that 6 will going to release the pressure there from Tarpado's Khana. It's 33 for the loss of 1 wicket. 4 overs completed. Very good score on the board for Tarpado's Khana. I request the two teams captain to be reported here for the toss. The captain of NFC Urwa as well as AK Friends. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. So immediately after this match, we are going to start the match without wasting a time. So needed some comeback here for KCCR Kadri. Likith brought it attack. One can be the very effective in this condition. Likith right arm over the wicket first ball. This time going for the big swing of the bat, but not quite getting hold of that and properly. Ashraf wanted to get a big shot here, but got a inside part of the bat, so that went towards a square leg region for a single. 34 for the loss of 1 wicket in the over number 6 is in progress. Likith again. Right arm over the wicket. This time delicately played there by batter. Sensible batting here from Tanvir. He knows that which hand is going to be suitable for the big shot. He knows that that far and it's going to be very difficult to get a big shot. So he's just dealing with a single. But in this hand, he knows exactly he can get the distance if he hit the ball properly. It's 35 for the loss of 1 wicket. Again, Likith right arm over the wicket bounce. This time swings that one, missed it completely. Ball just going down the leg stump. One more single has been added to total. With the addition of that single, Skubberna moves on to 36 on the board for the loss of 1 wicket. So slowly and steadily, Tarpado's Khana is just cruising towards the victory. The plenty of deliveries remaining. They need to get another 18 more runs to win this match. Oh, beautifully bowled. Sharp incoming delivery. Chance of run out there. The wicketkeeper misses it. Sandeep, leg by call by umpire. One more addition to total addition of that single. Skubberna moves on to 37. Now 17 to get. Still after this 4 overs remaining. Likith bowling right arm over the wicket to Ashraf. Ashraf wanted to get that one into the deep long on. Wide call by umpire, rightly so. One more extra. With that extra, Skubberna moves on to 38. 16 more runs required for the victory. The lights are on here in the UCG ground. The floodlights are on. This time Ashraf lofted it and ball is just going to the hands of mid-wicket. So Likith got a breakthrough here. I don't know it's going to be too late or not, but every time when the settled batsman back into pavilion, then opportunity slide a bit of created here for KCCR Kadri to back in the game. But I think needed regular wickets. The regular wickets were required for team KCCR Kadri if they wanted to back in the game. Otherwise, very difficult for them KCCR Kadri to save this match. 38 for the loss of 2 wickets.
16 more runs required for the victory. 25 deliveries remaining. Imtiaz is a new batsman in, the hero of the previous match, one who played a fantastic innings of fantastic innings in the quarter final against KFC Kodigal. Likith, right arm over the wicket bowls. This time when they played with the wrong line, he wanted to pedal that one down to square leg decision, but misses the line completely. One more over completed. It's completion of over number 6, chasing 54 to win this match. Torpedoes Kana are looking in a very strong position. It's 38 for the loss of 2 wickets. Prasad. So leg spinner is in action. Prasad is been introduced from the far end. Hossein Montero and KC Sarkar, they spring some the gamble there to bring that leg spinner because he's a very experienced campaigner. Prasad is a very experienced leg spin bowler. So bowling second time in this over. Right arm over the wicket delivers. This time went for the sweep shot. This time last line a bit of hesitation. Chance of run out. He left the ball. Oh my goodness. Prasad left the ball thinking about it might be a direct hit. But instead of need to collect that throw, he just left the ball. Otherwise it's going to be a chance of run out. It's 39 for the loss of 2 wickets. 2 very good deliveries to start with the Prasad. Still they have to get another 15 runs to win this match. Over number 7 is in progress. Prasad bowls. Nicely swept that one. Imtiaz knows that the condition of the game, which is rotation of strike, which is very much required, seeing that his partner Tanveer is a settled batsman in the middle. 40 for the loss of 2 wickets. 14 required for the victory. This time he loved it and he will going to be out. Ashit down at deep long off, making no mistake at all. Prasad has got a very important breakthrough now. 40 for the loss of 3 wickets now. Still they have to get another 14 runs. KC Sarkar can back in the game. Just like I mentioned that they needed wicket. In each and every over they needed 1 or 2 wickets of Torpedoes Kana. Tanveer might be wanted to finish up the things quickly. But this is a cricket. It's not like that. What you wanted you need to get. But a very good innings, I want to say. Very good innings of Tanveer is comes in and scored a valuable 18 runs. Before he's back into pavilion, he scored a valuable 18 runs with the help of 1-6 and a boundary in a difficult batting condition. So Prasad has got a very important breakthrough here. Ashwin is a new batter in. This time bowler's back drive. One more dotted delivery. So far it's a very good over there from Prasad, justifying that leg spin is still it's very effective in the condition. This time flicks it off his legs. Down to mid wicket direction. They're running hard. They're looking for the second. But once again they're not. Looks like Imtiaz. Looks like it's going to be a hamstring injury in that tie, which is definitely going to be the problem here. And the 41 for the loss of 3 wickets. So toss which is completed of the finals, the mega final of the prestigious Nutan Champions Trophy in the local pool. The captain of NFC Urwa won the toss. They elected to field first.
always going to be very painful when you are having a cramp in the thigh, and if it's a lower part of knee and below the knee, it's not that much of painful. But when you're having the muscles catch in your muscles in the back of the thigh, it's always going to be painful. And looks like Imtiaz is recovered quickly. 41 for the loss of 3 wickets. 7 overs gone. 3 overs remaining. The 18 balls and 13 runs required for the victory. Still, KCR Kadri got his opportunity to back in the game, but so far Torpedoes Khana looking in a commanding position. They lost only 3 matches. .41 for the loss of 3 wicket. Likit bought it attack. Reverse service comes into play. Ashwin quite rarely playing that kind of cricketing stroke, but sometimes condition is forcing him to play that kind of cricketing stroke. It's 42 for the loss of 3 wicket. 12 more runs required for the victory. Likit have to produce the over of his lifetime, and in the sense of wicket taking an economical over is badly required for KCR Kadri, but a sensible batting which is required for Torpedoes Khana. This time outside line of time, just steering that one down to third man region for a single. Very good understanding between the wicket, because both are played each other along with of course being the player of young friends Urwa. They played for a long year, so that they got a very good understanding between the wicket. Slight a bit of that ball is outside the leg stump, but well within the reach of the batter, because Ashwin is shuffled across the line of delivery to get that one down to the fine leg, and no chance of any run. Likit again bowls. This time once again he was going for the opportunity. Sandeep definitely missed that golden opportunity, because the hesitation for the run, that time I think Sandeep has got a golden opportunity to return the ball to the hands of Sailesh, correction, not a Sandeep, the brother of Sandeep. The 44 for the loss of 3 wickets. That's the problem when you are not having a regular wicket keeper. 44 for the loss of 3 wicket. Likit again back to his bowling mark, searching for the dotted delivery, searching for the wicket taking deliveries. Right arm over the wicket bounce. This time shuffled across the line. Nicely turns that one down to fine leg region for a single. So far Likit fails to give any impact in this impression in this over. Both the batters are quite comfortable to get the single. 45 for the loss of 3 wickets is quite enough for them to back in the game. This time punishable from the umpire. White call by umpire. Each and every extras will go in to give a chance here for Torpedoes Khana to win this match quite easily. 46. 8 more runs required for the victory. Nicely driven down to deep long off region for a single. With the singles covered moves on to 47 for the loss of 3 wicket. Slight a bit of confusion here. The last ball, Arish Padil. He's in slight a bit of urgency, but batsman reaching for the delivery, which is outside the line of off tempo. Maybe if he left the ball, it's going to be a wide. That's why. But Ashwin picked up a single there. 47 for the loss of 3 wickets. 7 to get from 2 overs. Prasad now came into ball, the very important stage of the innings, where KCR Kadri needed one good over. The over of just 1 or 2 runs will take this match to the last over. It's going to be very interesting, but Torpedoes Khana suddenly, after getting such a good position, they doesn't want to lose the momentum here. Ashwin and Imtiaz is knowing for rotation of strike. They're knowing for the rotation, so that they doesn't want to miss the opportunity. This time catch it is a call and it's gone. Ashwin is gone. Prasad produced a breakthrough here.
will it go into be opportunity for KCCR Kadri here? Because still 7 runs required for the victory. 11 balls remaining. Now Prasad continues. Basit will go into ball outside the non stump, well within the reach of the batsman. Batsman missing the golden opportunity to swing his bat, isn't it? Basit might be thinking about that might be a wide, but that ball well within the reach of the batter. He can swing that one anywhere down the fine leg and square leg. To 47 for the loss of 4 wicket. 10 balls remaining now. 7 runs required for the victory. Basit swept that one nicely down to square leg region for a single. Imtiaz looks like he is not that much of comfortable in the middle. 6 required. 9 balls remaining. Six required now. 9 balls remaining. Prasad. Beautifully ball. Perfect one. Absolutely perfect delivery there from Prasad. This is what we're talking about, the experience of the players. The Prasad is putting his all experience. It's not easy condition. He knows that this is 1 hour. He can bring the team back in the game. 48 for the loss of 4 wicket. 6 required for the victory. This time again, opportunity of run out. In the non-strikers. Oh! Prasad! So once again try to collect the ball in a non-striker zone in front of the wickets. Absolutely golden opportunity. This is the presence of mind what we have always required for the bowler. You need to collect the throw behind the wicket, not in front of the wicket. Because you are collecting the throw in front of the wicket means you are just giving the opportunity for the batsman to cross over. At the same time, if it is a direct hit, 50 comes off here, 50 comes off, 4 required. That even if there is a direct hit, then definitely it's the opportunity of direct hit here. Prasad collects the ball in front of the stumps. 2 bonus run here for the team. Absolutely. What could be a chance of run out for KCCR Kadri? Because of that, they got 2 valuable runs for the opposition. Last ball. Still 4 to get from 7 balls. Imtiaz nicely plays it down in the gap. They will definitely come back for the second. Imtiaz, have a look at the running between the wicket. Even though he is not 100% fit, but when the condition is asking him to go for the second run, he is not really giving the opportunity, missing the opportunity. 2 required from last over. So that one opportunity of run out. This might be becomes a slight bit of costly here for KCCR Kadri registered. So many semi-finals for KCCR Kadri in this season. They missed out. This is one more semi-final. The KCCR Kadri are looks like they're in trouble. They're in a trouble. Match which is not yet over. Still 2 runs required for Torpedoes Khana. But some magical bowling required in the last over. Vishal, he's got a ball in his hand. The Bashit is on strike. All we can see that closing fielder. Short fine leg, square leg, short mid wicket. The mid on is there. Short mid off, short cow point, silly mid off. The first ball went for the reverse stroke. They wanted a single, but going against that one. 5 balls, 2 runs required for the victory. Only 4 wickets down. That means as far as the rules and regulation of this particular tournament is concerned,
Even one run without losing a wicket is enough for them to win the match. Nicely plays it down to square leg region for a single. The scores are level. Scores are level. Just one run required for the victory for Torpedoes-Khana to enter into the consecutive second times in the UCG cricket ground. After that, in the Saharda Trophy, they become the champion. Now, they need to wait for another 3 deliveries, I think so. So 53 for the loss of 4 wicket, 1 run required for the victory. Imtiaz has got opportunity to get his winning run for his team. Fantastic tournament has got from the bat. This time he drives it very hardly down to deep cover point boundary for 4 runs, and he will going to get the 4 now because they not completed a single. There's good thinking by Imtiaz because he will going to get 4 runs for his individual account. And 57 for the loss of 4 wicket now. Torpedoes-Khana once again, the consecutive second time they are through to the final of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023, and they will going to play against young friends Urwa in the mega final. That final will going to play after the finals of local poll, after the finals of Masters, and then they will going to play for the title of prestigious Nutan Champions Trophy. We'll take a short break. Congratulations, Torpedoes-Khana. Hard luck, team KCCR Kadri. Still is not good enough. That total, I think total might be good enough, but the bowling which is not good enough here from KCCR Kadri to depend. And one more hard luck here for KCCR Kadri. They lost the match. Congratulations for the winners. Better luck for KCCR Kadri for the next time. So we are into the finals of local pool. It's between NFC Urwa versus AK Friends. We'll take a short break here, and after a short break we are back in the game. Thank you.
So here is the six captains in fact, six captains, those who are qualified for the finals of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. The captain from the right, captain of Reliance Cricketers Jap Quresh, Karna of the captain of Gori Young Boys, Santosh is captain of Young Friends Urwa, and captain of Torpedoes Kana looks like it's a Bashit, and the captain of NFC Urwa Ranjit, and the captain of AK Friends Chetan. And the six captains, they are very lucky captains, and they will going to get a silver coin as far as in this tournament is concerned, Nutan Champions Trophy is concerned. The silver coin for all six captains, very happy captains. Thank you, congratulations for all captains for qualifying for the finals of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023.
धन्यवाद सतीश. Right, the match starts in a local group, the grand finale of a local pool between NFC Urwa versus AK Friends, and NFC Urwa, after won the toss, they elected to field first, and the first ball of the innings of AK Friends is now coming up. Right arm over the wicket. First ball, absolutely fantastic one this time. Missing just outside the off stump, and the batsman survived in this delivery. बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, परफेक्ट लेग कटर. गेंदबाज रंजीत द्वारा और इस गेंद पर स्ट्रोक लगाने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. फिर से एक बार रंजीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन निशाना इससे पहले की लगाई गेंद उनके हाथों से छूट चुकी थी और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके थे और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर एक रन पर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका. 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार. रंजीत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए प्रज्वल. और लगभग अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ, फ्लड लाइट्स की बत्तियां इस वक्त जल चुकी हैं और इस बीच खेल आगे बढ़ता हुआ अंडर फ्लड लाइट्स. और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था. ना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके का खेल, शॉर्ट कवर की दिशा में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन पर. और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ सबसे बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त एके फ्रेंड्स को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो. 8 ओवर प्रतिभारी जो कि खेले जाएंगे और अगली गेंद लेकर रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. और रशीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार रंजीत की, रशीद ने गेंद को खेला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट. He's got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर खेला जाता हुआ. रंजीत फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. लोकल पूल का फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले, मेगा फाइनल मैच यहां पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग ऑफ कटर डिलीवरी, लेग कटर डिलीवरी इन फैक्ट, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम रंजीत. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, AK Friends, after being losing the toss and put it to bat by NFC Urwa in the mega final match, they made a slower start. In fact, they managed to score 4 runs on the board, yet to lose any wicket. Still in overall calculation, it's going to be 7 overs remaining in their innings. और हमसे दूर वाले छोर से डिसोजा फैमिली बोलूर और ऑस्टिन मोंटेरो एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए प्रज्वलित, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद को. और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. इस बीच बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. अगली गेंद लेकर तैयार, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार कहना पड़ेगा. और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रज्वलित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा. पहली गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद रशीद ने कट करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार प्रज्वलित बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए.
और इस वक्त थ्रो फेंका था शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने, लेकिन स्टंप से काफी वाइड निकलता हुआ, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं। 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। प्रज्वलित फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया स्क्वायर लेग पर, और स्क्वायर लेग फील्डर के बाईं ओर से गेंद निकले, अपने पैर के जरिए गेंद को रोका और दूसरा रन लेना चाहते, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रशीद एक बार फिर से सामना करते हुए इस वक्त प्रज्वलित की ओवर की अगली गेंद का बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total in the face of wide, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस। Left it, not quite mid wicket. In fact, he's got a single for that stroke. गेंद पहुंचते हुए लॉन्ग ऑन पर, जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएफसी उर्वा के, और प्रज्वल सामना करने के लिए तैयार। प्रज्वलित की गेंद का ये गेंद रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, एंड he finds the gap as well. It could be gone over the field. Long chase for the fielder, and this time he stopped the ball inside the fence brilliantly. और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने रोका, और इस बीच 3 रन बल्लेबाज के पास लेने का मौका, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 11 रनों पर। परफेक्ट इम्प्रोवाइजेशन इस गेंद पर प्रज्वल में किया था, और 3 रन वो प्राप्त करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार प्रज्वलित। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार प्रज्वलित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 13 विदाउट लॉस, और 2 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। सो गुड ओवर इन AK Friends point of view came to an end. 9 runs came from this over, and after 2 overs they are recovered well after being a slower start in the first over. It's 13 without loss after completion of 2 overs. 2 ओवर पावर प्ले का खत्म हो चुका है, और 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और गेंदबाज प्रताप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रताप। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत लोकल पूल का मेगा फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ एनएफसी उर्वा और AK फ्रेंड्स कोडिकल के बीच में, और निश्चित रूप से इस लोकल पूल का खिताब ट्रॉफी अर्जित करने के लिए संघर्ष यहां पर जारी है। और प्रताप ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, डीप बैक और स्क्वायर लेग पर 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, और प्रताप फिर से एक बार गेंदबाजी का क्रम यहां पर जारी रखते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार विकेट से हटते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेला इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए ये दोनों सलामी बल्लेबाज AK फ्रेंड्स के लिए ऑन साइड पर जस्ट वाइड ऑफ द मिड विकेट फील्डर दिस टाइम, बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप मिड विकेट। इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंप्लीटली एट लास्ट। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 17 रनों पर। 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर AK फ्रेंड्स आफ्टर बीइंग अ स्लोवर स्टार्ट इन द फर्स्ट ओवर। और इस बीच प्रताप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस, और फिर से एक बार प्रताप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लॉफ्टेड डाउन टू लॉन्ग ऑन, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और प्रताप एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट,
इस बीच प्रज्वल सामना करते हुए रिवर्स शॉट एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. The ball passed below of his bat and stuck to his middle of stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 1 for AK Friends. Prajwal departs and now loses their first wicket. 18 for the loss of 1 wicket in the over number 3 for AK Friends. Nikhil, number 3 batsman is now comes out to the middle. और जहां तक निखिल का सवाल है, एके फ्रेंड्स को इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के मेन कारण करता वो है पिछले 2 दिन पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में यंगस्टर वामद पदों के खिलाफ 42 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी. 57 रनों के लक्ष्य का पीछा 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने लक्ष्य को पार किया था पारी की दूसरी अंतिम गेंद पर, जबकि वहां पर प्रज्वल ने एक बेहतरीन पारी वहां पर खेली थी 42 रनों की. स्कोर्ड अनबीटन 42 अगेंस्ट यंगस्टर वामद पदों इन द सेमीफाइनल मैच just 2 days ago and brought memorable victory for his team because of his fantastic knock of unbeaten 42 runs. Plum, absolutely plum. Just gone for a mighty heave, not succeeded. The ball stuck to his back leg and umpire has no hesitation to rule him absolutely plumb in front. Second wicket gone. It's 19 for the loss of 2 wickets. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ भगवान ने एक और बेहतर बल्लेबाज एके फ्रेंड्स की ओर से इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज 1 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए प्लम्ब इन फ्रंट. भगवान की पारी समाप्त. पैर पर गेंद टकराया, उनका पैर बिल्कुल मिड स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. तीसरा विकेट गिर चुका है. भगवान आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए शून्य पर और अब कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ एके फ्रेंड्स 20 रनों के ऊपर तीसरा विकेट खो चुका है. इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर एके फ्रेंड्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. So the new batsman is now comes out to the middle. अल्ताफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन का इजाफा. 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और
फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑन पर। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। रन्स ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर जमने की कोशिश करते हुए, इस बीच निखिल सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, रन मिलेगा इस बीच। एक रन लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, तो बराबर का संघर्ष यहां पर जारी इस मेगा फाइनल मैच में लोकल पूल के। और 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड अ डॉट बॉल टू एंड द ओवर। 4 overs completed, 23 on the board, yet to lose any wicket, and the equal battle is now continuing here. Still in overall calculation, it's going to be. So 23 for the loss of 3 wicket of completion of 4 overs, and they are looking. The equal battle is now continuing here. 23 for 3 after 4 overs. Fifth over starts in their innings और पहली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, फील्डर गेंद पर पहुंचे लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। 5th ओवर इन प्रोग्रेस in the over number 5th over in progress, and it's 24 for the loss of 3 wickets. Runs are badly required for the AK friendship. They have to post a huge target in front of the batsmen of NFC Urwa when they are coming to bat. पहली अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, शॉर्ट कवर पर एक रन का इजाफा। 25 for the loss of 3 wicket. 5th over in progress. The equal battle is now on. और फिर से एक बार प्रताप गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट, बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से पुश किया और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। तो क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और खासकर ऐसा कहना पड़ेगा निखिल की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी प्रताप की, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की धीमेपन को भाप नहीं पाए, लगभग गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर टकराने के बाद जब स्क्वायर लेग पर फील्ड हो, एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, गॉन थ्रू फॉर क्विक सिंगल। बल्लेबाज ने पहले ही भाप लिया था कि इस वक्त जो फील्डर है थोड़ी से पीछे इस वक्त तैनात था और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 28 on the board, 3 wicket lost and 3 overs remaining in overall calculation in the innings. तो छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट, छठा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। नीतीश गेंदबाजी, पहली गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन का इजाफा और लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज नीतीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इंप्रोवाइजेशन करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 1 more run added to the total in the face of leg by. It's 30 for the loss of 3 wicket. रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए के फ्रेंड्स के लिए और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज
करारे स्ट्रोक्स जो कि छक्के लगाने की कोशिश इस वक्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और अपनी अगली गेंद लेकर नितेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट। 31 नाउ। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। एक बेहतर रनिंग तो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एनएफसी उर्वा के इस बार ऑन साइड पर फ्लिक किया, ऑफ द टोस, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, निखिल दौड़ा है लेकिन यहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दूसरे स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा, नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं, और इसी के साथ उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। अल्ताफ की पारी समाप्त और 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। तो छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और यहां पर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त निखिल की उपस्थिति एक फ्रेंड्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि निखिल ने जिस तरीके की पारी 2 दिन पहले सेमीफाइनल मैच में खेली थी यंगस्टर मोहम्मद पदो के खिलाफ 42 रनों की अविजित, उस तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है उनके बल्ले से, अगर एक फ्रेंड्स को इस वक्त एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते हुए महेश, जो कि स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त मौजूद, और निखिल इस वक्त उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद नितेश, राइट आर्म राउंड द विकेट, बॉलिंग टू अ लेफ्टी बैट्समैन महेश। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए, रात धीरे धीरे होता हुआ, मैदान पर अंधेरा इस वक्त छाता हुआ, और फ्लडलाइट्स की रोशनी इस घने अंधेरे को चीर कर मैदान पर इस वक्त गिरती हुई, स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। Just opening the pace of the blade at the last moment, just steering it away down to third man, just wide of the third man feeder, and he just got a couple of runs for that stroke, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress। और रन बटोरने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए बल्लेबाज एके फ्रेंड्स के, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार शेयर करना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 34 for the loss of 4 wickets scored by AK friends. Still they are searching for the right track. 2 overs left in overall calculation in their innings. So इस मैच के बाद अगला मैच मास्टर्स विभाग में खेला जाएगा, फाइनल मास्टर्स ट्रॉफी के अंतर्गत मेगा फाइनल मैच रिलायंस जप्पू और गोरी यंग बॉयज के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि रिलायंस जप्पू और गोरी यंग बॉयज के सर्व सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। मास्टर्स विभाग का मेगा फाइनल मैच मास्टर्स ट्रॉफी के अंतर्गत खेला जाएगा रिलायंस जप्पू और गोरी यंग बॉयज के बीच में अगले मैच में। तो 7वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, 7th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार वृंदावन कंस्ट्रक्शंस एंड की ओर से किरण, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, निखिल सामना करते हुए इस वक्त यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिला, दूसरा रन लेना चाहते हैं निखिल लेकिन नहीं मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रन पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर इन फैक्ट। और एक बार फिर से गेंदबाज किरण अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश के लिए शेयर करना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। गेंद को स्टीयर करना चाहते थे लेकिन न गेंद गई थोड़ी सी वाइडर, और फॉलो थ्रू में जब तक गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइक रन पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। अंपायर कुछ कहते हुए इस वक्त बल्लेबाज से, और
गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए किरण, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद निखिल सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेलना चाहता लेकिन गेंद की लाइन को भापते हुए गेंद को छोड़ दिया, गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और अगली गेंद इस बार रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंप्लीटली एट लास्ट। 38 for the loss of 4 wickets now. 7th over in progress in their innings. Still the runs coming in singles now for the batsmen of AK Friends. और इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल अभी भी बाकी। फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी घने अंधेरे को चीरकर इस मैदान पर गिरती हुई, इस मैदान को चकाचौंध यहां पर करते हुए, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का लोकल पूल का मेगा फाइनल मैच यहां पर प्रगति पर। राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन मिलेगा, 22 का इशारा, स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निखिल बैक ऑन स्ट्राइक फेसिंग किरण, दाहिने हाथ ओवर द विकेट निखिल के लिए, रक्षात्मक तरीके का खेल लेकिन यहां पर चूके विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम यहां पर किया। तो निखिल की बेदरकारी पर पर्दा गिर चुका। 2 दिन पहले जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली थी उसके बिल्कुल तद्विरुद्ध पारी यहां पर उन्होंने खेली, और यहां पर काफी डिफेंसिव बल्लेबाजी उन्होंने की। अगर आखिरकार रन्स सिर्फ 4 रन बनाने के बाद यहां पर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 5वां विकेट गिर चुका है 39 रनों के ऊपर। इट्स 39 for 5। तो इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का, और नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए प्रणीत इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल एज अ नंबर 7 बैट्समैन फॉर AK Friends. And as far as the good score is concerned for AK Friends, they badly required a couple of big strokes at this stage in the face of boundary and sixes if they are to post a huge target in front of the batsmen of NFC Urwa when they are coming to bat. और यहाँ पर देखते हैं बचे हुए गेंदों में किस तरीके की आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाज अपने रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए। किरण अपनी ओर की अगली गेंद, नए बल्लेबाज प्रणीत इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद पुश किया रक्षात्मक तरीके से, सेंसिबल पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इसी के साथ ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है। 7 overs completed, 40 on the board, 5 wickets down, and now just a last over remaining in AK Friends innings. 7 ओवर के खेल को अगर नाप तोल कर देखा जाए तो अच्छी खासी गेंदबाजी 7 ओवर में NFC के गेंदबाजों ने की है। सिर्फ 40 रन प्रदान करते हुए 5 विकेट उखाड़ने में सफल AK Friends के, और इन हालातों में अगर AK Friends के गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर पहले ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर दबाव NFC के बल्लेबाजों पर आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन उससे पहले देखना यह है कि अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा AK Friends के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। अंतिम ओवर ऑस्टिन मोंटेरो इनकी ओर से शुरू होता हुआ, रंजीत जिन्होंने पारी का पहला ओवर फेंका था और पारी का अंतिम ओवर लेकर इस वक्त तैयार, हमसे दूर वाले छोर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप दिस टाइम, फाइन, इट्स गॉन फाइन, बीट द फाइन लेग फील्डर, और गेंद इस वक्त थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर जाते हुए, और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त 22 के रूप में पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जैसे ही गेंद को पैनल स्वीप करना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने दौड़ना शुरू किया फाइन लेग की ओर, लेकिन गेंद विकेट कीपर को बीट करते हुए निकल गई शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र से, और जब तक अपने आप को संभाल कर फाइन लेग से दौड़ना शुरू किया फील्डर ने, गेंद का पीछा किया जरूर लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी। डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 22 के रूप में चौका प्राप्त कर चुके हैं इस वक्त AK Friends के बल्लेबाज, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 8th ओवर। इन फैक्ट 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए,
दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर मौजूद इस वक्त गली क्षेत्र पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. जस्ट 4 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स. और देखते ही हैं कि इन बचे हुए 4 गेंदों में क्या एके फ्रेंड्स के बल्लेबाज अपनी टीम की कुल रन संख्या को 50 के पार ले जा पाते हैं या नहीं. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए रंजीत डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर की इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है स्क्वायर लेग पर, और थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात करते हुए स्क्वायर लेग फील्डर को, और राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश के लिए. रंजीत इस बार ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल. जरूरतमंद रन से इस वक्त जुड़ते हुए एके फ्रेंड्स के खाते में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 रनों पर. 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और अभी भी 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी. अब सामना करने के लिए तैयार प्रणीत, और रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार इंप्रोवाइजेशन, गेंद को खेला इस वक्त, स्कूप किया फाइन लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल. 48 3 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स. और रंजीत इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, महेश और प्रणीत एक बेहतर साझेदारी इस वक्त अपने टीम के लिए इस वक्त निभाते हुए, और रंजीत दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. तो एट लास्ट बल्लेबाज प्रणीत का विकेट गिर चुका है स्ट्राइक रेट पर रन आउट होते हुए, और विकेट कीपर ने बेहतर तरीके से विकेट यहां पर उड़ा दी. 48 for 6 एंड नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. Shailesh comes out to the crease as a number 8 batsman for AK Friends, और 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और गेंदबाज इस वक्त रंजीत फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. शैलेश सामना करने के लिए इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, he's got that one fine, it could be gone over the fence, just we are trying to see long chase for the fielder, but he won't get that one, and it's crossed over the fence for a boundary. Perfect struck improvisation from Shailesh in this delivery. He just played that one with a twisted bat with a reverse shot and finds the gap as well, just wide of short third man fielder, and with that boundary the 50 comes up in the second last delivery of their innings for AK Friends. 52 for the loss of 6 wickets. The last ball now remaining in their innings. और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए यहां पर गेंदबाज रंजीत, अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय स्टिपुलेटेड टाइम समाप्त हो चुका है, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. सिर्फ 4 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद सीमा रेखा के पास, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए गेंदबाज रंजीत, और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है शॉर्ट थर्ड मैन पर. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. रंजीत बाउल्स, ये गेंद उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट कवर पर, 1 रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल द इनिंग्स इज अप. देयर स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड, एंड AK Friends after being a slower start they finished well with the 53 for the loss of 6 wicket in their stipulated 8 overs, and now the target for NFC Urwa is 54 to clinch the prestigious Nutan Champions Trophy 2023 in local pool, and let's see can they reach the target or not. Local विभाग का मास्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब अर्जित करने के लिए 54 रनों की दरकार. 54 the target, exactly 6.75 the required run rate for them at this situation. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. That means they have to score 54 runs in the stipulated 48 dealers with the help of 10 wickets. और देखते हैं
वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं, तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद चंद लम्हों बाद। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर एनएफसी उर्वा की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi, and welcome back for the chasing for NFC Urwa. And I think it's a good score for AK friends, and especially when you are playing against fantastic bowling department, what NFC Urwa has got, and I think it's a pretty good total. In 8 overs format of a game, so 54 is always it's going to be a good total, and to depend. But cricket, everybody knows this is an unpredictable game, and NFC Urwa suddenly the being the locals being they're very used to the condition of usage cricket ground. They will going to try hard for the victory here, because winning is totally different, and no teams wanted to be in the runner up. Every team wanted to be in the all the teams wanted to be the winner of this prestigious Nutan Champions Trophy 2023. So 54, which is the target. Just we are talking about NFC Urwa. Definitely they will try. They will going to try hard. But I think for that they need to bat very well, and especially the first 2 of the power play, they definitely wanted to capitalize so that they can back in the game. So that is slight a bit of change in opening pair. That's why here is a batter getting some promotion, and promotion in the sense hard hitter of the ball. Vaishak has got a promotion in the order along with the Tilak. He will go into open innings. Just seeing that they need to capitalize that power play over. Of course, this tournament, which is running very successfully, only after this final, another 2 finals which is remaining, and this all happens because of the cooperation for heartfelt cooperation from the cricket lovers. Especially, I would like to give special thanks to Kiran of Mangalore cricketers. He is the one behind the success of this cricket tournament, and in his own way. And because some people we are not coming in front of the screen, but behind the screen they are definitely contributing for the success of this cricket tournament. And I would like to give special thanks to Kiran of Mangalore cricketers for your cooperation for the success of this cricket tournament. We are grateful and thankful on behalf of Nutan friends Urwa for your support for the success of this cricket tournament. Thank you very much once again. Roshan of Morning Star, if you are there in our in this usage cricket ground, I request you to please report here in committee box immediately. Morning Star ಇದರ ರೋಷನ್ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, the chasing is on, and highlight of the innings of AK friends. I think the contribution which is certainly all the players has got a contribution. Small contribution from all the players, and some extras which is certainly will going to be a big contribution in this 54, and that's what NFC Urwa need to recover from that extras. What this is ball him, clean him up, magnificently bowled by Bhagwan. This is the kind of delivery always going to Bhagwan. In his career, he got a lot of wickets. The incoming delivery, sharp incoming delivery. Tilak slide a bit of making room to play the shot. That's why he is exposing his all stumps. When you expose your all stumps, trying for the expansive drive, that means you are giving absolutely perfect idea for the bowler where to pitch and where to turn, and fantastically bowled.
and it's 0 for the loss of 1 wicket. And absolutely, it was a fantastic scenario in our commentary box. Here we have a legend Iqbal having with their grandson as well as granddaughters. And so cute, the granddaughter just observing me what is talking. And thank you very much. We are back to the game. And the first ball, next ball, which is the batsman completed a single, and the new batter in is Kiran just got a promotion up in the order because they lost the wicket of Tilak, so that needed to have one cool batsman and a technical sound batsman. This time again he wanted to get the single. There is chance of run out in the non-strikers, and but the throw is not good enough there from the wicketkeeper behind the stump. Tried to shy at the stumps in the non-strikers end, and batters completed a single. It's 2 for the loss of 1 wicket. I request the Masters, Gori, Legends Masters, as well as Reliance Cricketers Masters, please be reported here to sign the official chart as soon as possible. One more single has been taken there. The score now moves on to 3 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Bhagwan again, bowling away from us. Right arm over the wicket, swings and missed everyone. This is always going to be a disaster, isn't it? Whenever you are going to want to field liberal correction, bowler wanted to defeat the bat of the batter, and wicketkeeper fails to collect the ball. There is a short third man and a short fine leg, and just a spectator watching the ball going towards a deep third man boundary for 4 runs. This boundary will going to give the opportunity to come back for the bowler, for the chasing team. It's a gifted run here for NFC Urwa. They will going to enjoy this over, this boundary, because they didn't got enough runs on the board. There's some appeal is going on. Appeal is going on here from the fielders of NFC, AK friends. Slight a bit of excitement rather than the confidence. We can clearly see that. And this time it's looks like it's going to be one more wicket here. Now NFC Urwa, they're in the deep in trouble. So now looks like even though they got enough runs on the board, but they lost 2 valuable wickets.
team NFC Urwa looks like they're in a trouble. And the Vaishak, who has been sent to open the innings to get some acceleration, especially in the power play over, but he fails to get acceleration. And it's 8 for the loss of 2 wicket, and it's a little bit disappointment here from Vaishak. He couldn't manage to take the advantage of the power play. But in this particular tournament, I am not seeing that the power play over which is exploited, but rather than every teams which is suffered in the power play over, and same thing is happening here. So bowler once again back to his bowling mark. Reliance Cricketers ತಂದ ಕರುಣಾಕರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Again slight a bit of push there from the batter, new incoming batter Pratap. Now that I think this is the one pair. This is the one pair for NFC Urwa. Certainly wanted to spend a time in the middle, and these two players definitely going to be very key player if they wanted to win the match. They got a potential of playing a long innings and sensible innings. Right over the wicket it was. It's going to be a wide. This is going to be a absolutely bonus run when the condition is a slight a bit of difficult one for the batters. The conceding wide means it's going to be a slight a bit of opportunities created for the batter. One more single. With that single, Scober now moves on to 10 for the loss of 2 wicket. Rohit balls. This time, straight to the hands of cover point. Kiran departs. AK friends are now looking in a top. It's 10 for the loss of 3 wicket. That's what I'm talking about. If any team gets a 50 plus runs on the board in this particular tournament, they are always the favorite of winning this match, unless any miracle will going to happen, and unless any sensible batting which is going to happen. It's always going to be a difficult condition, especially under floodlight. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕೇವಲ 3 ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Now it looks like it's a difficult condition here. Pawan is a new batsman in the middle, just promising left-hand batter. Got a very good technique, and wait and see how he's going to handle the pressure. But Rohit looking so good so far in this over, sensible. But it's a chance of run out. But throw is not good enough there from the fielder. So tied over there from Rohit. A very tidy over. Just 3 runs came from that over after completion of over number 2. Chasing 54 to win this match. 4 runs from that over. It's 11 for the loss of 3 wicket after completion of over number 2. Just coming back to the equation, the 11 which is deducted from 54, that means they have to get another 43 runs to win this match in remaining 6 over. 36 ball, 42 runs required for the victory, and required run at exactly 7 runs per over. It's manageable only if they able to play sensibly. So 11 for the loss of 3 wicket. Here is Vinith. Pranit bowling right arm around the wicket. Again that ball is just going to miss the leg stump. Looks like that. And one more single has been added to total. With that single, Scoper moves on to 11 for the loss of 3 wicket. Pranit bowling to missing the off stump. Correction, I want to say. Yes, because the right-hand batsman is on strike. Again, right arm around the wicket. Nicely played there by Pawan. Pawan now quickly realizing that sensible batting which is badly required.
Nothing went wrong here for NFC Urwa. Still one partnership can bring them back in the game. That's why AK Friends knows that if we allow the batsman to settle down in the middle, then it's going to be very dangerous for AK Friends as well. But 54 is always going to be a psychological advantage for a team which is defending the total. It's 12 for the loss of 3 wicket. Praneeth bowls outside line of stump. Batsman going for the cut shot, missing it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Each and every dot ball will going to create the problem here for the this time again. Bowler bowls that good delivery again. So 13 for the loss of 3 wicket. The over number 3 is in progress. Match is in this particular situation. Looks like AK Friends are in a slight bit of upper hand, but not totally. So this is just the third over is in progress. Praneeth again. Bowls. Pawan nicely plays it down to square leg region. Just a flick of the wrist comes into play. One more single. You cannot underestimate the singles in any form of the game, especially in a 8 overs form of the game. It is a very useful. Rotating the strike and getting some extras is going to help the team to chase down. Right arm over the wicket again. Nicely bowled. Beautiful delivery there from Praneeth. One more dotted delivery in this over. And after completion of over number 3, chasing 54 to win this match, NFC was still searching for the right track, struggling in the middle. Now another 40 runs required for the victory in remaining 5 overs. 30 ball, 40 run required. The difference between run and ball exactly the 10, and that difference what NFC have to bring back slight a bit of down in each and every over. That means they cannot play now onwards the dotted deliveries. They need at least they need to rotate the strike 6 runs per over, and once if they are able to get one big over between that, then it's going to be a NFC they got opportunity back in the game. But so far I think looks like they are in a top. Now we can see that legends out here in our commentary box, and a special welcome for Prasanna of Mangalore Cricketers, one of the fantastic and very decent wicketkeeper batsman, and during 90s till 2000, the middle of the 2000, he is the one of the top wicketkeeper batsman for Mangalore Cricketers. Not only is enjoy the game of cricket in underarm cricket, but even in overarm cricket also is one of the top wicketkeeper batsman, the Prasanna. And we have of course Mohan Suvarna and Rohan Montero, and one more legend, of course Quresh and Salim Mama. Absolutely, and they will going to witness now in the Masters finals of this prestigious cricket tournament. 14 for the loss of 3 wicket. Again nicely behind the line of the ball. Pawan looks very good, technically sound. This time, oh, they're going for the extra run. Overthrow. These all runs are going to be about, oh my goodness, one more chances here. But Pawan too far is across that striker's end, so that he couldn't manage to take the advantage of that another overthrow. Otherwise it's going to be 3 valuable runs. That's what I'm talking about. The cricket is all about. This is a mind game sometime, isn't it? More than the physical game. Sometime it's a mind game. The batsmen have to read the condition of the game. Read the condition of game is very important. 16 for the loss of 3 wicket. Rohit from the far end. Right arm. Balls edging it down the third man range, and they're going for the quick single. Direct it and it's gone. Huge wicket here for AK Friends. Absolutely big fish in the net. Pratap departs. Pratap departs for the direct hit. It's definitely going to be a huge breakthrough,
And definitely NFC Urwa doesn't want to lose that man, one who is considered to be one of the danger batsmen for any opposition, who got a potential of playing a long innings, who got a potential of changing the complexion of the game. He's back into pavilion now. Definitely NFC Urwa, they're in the back foot. And the AK fans are looking in top now. This is all happening, the body languages, we can see that when AK fans are won the match against a formidable youngster Vamadapadav, when they defeated that team, when they were chasing that 56 runs, and Nikhil played a fantastic one-man army, that batting performance, then we can see that the body language of AK fans, this is a big difference, isn't it? When you are going to defeat the big teams, then you are looking different. Even NFC Urwa, they came into this tournament, came into this final as a favourite. Now they are looking in a more trouble. It's 16 for the loss of 4 wicket. Nicely paddled that one down to deep square leg region. Ranjit is the captain of the side. Now I am not saying that the match is all over for NFC Urwa. Again they got opportunity. Again they got some good batsmen in their side. And Ranjit is a kind of batsman, being the captain of the side. He is a successful captain, and you know exactly the condition of the game. The left and right combination, always it's a useful, because the bowler has to change the line and length every time when strike rotated, need to change the field set, and that's why it's going to be very important for these two batters to spend the time. But so far Pawan is looking so good. He's doing a right job, isn't it? He's not losing any single deliveries. It's converting each and every delivery as a scoring one. This is what you call the sensible batting. 18 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Rohit again, right among wicket balls. This time a nicely driven down to square leg region in front of square, running out, looking for the second in terms of the throw from the deep end, opportunity of run out. And umpire rightly said it's a not out. The batsman is safe. Throw which is coming from the deep square leg region. In fact, if it's a direct hit, I think it's going to be a close one. It's not a direct hit. That's why the batsman is a safe. It's 20 for the loss of 4 wicket. Absolutely. The fantastic performance continues here. But NFC are not really given up this match. This is just a fourth over is in progress. The 20 on the board. They need to get another 34 runs to win this match. Rohit to continue. To Ranjit, went for the reverse sweep, and Pawan going for the run. Ranjit not responding, pays the penalty for that. It's a huge wicket, and I want to see which batsman going to be out. Left hand batter definitely going to be out, because Ranjit is not left his crease. Ranjit is not left his crease, so that the Pawan, who looks so good in the middle, one who's good, looks so good by the rotation of strike is concerned. And now NFC are looking in more trouble. It's 20 for the loss of 5 wicket. AK friends are looking in top. But quite surprisingly, out of that 54 runs, in the batting performance, we can see from AK friends, no one got a double figure, but still they got a 54. And the only one who got a double figure, that is extra. This is a big difference in this match, the final. 19 extra. If you believe me or not, the over number 4 completed, you are conceding 19 extras when the condition is so difficult for the batters, when its condition is very, very helpful for the bowlers. It's not acceptable. That kind of extras which is not acceptable, because 19 always going to be a huge extras. Just imagine how difficult for the batsman to get the 19 runs from the bat. This is what cricket is all about. The discipline is so important in cricket. Without discipline, you can't win the match. NFC was so far in this tournament, they reduced their extras, but in the big final, the bowlers conceded so many extras. This is a huge difference in this match, I want to say. That 19 runs will going to be a huge difference. But match is not yet over. NFC are still there in the game. If they manage to get some
good partnership and some acceleration of run rate is also required simultaneously. Not only they need to get the partnership, but at the same time they need to look towards the run rate which is they wanted to get, because each and every economical and wicket taking overs, the required run rate is really climbing up, it's creeping up. It's a 20-run for the loss of 5 wicket. 33 more runs required for the victory in remaining 23 deliveries. Praneeth went for the expansive slog sweep shot in the sense I think he wanted to play expansive reverse stroke, but missed it completely, so that umpire called it a leg by. With that extra score, numbers under 22 for the loss of 5 wicket. The condition is not that much of easy for the batter. In the day condition also, then in the natural light also, batsman struggle. You just imagine under floodlight, it's going to be more trouble. Again the top edge, but ball will going to land it very safely in the no man area. There is square leg in the deep, but there is a one fielder in the fine leg. It's very difficult for him to reach there. So batsman survives. One more single has been taken. With that single, score numbers on to 23 for the loss of 5 wicket. Praneeth to continue. Right arm over the wicket. Ranjit inside out cricketing stroke just over the infield, but this is sensible. No, it looks like it's going to be a couple of runs, but the fielders of AK France are looking so good. They're responsible for 1 run out, 2 run outs so far. 1 run out in fact, 2 run outs absolutely. This is only because of their quality in their fielding department. It's a 24 for the loss of 5 wicket. Again, lovely delivery, beautifully bowled, and equally well played there by Ratish last moment. He's got a bat, getting his bat right there behind the line of the ball. Ritesh, he will going to pick the single for that. 25 comes off. Still they have to go, long way to go. 29 more runs required for the victory. The difference is going larger and larger here for team NFC between run and a ball. Appeal for leg before wicket has given him and is gone. Ranjit departs across the line. He wanted to swing that one against the bowling of Praneeth. One more huge wicket for AK friends. Now NFC Urwa, certainly their door which is slowly closing here. The wicket of the captain of the side, Ranjit, wanted to get on expansive drive. Over number 5 completed after completion of 5 overs. NFC Urwa chasing 54 to win this match. So 25 for the loss of 6 wicket in the over number 5 which is completed. I request the captain of Gori Young Boys as well as the Reliance Cricketers Masters, please be reported here for the tossing ceremony. Dayamadi Reliance Cricketers ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ yes, Reliance captain is waiting for the captain of Gori Young Boys, Karna. I request Karna to report here. So 3 overs remaining, 18 balls remaining, 29 required. The run rate required is almost 10 runs per over, close to the 10 runs per over, and in this condition is going to be a big ask. Dhanush brought into attack. This time appeal for leg before wicket, loud appeal, but umpire not convinced. Might be because of the turn of the delivery, might be going to miss the off stump. Going to miss the off stump, and 26 for the loss of 6 wicket. So when you are bowling a leg cutter, then especially the big leg cutters will going to miss the off stump because batsman shuffled across the line of the delivery. Ritesh, 26 for the loss of 6 wicket. Nice ready one, uppishly but quite safely down to deep long off region for a easy single. With that single cover, moves on to 27 for the loss of 6 wicket in the over number 6 is in progress. Dhanush, right arm over the wicket, bowls beautifully ball, defeats the bat, and this is what the bowler will going to do here. Every dot ball will going to make the distance between run and ball larger and larger. Again went for the
reverse sweep, appeal for leg before wicket. Umpire once again not convinced. Leg by call by umpires. Again the ball which is going to miss the off stump. Impact of the line is always outside the line of off stump, and 28 for the loss of 6 wicket in the over number 6 in progress. Very hard to combine the runs. Bowling, what a delivery that one. I am saying that whether the Shane Warne bowling that delivery because this is a typical leg cutter, isn't it? The batsman, if you see that the action of the batsman is almost covering his leg stump, and the ball which is hitting the off stump of the batter, right? Just I will look at that one in replay. Absolutely unbelievable leg cutter. What a fantastic display of leg cutter. So 28 for the loss of 7 wicket. Fantastic delivery of the tournament from the bowler Dhanush. There's so many times in international cricket we are seeing that such kind of dismissal in international standard when Shane Warne in his career, so many times he did that with his big leg cutters. Again, appeal for leg before wicket because just excitement rather than the confidence. So one more single in the form of leg by. One more good over which is completed. Still NFC Urwa looking in a deep trouble. 29 for the loss of 7 wicket. 2 overs remaining. 25 runs required for the victory. 12.5 runs per over is the required run rate. Once again, I get back to this cricket tournament. Fantastic Nutan Champions Trophy which is organized in the memory of late Austin Montero, and all winning captains will be given a gift voucher which is from Just Casuals, and at the same day all the captains will going to get silver coins, and 6 captains will going to get the silver coins. First ball which is a by call by umpire, one more run added to total in the form of by 21. But all trophy which is sponsored by Rohan Montero in the sweet memory of remembrance of his dad Austin Montero. This again went for the reverse stroke, but again not having enough bat, just a single. The man of the series of the Masters Trophy and cash which is sponsored by Prashant of Young Friends Urwa, and all individual cash and a trophy which is sponsored by Pammi Kodiyal Bail. We are thankful and grateful to all the donors. This time one more wicket is back in the pavilion. The supporters of AK Friends are alive now. They know that they are very close to the victory. They are cruising towards the victory. Just a couple of wickets which is required for the celebration. A special thanks to Shrikant Shetty, the former cricketer of Vijay Lakshmi Cricketers, who provided the floodlight. Special thanks to Canvit D'Souza, is in Dubai. And one more special thanks to Canvit D'Souza, is in Dubai. Maybe he's enjoying the game of cricket through YouTube channel Bedra Media, live telecast of this prestigious Nutan Champions Trophy. If he's watching there, sir, thank you very much for your cooperation for the success of this cricket tournament. Special thanks to Kiran Kumar Mandharabail. He is the one he is backing up this tournament very well with wholeheartedly. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕರ್ಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕರ್ಣ. This time looks like one more wicket is back at the pavilion, just like I mentioned about just 2 wickets remaining. Now only 1 wicket remaining here for AK Friends to lift this prestigious Nutan Champions Trophy in the local group. The fantastic, highly dominated performance here from AK Friends is never allow the batsmen of NFC Urwa at any stage of their innings. Looks like the NFC Urwa is going to be dominated, but here is the bowlers of AK Friends are dominated. Now number 11 batsman Neetu is coming to the middle, but with a lot of responsibility. It's not an easy one to get the remaining runs of 24 runs in remaining 10 deliveries, I think so. 8 deliveries. Bhagwan,
wanted to finish up the things quickly. Copybook style of defensive stroke. Reliance won the toss, elected to field. Now the overthrow comes into play. 32 for the loss of 9 wicket. The captain of Reliance Cricketers Jaipur, Quresh, won the toss and elected to field first against Gori Masters. So 33 for the loss of 9 wicket. So Masters in the sense above 45 category. Nicely plays it down to mid wicket region for a single by Ritesh. With that single score was a 34. One more over comes to an end. Last over remaining. 20 required for the victory. 20 required for the victory. And last pair in the middle. I request all cricket lovers to be present till the next two matches, because Masters final to be played next, as well as Open tournament finals to be there. After that there will be a prize distribution ceremony. I request all supporters as well as the cricket lovers be there till the end. Thank you. Thank you very much. This is a special request from Rohan Montero, one of the organizer of this cricket tournament. And this tournament definitely is organized under the sweet memory of his father, Austin Montero. So that, of course, the especially spectators, when you're coming to the UCG cricket ground, they are the one really responsible for the success of the cricket tournament. All 4 days they are supported very well with a big number. So that our special request that please stay with us in remaining 2 matches. The next, which is going to be a Masters finals. And after that, it's going to be the big final in the Mangalore pool, Torpedoes Khana versus Young Friends Urwa. Meanwhile, 5 deliveries remaining, 20 to get. Ritesh wanted to swing that one, missed it completely. Difficult condition. It's not an easy condition. 4 balls, 20 required. 3 sixes and 1 boundary will go in to finish the job for NFC. But this time again, they're going to be wide. One more addition, 35. So 19 required for the victory in 4 deliveries. Right arm over the wicket bounce. This time he lofted obviously, but this is going to be a celebration. AK France are becoming the champion of this prestigious Nutan Champions Trophy in the local group. And congratulations AK France for their outstanding performance in the final. Dominated and absolutely comprehensive victory in the end. They defeated their opposition team by a number of 18 runs in fact. Yes, they defeated by 18 runs, a huge margin in the 8 hours formidable games. And A1, congratulations for NFC Urwa. They are the runner-up. They played a very good game of cricket in their home condition, but in the final it is not good enough. And it's not good enough, and now they're straight away coming to the finals of Masters. I request everyone to clear out the ground. Thank you. And it's over to Gopi for the further explanation of the match in Hindi. Thank you.